Any cultural program today because it's an extension of the first day. So directly we begin with honoring our resource persons. As I told you yesterday that today's resource person, you know him very well. I don't think anybody in this room, in this hall, who doesn't know today's lead resource person. Who is he? Mr. Swadesh. Okay, he is the most popular person among you. So please, sir, come on the stage. Okay, I'd like to request. I would like to request our chairman, Sir Pradipta Mukherjee, please come on the stage and honor him with a stall. Thank you, sir. And now, who is the other resource person? He is also most beloved person of our school. Our dear Shukla sir. Best of luck, sir. And I'd like to ask our treasurer, where is he? Sir Samson Patrick. Okay. Principal of Principal of Western School, Rajesh sir. Is he here? Please sir, please come on stage for honoring our co-resource person, Mr. Brijesh Kumar Shukla. बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोनों ही रिसोर्स पर्सन को प्लीज अपने अपने सीट पर बैठे थोड़ा देर के लिए। कुछ देर बाद आप ही लोगों का होगा पूरा स्टेज एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। सिद्धू कानू रघुनाथपुर स्कूल के सारे शिक्षक आप लोग तैयार है ना? आ जाइए। आज स्वागत आप ही लोग कीजिएगा। कल का स्वागत हमारे सिद्धू कानू दुमका के टीचर्स लोग किए थे। So I would like to request all the teachers of Sidhu Kanu Raghunathpur School for the welcome song of today. ये माइक है और माइक लगे? इसका भी यूज होगा क्या? हेलो 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 इसको बंद कर दो, आंख में लगे ना गाने से। अरे बंद कर दे एक सर। अरे रोका करो सर, गाड़ी लाइट दे दो। लाइट ऑफ लाइट चल रही है। ये बढ़िया वाला ऑन लाइट ठीक है सर। हेलो हेलो रेडी रेडी
स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 सारे गा मग मगरे नि सारे गरे सा सारे गा मग मगरे नि सारे गरे सा कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतियों के सरताज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतियों के सरताज है देव की भांति पूजन करे आज हम स्वागतम 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 देव की भांति पूजन करे आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की बदिया से हमने है कलियां चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी मन की बदिया से हमने है कलियां चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 Excellent performance, my team. You made me proud. Okay. So let's begin our today's serious business. Surajit sir, now the stage is yours. You begin. Thank you. Very good morning to all. Sorry. Are you audible now? Yes. All of you can hear me at the back. Respected teachers, if you don't hear me, then lift your hand. Okay. A very good morning to all learned, respected teachers who are present right now over here. Very good morning to Pradipto Mukherjee sir, chairperson of Sidhu Kanu Group of Schools. Very good morning to my co-principal, my good friend, Devapur Mukherjee sir, principal of Sidhu Kanu High School. Good morning to Patrick, my friend, my neighbor, with always a charming face. Good morning to my very old friend, co-principal, Leela sir. We have a long relationship with each other.
And good morning to my co-resource person, Sugla sir. Okay, and good morning to all of you once again. Thank you. To be very honest with you all, my association with Sidhu Kanu is a long one. I remember, coming back over here, it gives a divine feeling within itself. I remember those days when Sidhu Kanu, just this school, particularly the Raghunath Food School, got affiliation from CBSE, and Sir brought the CBSE football tournament right over here. Okay, the cluster 1 and cluster 2, during those days we used to have cluster 1 and cluster 2, comprising of Jharkhand, Bengal, little bit of Orissa, and if I can remember, sir, that was 2007 or 8 most probably. 7 and 9, 2007, when I was a teacher in my school at Holy Mother's Academy, and we got the opportunity to bring the football team over here. And while we were coming all the way from Dhanbad, okay, initially it was a long journey. We were coming all through that Andal and Siudi and Saintia. And I myself was also getting very irritated. My goodness, where is the school? How long it will take to reach the school? Then Thakur sir was there to receive us at the Saintia railway station. So there were 2 trekkers were there, and we were traveling and finally we came. But once we entered the school, the feeling was completely different. I saw Leela sir, he was getting ready, fixing up the things and all, and I came to know that he is the principal of the school. So that was the first meeting with Leela sir, and I was overwhelmed. The principal himself was fixing up things so that the tournament can start in the best possible way the next day. That is what we all are. Just now I was discussing with sir. Sir, do you remember those old days? And I don't know why, maybe within hours we got so much. We started interacting with each other, and we become so friendly as if we know each other for a long time. And then sir also came, and I met sir also, and I was astonished. This gentleman is the chairperson, such a simple and down to earth person. My goodness. Okay. He is the chairperson. Because generally we have this thing in our mind, chairperson means person with a lot of snobbiness and this and that and well dressed, and he is the chairperson. And I also came to know that this is the second school. He already has one more school and somewhere. Then I met Madam also. Madam also I met, and in fact I had a first talk with Madam telephonically. Okay, before we came to Sidhu Kanu. And she, at first instance, she understood that I am a Bengali. The way I was talking Hindi, we Bengalis have a very funny way of talking Hindi. We say, so this is the thing. In that tournament, and my school became very popular. Of course, we lost most of the matches because that was the first time. But we became very popular. Myself, my sports teacher was also there. And throughout this village area and all, we became very popular. And we started loving the place. So again, second time, again when 2009, again when sir called, he said, whatever happens, we will definitely again visit Sidhu Kanu and we will take part in the tournament. And that time we were the champions, sir, if you remember. And sir told me, sir, this one Devani nahi hai. So that happens. That relationship develops. That bond becomes from strong to stronger. Once we just come down and try to make this that we meet each other. We talk to each other. There should not be any type of snobby feelings or attitudes or this or that. Okay, because we are all in the same line. Those of us who are associated with education, our thinking is completely different than ordinary people. That's why I always say that one teacher is equivalent to 100 ordinary men and women. One teacher is equivalent to 100 ordinary men and women, and no matter whatever happens, at the end of the day, the parents will only come and meet you. They will not go to a politician, they will not go to a dada, they will not go to a baba, they will not go to a mataji or this or that. They will come to you and they will tell, sir, कुछ तो बताइए बच्चे के लिए क्या किया जाए. मैडम कुछ तो बोलिए, बच्चे थोड़ा हाथ से बाहर निकल जा रहा है. This is what education is. So with this we will start the day. We have lot of fun fair is there, a lot of information we will get, lot of things we will learn, and I always consider every opportunity of training as a learning part for me also. Definitely, if 150 of you are standing right now over here, sitting over here, then I am sure I'll get 300 feedbacks from you all.
My takeaways will be more than that. And if I am able to give at least 2% of what you have learned till so far, if you get 2% more, we will consider that training program as a very successful one. That should be our motto. Okay, sir, you started before that. I'll tell a few things. I need a little bit of movement over there because I'm a very restless man. I cannot stand in one particular place. This is the problem with me. Until and unless I don't move. Okay, before we start, I always give a lot of respect, honor, tribute to this gentleman, Alvin Toffler. Okay, in 1970 he wrote a book called Future Shock. The title of the book itself will create ripples within you. आपके अंदर ना कुछ अजीब किस्म का भावना ले दे कैसा किताब है Future Shock. ये कौन थे? Who was he? Alvin Toffler was a futurist. He was a psychologist, better to say educational psychologist. He was a businessman, and he was also associated with a lot of social work. And they say that the most important part of it is that he was a person who could predict. He has tremendous insights and foresights. He could predict the future. He had that capacity to prophesy everything. And he predicted during that time in 1970 when most of us were not even born. I am a 1973 born person. Many of you are several years younger than me, and some of you maybe a little bit 1 or 2 years senior than me. So in 1970, at that time, he already thought what the future holds for. And at that time, he gave this beautiful quotation. He said that the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write, but those who are not ready, or those who are not ready to learn, unlearn and relearn. Learn, unlearn and relearn. Okay. Now this particular, the last 3 lines of the quotation has tremendous impact on our very profession. I rather call teaching always as a vocation. I never call it as a profession. It's always, to me it's a vocation. It's a calling. It's a calling. We are doing one of the most noble service for mankind. No matter how much we are trolled in the social media, no matter how much people make us as caricatures in their stupid films and all, we will always remain on top. So he said that the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. The dynamics of the world are always changing. What we learned 5 years ago may not have that much relevance as what is coming 5 years from now and what is there with us right at this moment. So every time we have to accept the change, we have to move with the change, and we have to change ourselves also. English में एक कहावत है कि change with a change, or else the change will change you. बदलते वक्त के साथ खुद को बदल डालिए, वरना बदलाव आपको बदल देंगे. So you cannot accept to be rigid always. नहीं सर, वो जो हमारा बताया गया था 10 साल पहले, बस वही सही है, उसी के साथ हम रहेंगे, आप मानो या ना मानो. हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप करते हो ना, you will be silent. There are certain group of people in our country. Okay, I don't want to take their name because that should not be. आप अगर उनको बोलिए कि 8 multiplied by 2 is equal to 16, if it has been put into their mind that 8 multiplied by 2 is 16, they will remember that. If you say 2 multiplied by 8 is also 16, they will not accept. नहीं ऐसा होता ही नहीं है, होगा ही नहीं है ऐसा ना, कुछ ऐसा ही बात बन जाता है ना, अजीब किस्म का सोच होता है.
तो वो सारी सोच हमको बदलने पड़ेगा। और ये प्रोग्राम के अंदर जाने से पहले कुछ बातें हम करना चाहते हैं। I want to talk a few things because they are necessary right now. Because slowly right now it is November, December will arrive. Half of the December will pass away in thinking about Christmas and New Year's Day and this, and suddenly one day you will find that the session is over. The session is over before even thinking that practical exams will start and board examination and this, that, then in between seated examination will be there, and suddenly gone, finished. Session is over, new session will start. And from next session onwards, NEP 2020 will be implemented, not in a vast way, but in the first step towards the foundation stage will be implemented. That is clear. Okay, we are already, the government has already given us the framework for the foundation stage. Because that's why I want to just discuss a little bit. A little bit discussion should be there, then we will go to. Because it is important that we all should know about it. Yesterday I was at Hazali Bagh, okay, conducting a session on NCF, foundation stage, and completed it at around 4, then returned back to Asansol at around 11:30 again came over. And it is needed. Many teachers still no, they are having certain gray areas in their mind. What exactly is this NEP 2020? When it will be implemented? Will it start immediately? Will there be board examinations or not? A lot of vague ideas are there with people, because in the internet you will see they are providing us with a lot of wrong information. So those information needs to be corrected. So first thing is about NEP 2020 is that there will be board examination both for class 10 and 12. All those things which were told in the internet that there will be only class 12 examination and this board examination will not be there for class 10. No, it's not like that. Government has no intention of stopping or dismissing or cancelling board examinations of class 10 and 12. 12 is already there, 10 will be there. The pattern may change. Maybe the questions paper making style will change. The system may change a little bit here and there, but examinations are there. There was also a question that what is this foundation stage? This is also important because from there we will start. What is the foundation stage? Previously respected teachers, if you know, those who are very seriously know, you know, what is the pattern of the system till now, till this session we have, as far as CBSE is concerned or as far as our education system is concerned. What is the system? We have the 10+2 system. Okay, class 1 to class 10 and board examination at class 10, then again class 2, 11 and 12. This is the system still we are following. From next session the system is changing. Now we will enter into the system called 5 + 3 + 3 + 4. 5 years of studies, that is the foundation stage. After that we come to the preparation stage for 3 years. Then we'll go to the middle stage, and finally we'll go to the secondary stage. They are not no more that higher secondary word will no more be used. Okay, senior secondary or higher secondary or whatever, those words will now slowly fade away, and there will be only secondary stage. Okay, now the NCF for every stage there will be a national curriculum framework, and so you this book, sir, is there a book over there? Have I taken that book on the table, sir? We'll show it over here also. This one, sir. I think all of you have seen this book, at least on net or in CBSE site. This is the National Curriculum Framework for Foundation Stage. Okay. For 5 years. For the foundation stage, each and every teacher, irrespective of wherever you are teaching, in which part of the school you are teaching, whether you are in the primary section or middle section or secondary or senior secondary, you should go through this if you get time. It's available in the net. If not, today I will share it with Prodipto sir and Sukla sir and Mukherjee sir and Vai sir, with sir also I will share, and you can download it. It will be a bit costly, okay, for downloading and printing and compiling, but you should keep it, because you know plenty of good information about the foundation stage teaching learning you will get over here. Plenty of. And for our betterment, for keeping us perfect with time and what the board is doing, thinking about it, what inside is thinking, all is over here, and we should equip ourselves. It's not that I am teaching in the secondary school, so I should not be bothered about the foundation stage, because the origin should always be here. That's what I believe. Okay, so this one is there.
Sir, it can be done from here. Na? Down one, sir. It's a Down. down one. Is it too fast? Oh, it is switched. Okay, you know me, there is nothing more to talk about me. Surojit Sen, I am principal, Jharkhand Public School, Dhanbad. Okay, just one quick look we will see about the National Education Policy. It was introduced to us on 29th of July 2020. You should remember this date. It is good for us to remember. Okay, suppose if you go for an interview, if you are asked somewhere, you can at least tell people that, okay, on 29th July 2020, the National Education Policy was given to us. Okay, it depicts a milestone in the history of India's future in the world of education. It's a milestone, it's a epoch-making document, I will say. Okay, the policy came after a gap of 34 years. Okay, last one was in 1992, when Narasimha Rao was the Prime Minister. Okay, he was there, then it was, actually that was 1992 was not exactly the education policy. The 86 one was just a little bit modified and made. Okay, the policy came after a gap of 34 years. The old one of 1986 and 1992 is now completely changed. Okay. This is a landmark document in the Indian education system. It is comprehensive, it is forward-looking, and enough emphasis on inclusivity, flexibility, and quality is given. Now, it is a forward-looking. In order to move with the world, you just cannot stay with the old, rigid thinkings. Again, I will say one more thing. Those senior teachers know this thing. जो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, उनको ये चीज मालूम है. You know, respected teachers, lot of questions are asked about our education system, our students, our teachers, our institutions, their functioning. Lot of people say lot many things. ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. अरे तो फिर आप ठीक करो ना. ठीक करने वाला भी कोई नहीं है. सब भाषण देते हैं. But if you look into the research papers, we are the best students in the world. हमारे बच्चे जिसको आप तैयार करते हैं और आप इतना अच्छा से तैयार करते हैं कि वो दुनिया के किसी भी इंटरनेशनल लेवल स्टूडेंट से कॉम्पीट करते हैं तो उनसे बहुत आगे है. If you take the average American student, अगर आप average American student को लीजिएगा, वो ना सिर्फ बस अपना अगल बगल को ही नहीं जानता है ठीक से. Forget about America. अमेरिका के बारे में उसको पूछेगा तो उसको तो अगल बगल नहीं जानता है. वो अगर कहीं एक मानिए कैलिफोर्निया का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट एल्बेनी में रहता है, वो एल्बेनी के बारे में उसको पता नहीं है, तो कैलिफोर्निया फिर न्यूयॉर्क वॉशिंगटन तो बहुत दूर की बात होगी. लेकिन हमारा यहाँ एक क्लास 7 के बच्चे को अगर आप अमेरिका के बारे में पूछेगा तो he will give you 50% idea about America. The way he will describe, जैसे कि आप आंखों के सामने अमेरिका देख पा रहे हैं. This is a fact, yes. They are so much well informed. हम जब स्टूडेंट थे हम भी ऐसे थे, आप जब स्टूडेंट थे आप भी ऐसे. अभी का जो स्टूडेंट है वो तो और इन्फॉर्म्ड है because they have information आपसे ज्यादा है. So our students are very good. Our teachers are excellent. हमारे टीचर के अंदर जो पैशन, जो कंपैशन है, तैयार करने का, बच्चे को तैयार करने का जो क्षमता है, जो सोच है, जो विचार है, वो दुनिया के किसी भी टीचर के साथ हम कॉम्पीट कर सकते हैं. इट्स अ फैक्ट. और मैं ट्रेनिंग देने के दौरान बहुत सारे स्कूल, ऑलमोस्ट आई विजिटेड 100+ schools across the country. Okay, I have met many international education, so-called international educationists and all. But एक चीज हमको मिला, हम काफी आगे. वो लोग ठीक है, they may be technically they may be sound, वो थोड़े internationally है तो उनको they talk about this and that. हम भी कुछ कम नहीं है. कभी भी हमसे मतलब पीछे नहीं हटेंगे. Yes. So in order to move with the coming times, okay, in order to move with the future times, we have made this national education policy. It's very comprehensive, very easy to understand. And the second thing is it's a forward looking. पीछे का सोच नहीं है, आगे सोचो. And it is very flexible, जो होना चाहिए. Then if you become too rigid with something, no, then it's very difficult to come out from there. If you are becoming too rigid, rigidness का जमाना भी खत्म हो गया. अगर कुछ हम तैयार कर रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव चाहिए immediately, so let us change it. What's wrong in it? Why should we wait for somebody to give this signal and that if there's a change needed, go for it. And
It's of very high quality. Okay. History of India's education policy, little bit we should know. Okay. Let's just see the. Before going to the specifics, we'll know to know the history which paved the ways for its formation. I'm not talking about the British era and whatever they did and all these things we are interested in. After independence. Now here, I will take the name of a particular person. Many people have many other ideas, but we are not interested in that. We are educationists and we will only be looking forward towards education. I will say Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister of India, was a visionary. If he was not there, we would not have got Damodar Valley Corporation. If he was not there, you would not have got Messenger, which was like that. If he was not there, we would not get the education policy that we are having right now. If he was not there, we would not have got some of the forward-looking, specialized, advanced education institutions like the IIT, or say for in that instance the AIMS, All Indian Institute of Medical Sciences, or Indian Institute of Science, Bangalore, and so on and so forth. He was definitely a man with a vision. Although people have a lot of different ideas, none of us are bothered about that. Okay, so you know in 1952, the secondary, after India got independence and work was going on how to proceed, how to make the country move forward. In 1952, Secondary Education Commission was set up under the chairmanship of Dr. Lakshman Mudaliar. He was a doctor. Dr. Mudaliar was a MBBS doctor. He was a practitioner. He was a FRCOG and all. He went to England. He studied over there, and he was a man who was very, very serious about education. And he was also the chairperson, or you can say the chancellor of Madras University. Now they call it as Chennai. Madras University name is still there. Okay, although the name of the city has changed into Chennai. He was there, and he was asked by Panditji that you give a dig to the education system and come out with ideas so that we can implement in the country. So he came out with this is the first. In many research papers, you will not get information about Dr. Mudaliar. Everybody talks about that Kothari Commission, but the original work was started by this gentleman. Okay, Mudaliar. Okay. The report of the commission suggested diversification of high schools. They said, let the high schools be diversified. Okay, let us diversify them. Okay. Then he suggested that high schools uniform pattern throughout India and setting up of technical schools. So see, in 1952, at that time that seed was sown for skill education, what we call as students, skill education, technical schools, polytechnics, ITIs, where people will be taught about the basics of skill. Right now we are having all those things, so that was what he said. Fine, after he gave the report, then it was passed on to this gentleman, T.S. Kothari. Okay, the Indian Education Commission then came. Okay, Indian Education Commission was set up 1964 to 1966, 2 years, was under the chairmanship of T.S. Kothari, popularly known as Kothari Commission. This Kothari Commission is very famous. Everybody knows about Kothari Commission. Kothari, a lot of history is there with Kothari Commission. Okay, it was entrusted with the task of dealing with the aspects and all aspects and sectors of education and to advise the government of the evaluation of the national education system. Okay, now Dr. D.S. Kothari was given the freedom. You do everything you can do for the nation. And after that, so in accordance with the recommendations of this commission, that the national education policy of 1968 came up. Okay, so in 1968, the first national education policy or education commission or whatever you want to say came up. But unfortunately, you know, Panditji, Nehruji could not read the papers because he passed away in 1964, and it took some extra. Because see, making a policy for education is not a matter of joke. There are a lot of pros and cons that you have to understand. A lot of emotions are attached to it. A lot of touchy issues are associated. And in a country like ours, with so much diversity, you have to be very, very careful. A slight little bit mistake here or there can bring disastrous results. So one has to be very, very careful about it. So the NEP of 1968 asked for a total reformation and aimed at extending education to all sections of the society to accomplish the goal of harmony and integration. One vital point was the
free and compulsory education for children from 6 to 14 years. So it was to take a look at full, पूरे चारों तरफ देखिए, कहीं भी एक इंच इधर-उधर मत छोड़िए, ये कोठारी जी को ये फ्रीडम दिया गया था, आप देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए और आके हम लोगों को बोलिए, फिर गवर्नमेंट उस हिसाब से जाएगा। तो उसमें तो बहुत सारी चीजों थे, लेकिन जो चीज आज भी बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत निष्ठा के साथ माना जाता है, वो है फ्री एजुकेशन और फ्री एंड कंपल्सरी, सिर्फ फ्री नहीं, कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा। 6 to 14 बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा, वो हम फॉलो करते हैं। एट दैट टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि क्लास 8 तक हो गए तो बोला कि 6 साल से 14 साल तक बच्चे को आप पढ़ाइए। Yes, age part was there. Later maybe they said that come to this that अभी तो और बहुत सारे चीज हो गया, okay? So वो सारे चीज था। फिर क्या हुआ? After that क्या हुआ? The NEP 1980 इसके बाद राजीव गांधी जी and at that time Indira Gandhi was the prime minister of the nation, okay? Actually जो Lal Bahadur Shastri ji was there, and then after his unfortunate death Indira Gandhi took over. Then in 1986, you know, Rajiv Gandhi, when Rajiv Gandhi was the prime minister for a certain duration of time, even again lot of controversies are there, a lot of questions are asked on Rajiv Gandhi's capabilities and all those things, especially from eastern part of the country, you know, lot of things you were. But I will again say, if we see the work part of it, let us forget about his personal matters and all that. If we see the work part of him, he was also a visionary. He was also a visionary. In fact, it was Rajiv Gandhi who first introduced technology, IT, information technology in the country. And again, I will say there were a lot of who and cry from the eastern part, especially from my state, West Bengal. He even was a pilot. Yeah, he was a pilot, definitely. He said, no, let computer enter India. And that's how it came. And there are a lot of who and cry. This computer will take away the job, people will become this, that. Today, can you even think of a second without a laptop or a cell phone that we have, which is almost like a mini computer or something like that. So see, that was the thinking, you know, बड़े आदमी तो ऐसे बड़े नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर है, नहीं तो फिर कैसे हो? तो he came out and see what he did was the 1980s moving forward with the NEP of 1968, yet again a change is needed, and so in 1986 government introduced National Education Policy on Education 1986 with a particular focus on scheduled caste, scheduled tribe and OBC. Before that it was there, but not with that fine tuning. Okay. There was specialization should be given to this group of people, but then it was said no, now we should completely devote our time to make sure that the backward class people should also get education in the best possible way, and that was one of the golden moments in the history of Indian education system. Because समाज को अगर आगे बढ़ाना है, समाज में अगर बदलाव लाना है, जो हम सभी जानते हैं, उसके लिए हर व्यक्ति को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, जनरल कास्ट हो, ओबीसी हो, they should get education. Because education ही एक ऐसा टूल है जो हमको आगे बढ़ाता है. Nelson Mandela said no, that if you want to destroy a nation, first destroy the education institutes, and you see how quickly the nation will get destroyed. No, that's all. So, and of course, more more interest was given on women's education. Again, समाज को अगर आगे बढ़ाना तो नारी शिक्षा का बहुत 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 जरूरी है. नारी शिक्षा, जिस घर में नारी का ये नहीं है, सम्मान नहीं है, वो घर घर नहीं है. जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है, वो घर घर नहीं है. Many people tell me, sir, आप थोड़ा सा ज्यादा ही बोलते हैं ना. फैक्ट है, आप देखो ना, अपना घर देखो ना. और सम्मान तो करना ही पड़ेगा, शिक्षा देने पड़ेगा, थोड़ा डरने भी पड़ेगा. दुनिया में कोई मर्द है जो बोलते अपना छाती ठोक के कि हम अपना बीवी से नहीं डरते हैं. क्या पता कि सभी विज्ञ हैं क्या? नहीं किए. Is there any man who can stand up and say, I'm not scared of my wife, I can do everything? हाँ सर जी, आप तो सर बहुत सीनियर टीचर हैं, बहुत दिन से सर से जान पहचान है. हाँ सर, आज भी डरते हैं ना सर, थोड़ा बहुत. सर बोलते हैं हम थोड़ा डरते हैं अभी भी. Sir, Shukla sir, one 5-star for our senior teacher. He is very scared of his wife. It's a natural phenomenon. It's a natural phenomenon. Okay. Sir is a very senior teacher.
सर से बहुत दिन से जान पहचान है हमारा, और सर आज भी मैडम से डरती है। चलिए सर, ये डर आपके लिए हाँ यस सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर आपका जवाब देना चाहती हूँ। नहीं सर, नहीं नहीं सर, वो ज्यादा करता है। अच्छा, तो फिर सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान कर, रिश्ते का सम्मान करते हैं। नारी शक्ति की बात आप कहें सर, आपकी इजाजत हो तो दो पंक्ति हम नारी शक्ति पर सुना। एकदम एकदम सर, बिल्कुल बोलिए। जब क्या आपको फ्रीडम है, आप बोलिए सर। ये मेरी कविता नहीं है, बस दो पंक्ति। हाँ बोलिए। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सोने समतल में। थैंक यू सर। एक्सेलेंट। देखिए हाँ प्लीज सर। Yes, 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 definitely. It's a fact. Yes, yes, yes. बात तो सही बात है, अभी सर ने बोला है। Actually, see, we all, इसे ना हम ऐसा कौन सा मर्द है जो बीवी से नहीं डरते? डरने की बात है ना कि हम लोग एक सम्मान करते हैं ना। घर में अगर माँ का सम्मान ना हो, वाइफ का सम्मान ना हो, स्कूल में जहाँ काम करते हैं वहाँ अगर हमारा लेडी कॉलीग्स का सम्मान ना हो, तो फिर हम किससे? It's a fact. We all should. तो मजाक में होता है कि क्या है, इसे बहुत डरता है। Yes sir, please. You want to say something? My very fabulous line is there. हाँ. If you teach a child, हाँ. you are teaching to a family. हाँ. But if you are teaching a girl, you are teaching to the entire nation. Yes, yes, that is true. So a lot of emphasis was given on women education. ये तो वेद वाक्य। हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल। और आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप ये तो वेद वाक्य ही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते सतते। जहाँ नारियों की पूजा होती है, हम क्या देवता भी वहाँ। एकदम बिल्कुल सर, एकदम। क्या बात है, क्या बात है। 5 stars for sir, 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 and sir. Sukla sir, you go on giving. I'll tell you. You bring a handful of them. Okay. Sir, for sir one, and for sir at the back for that beautiful song. Okay. Sir, 1 to sir over here. Okay. 1 to sir over here. एक उधर sir, your good name sir? नारी सम्मान, आपकी good name sir? नारी सम्मान में सौरभ झा। सौरभ झा सर के लिए भी एक चॉकलेट हो जाए। ओके, एंड मेनी मोर आर देयर टू। आश्रम स्कूल जामताड़ा। ओके, सो सौरभ सर, आश्रम स्कूल जामताड़ा। विमेन एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइफ अच्छा बनाना है, घर अच्छा बनाना है, समाज अच्छा बनाना है, तो पहले नारी का सम्मान कीजिए, उनको जो सम्मान देना चाहिए वो दीजिए, नहीं तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ेगा। एंड it also in 1986, you know, the Rajiv Gandhi also thought about this open university system, because it was found that many people were there who wanted to continue the education, but due to some reason, unfortunate reason, वो आगे नहीं बढ़ पाए, कहीं ना कहीं उनको रोकने पड़ा था। तो ठीक है, इन सारे जो जिनमें क्वालिटी है, हम ऐसा एक लेडी को देखे थे, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मतलब हमारा आंख में आंसू आ गया था। तब हम टीचर थे, पढ़ाते थे, एक घर में हम ट्यूशन, नया हम जस्ट स्कूल ज्वाइन किए थे। और नया ज्वाइन जब हम लोग करते हैं, आप लोग जानते ही हैं, इतना इनिशियल स्टेजेस है, वेरी स्ट्रगलिंग डेज। ओके, बहुत कष्ट करने पड़ते हैं हमको। हम लोग थोड़ा ट्यूशन पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इनकम आ जाए तो थोड़ा सा लाइफ कंफर्टेबल हो जाए। तो एक घर में हम एक बच्ची को पढ़ाते थे, उनका मदर जो थी, शी वाज अ मैट्रिकुलेट। उनका मुंह का भाषा इतना अच्छा था, हम कभी-कभी सोचते थे कि ये बहुत पढ़ी लिखी होगी, शी मस्ट बी अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो हम एक दिन बातों में पूछा कि मैम आप ग्रेजुएशन ये कहाँ से किए, कौन सी यूनिवर्सिटी से किए, इतना अच्छा आपका मुंह का भाषा है, लिखती थी बहुत अच्छा। तो
बोला सर क्या दुख की बात बताए, हम सिर्फ मैट्रिक पास है और उसके बाद हमारा शादी करवा दिया गया है, तो आप तो हम मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाएंगे वापस। And I saw that she scored 79% during those days. She was a matriculate of 1985. In 1985 she was a matriculate and she scored around 79 or 80%. And I was shell shocked. मतलब मैडम आप आगे नहीं पढ़े, आपके पिताजी आपको नहीं सर क्या बताएं। So for these people, Rajiv Gandhi thought as well, let us go for open universities. And आज इग्नू क्या है, वो तो आप भी जानते हैं हम लोग। So these people were the visionaries. ऐसे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, ऐसे unfortunate, but his death was definitely a very unfortunate event for the nation. Okay, and in 1992 ADP and 1996 was modified, focusing on access, equality and quality and education. Access, equality and quality. At that time there should be equal education and there should be quality education. But then the progress of 1992 policy was good, but still it was not comfortable for the 21st century learners. ठीक था, बहुत अच्छा था, Rajiv Gandhi was a visionary, he came out with everything, the commission was set up, but still, you know, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस हो रहा था, मतलब वो होना चाहिए भी, so, but still it was not comfortable for 21st century learners, and socially our system was often at the receiver's end of being too rigid. ठीक था, but बहुत rigid था, मतलब change होने का नाम नहीं ले रहा था. Highly rote learning with excess and unnecessary curriculum, lack of skill and competencies with limited research opportunities. These things were there. It was very rigid, limited research opportunities, okay, lack of skill. So it was not ready for the 21st century learners. To provide all the requirements and stop the criticism, it was necessary to bring out a holistic document. ये जो सारे रिजिड था, फ्लेक्सिबल नहीं था, इंक्लूसिव नहीं था, ठीक है बहुत सारे चीज था, बहुत सारे मिसिंग हो रहा था, अननेसेसरी करिकुलम है, स्किल नहीं था, लैक ऑफ स्किल, इन सब चीजों का जवाब देने के लिए फिर से कमीशन बैठाया गया। और आप लोगों को याद होगा those teachers who taught in the year 2014, 15 during that time, CBSE and Government of India constantly used to send us questionnaires to bring about change in the system of education. If you remember, I still remember a few of them. I also wrote, many of you also, definitely those who worked in during that time. Okay, questionnaires आता था स्कूल में, CBSE खुद भेजता था, either in form of through online भी कभी-कभी आता था, mails आते थे, नहीं तो फिर ऐसा direct hard copies आ जाता था. We used to give our ideas and all, and we used to send them back. So all those ideas were the work started at that time to bring about a change in the education policy. To provide all the requirements and to stop the criticism, it was necessary to bring out a holistic document in the Indian education system, and NEP 2020 is one such document. Okay, आज जो document है, जो NEP 2020 बना, उसमें सर का भी थोड़ा सा ideas है. Sir, you were there in 2015 as a teacher. No, so he was quite young. Definitely senior teachers आप लोगों के पास definitely आया था, आप लोग you have done it here. Even in the newspapers में भी NCERT ना एक questionnaire देता था. Almost every alternate day. क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हर नेशनल न्यूज़पेपर में आता था और हम लोग उसको तो जो भेजते थे, क्योंकि वो सारे आइडियाज लेके तब जाके NEP 2020 बना. आज का जो NEP 2020 हम देखते हैं, वो एक्चुअली आपका और मेरा दिया हुआ आइडियाज है. Okay. Or we will see the vision, after that we will enter to the next one. So what is now the vision of NEP 2020? Okay. To develop an education system deeply rooted to the Indian ethos. Okay. सब कुछ रहेगा, लेकिन हम हमारा Indian culture tradition को कभी नहीं छोड़ेंगे. Yes. We should remain with the Indian ethos. Our culture and our tradition should be there. We may become international, we may think internationally, we may think globally, but definitely never to lose our own root and culture. That should not be there. Okay, which has the capability to provide high quality education to compete into the global world. Okay, to compete in the global world. So the curriculum and the pedagogy must develop a sense of respect. By the way, what is pedagogy? Can anybody tell me what is pedagogy? Teaching method. Okay. The way of teaching. With certain strategies. Teaching with certain strategies. Okay.
teaching methods, teaching with certain strategies. Okay, it's a Latin word, actually it's a Greek word. Pedia and kogai, has come from there. To know and tell. Okay, yes, so pedagogy should be changed. Okay, they said that now new pedagogy should come. Must develop and the respect towards fundamental nature. The curriculum and the pedagogy must develop a sense of respect towards fundamental duties and Constitution of India and have a deep bond with the country. The pedagogy that we will create, which should be in line with the fundamental duties of the nation. Nation first, ये सोच के साथ चलने पड़ेगा. Nation first. We just cannot simply ignore nation and go forward. Then only a sense of national pride will develop. Maybe somewhere down the line, which was lacking for some time. So that is there. Develop a sense of pride and respect for the country. Be responsible for human rights, sustainable development, global well-being, thereby reflecting and truly global citizens. So what else the vision is there? That make our children global citizens only if they have a feeling for the nation. हम घर को नहीं देखे और हम चले गए बाहर के दुनिया के बारे में बात करने के लिए, तब तो कुछ नहीं. वो our poet Gurudev Rabindranath Tagore, and I just remember one of his poems where he said that no, whether mind is without fate is there. He said that see, beside my house there was such a beautiful place and so beautiful, so many good people were there. I ignored them and I went internationally in search of great people. But they were the great people. अगर देश को जानना है, अगर समाज को जानना है, तो वो पेड़ के नीचे जाइए जहाँ पर एक कॉपलर बैठ के आपका जूता सिलाई कर रहा है, या उस पेड़ के नीचे जाइए जहाँ पर एक कठोरी अपना लकड़ी काट के आग बनाने की कोशिश करे जिसमें आपके खाना बने. That is what is the nation. No? Even one of our famous another poet, Michael Madhusudan Dutt. If you remember his name, Michael Madhusudan Dutt. Nowadays, of course, in curriculum, his poems are no more. What a beautiful poet he was. And you know, Michael Madhusudan Dutt went to England. He left India, he went to England because he wanted to be at par with Keats, Byron, and Shelley. But he did not get his position because he will not get it. No? Then, when he returned back to India, and he wrote a poem. Amar Sadhana material and all these things, so that they are definitely. And 2 lines he wrote. He said that Kelinu soibara guli komola kanan. Kelinu means playing, Bengali. Beside my house there was such a big and huge garden of lotus was there, and I forgot about that and I went to play in the algae field. You know, Seola? Algae field. तो हम दुनिया के इतना मेरे घर के बगल में जो कोमल का कानन था उसको हम भूल गए, उसको हम नहीं देखे, हम खेलने चले गए थे हैं वो काई की दुनिया में. तो हम तो स्लिप करेंगे ही. इसको अमिताभ बच्चन yes sonnet वाला yes Bengali sonnet को start वही किए थे. Excuse me, sir. Yes sir, please. On that topic, just I have seen now. बस से हम लोग जब अभी आ रहे थे अभी तो हमने सर को भी दिखाया, इनको भी दिखाया कि हम लोग रील्स में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, बट अभी सामने देखिए एक लेडी लगभग 80 साल के बूढ़े को बगल में वो नहा करके और एक गमछा से पूरा पोंछ के बूढ़ा एकदम बैठा हुआ है. इतना आत्मा को सुकून मिला, हमने दिखाया इनको कि कहाँ हम रील्स देखने जाते, सामने देखिए. yes आप भी देखें. Yes. You people are lucky you saw that. प्यार क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, बलिदान क्या होता है, वो तो हमारा आंखों के सामने. अब क्या इधर रील्स देखते हैं बड़े-बड़े चीजों से, सब हमारे अगल-बगल में, बस हमको थोड़ा आंख खोल के ढूंढने पड़ेगा. That's all we need. No? Okay. And the last part of this, this is the key principles of NEP 2020. It is important that we should know about it. First of all, respect for diversity of local content. Curriculum should always have a local feeling. That's important. Then only we will be able. Then only our children will know about our nation, our country. Raghunathpur, Sidhu Kanu High School, Raghunathpur. अगर हम रघुनाथपुर के बारे में हमको बच्चे को पता नहीं है, सिद्धू कानू जी थे कौन, ये 2 महान व्यक्ति, क्यों इनके नाम पे स्कूल, वो अगर हम कैरिकुलम में नहीं डालेंगे, तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? और
The good part of NEP 2020 is that you can customize the curriculum according to your ways. आप जैसे समझते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। NCF में भी यही बात किया जा रहा है कि आप कस्टमाइज कीजिए आपकी इच्छा के अनुसार, आपके मतलब लोकल फ्लेवर के अनुसार, क्योंकि लोकलिटी को बहुत जानना जरूरी है। आप पड़ोसी को नहीं जानते, जैसे कलकत्ता में होता है ना, आप नॉर्थ कलकत्ता चले जाइए, people are very good, you know, they are very helpful, they know, they love each other, even if you are an unknown person also, then also they will come out and help you. But if you go to South Calcutta, where also I stayed for a certain period of time, आप जादवपुर चले जाइए या थोड़ा सा मास ड्रोनी हो या कोई किसी को पहचानता नहीं, कोई किसी को नहीं पहचानता। You are belonging to North Kolkata, okay. So recently एक घटना होता है, हम last महीना हम आसाम गए थे ना to conduct workshop in Assam, Guwahati, और then the next day I came, in the early morning flight I took and I got down in the Calcutta airport. The flight is just for 45 minutes. And after that, I was supposed to take a bus from this. The airport, you will get the buses. They directly come to Howrah station. Okay. And from there, we take train and cover. So one bus was there, which was not for Howrah. It was for a different route. But it will go all this way. So at least I can come up to, say, particular Mahatma Gandhi Road. From there, I can take the metro and I can go to Howrah station, or I can go to bus stop and take bus to Asansol. So while I was coming in the bus, and I don't know why, you know, this is a very strange feeling I have within myself also. Maybe this is good also, maybe this is bad also. Several times I have visited Calcutta. I stayed at Calcutta for a certain period of time. I did a little bit of small courses in Calcutta. But आज भी कलकत्ता जाते हैं ना, थोड़ा सा खुद को गुम कर लेते हैं, समझ में नहीं आता बहुत सारी चीज़. I don't understand a few things. I am still numerous times. My son knows Calcutta much better than me. Okay, although he has not visited that much. Oh, थोड़ा सा हम लोग है ना, थोड़ा गांव का आदमी है, सीधा साधा बोलते हैं. We are हम लोग उतना शहरी बाबू नहीं है, हम थोड़ा राड़ अंचल के आदमी हैं, थोड़ा काम करते हैं, हम थोड़ा बेवकूफ हैं, और इसमें हमें कोई शर्मिंदा नहीं है. हम लोग ऐसे हैं, हम थोड़ा देहाती हैं, हम देहाती हैं, हम कभी हम बेवकूफ भी है थोड़े बहुत, और हो गया. हमें गर्व है इस बात. ओके, हमें फख्र है. तो हो जाता है. तो वैसा कंडक्टर को पूछा कि भाई साहब, हम तो महात्मा गांधी स्टॉपेज में थोड़ा हमको बोलिएगा ना, उतर कीजिएगा. बोला हाँ उतर दो, कोई बात नहीं. तो जैसे आया, और मेरे सामने और एक जेंटलमैन, वो भी सेम फ्लाइट में है, हम उनको फ्लाइट में भी देखे थे, वो भी हमारे साथ उतरे. विश्वास नहीं कीजिए, he is a man from North Calcutta, that area, okay. वो भी उतरे, वो हमको सीधा लेकर आइए मेरे साथ आप आइए. हाँ, हम सोच रहे वो भी जाएंगे साथ. He will also take the train, metro, and he will go to Esplanade and all. तो हमको सीधा मेट्रो स्टेशन तक लाके बोला सर अब आप नीचे चले जाइए, टिकट लेंगे. तो आप नहीं जाइएगा? बोला नहीं, मैं तो, मेरा घर तो बगल में है, मैं तो घर जाऊंगा. तो बोला तो फिर आप क्यों आए? सर आप जाइएगा, आपका बॉडी लैंग्वेज देखो, हमको लगा कि यू आर स्टिल फंबलिंग टू फाइंड द प्लेस. आपको थोड़ा सा कहीं हिचकिचाहट हो रहा था सही जगह में, तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं, मैं आपको दिखाऊं उसका पता. क्या काइंडनेस. I was shell shocked. तो हम दुनिया आज भी ऐसा है, लोग आज ऐसे हैं. People are good. हम सिर्फ सोचते हैं ऐसा होता है वैसा, बट ऐसा है. So what is this respect for diversity of local content? All curriculum, everything should have that local flavor. Equity and inclusion, very important. Equal education, inclusive education. Inclusive education, there's a huge training program on inclusive education. Everybody should get education, irrespective of their caste, creed, status, physical appearance, whatever they were. एक time था, a certain group of people were not allowed to enter the schools. नहीं, I will not take care of these people because there are a lot of problems. Now government is very strict on this. In 2021, when I was giving this principals training to the principals of pedagogical leadership program, at that time we had a complete day, a complete session on inclusive education. सबको education मिलना चाहिए, चाहे बच्चे का कुछ भी हो, because every child, because NCF, every child is capable of learning. ये नहीं है कि किसी का, I should not use that word. Yes, yes. Specially able children should also have, they do have 100% right to get the best education, and education at par with normal people. ऐसा नहीं कि उनके अंदर में कुछ कमी है तो उनका पेपर थोड़ा हल्का बना दो, नहीं, बराबर ही लगता. That is proper inclusive education. So inclusive education should be there.
Then of course community participation, एक टाइम ऐसा भी था कि हम लोग अगल बगल के लोगों को मतलब स्कूल्स में ये स्नॉबीनेस भी हटा दिया गया कि ओके सीधू का स्कूल इज ओवर हियर। हो सकता है अगल बगल में एक दो ऐसा व्यक्ति हैं जो स्कूल के साथ इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली दे आर नॉट इन्वॉल्व विद द स्कूल, लेकिन स्कूल का जो समाज है, जैसे मिस्टर मुखर्जी और से प्रिंसिपल सर, ही नोज दैट देयर इज अ पर्टिकुलर जेंटलमैन who is an intellectual. He can be utilized for the betterment of the school. उनको बुलाइए. Take his expertise also. Don't limit it within your teachers. So that is the community participation is very important. Philanthropic people जो अगर स्कूल को हेल्प करना चाहता है, ये जो विद्वान है, उनको कभी-कभी बुलाइए, बच्चे से मिलाइए, उनका आइडियाज लीजिए. Maybe 5% or 10% he will definitely enhance the quality of the education. That's what they are saying. Use of technology, इसके बारे में तो कुछ बोलना नहीं है. The time has come when we have to move with technology. Technology will never replace the teacher, that is of sure. Okay. आने वाले 100 साल में भी शिक्षक को कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें जरूरत है, क्योंकि अभी भी ये माना जाता है, ये फीलिंग है कि टीचर जो क्लासरूम में जब हम जाते हैं, कोई भी टीचर जब क्लासरूम में जाते हैं, वो जो चौक हम हाथ में लेते हैं और लेने के बाद ब्लैक बोर्ड में जो हाथ को घुमा घुमा के हम जो लिखते हैं, उसका रिप्लेसमेंट होना बहुत मुश्किल है. वही वो जो सर का जो वो बात बच्चे के साथ वैसा ना देर ना, ये जो टच होता है ना, ये मशीन कभी नहीं दे सकेगा. तो बेटा हाउ मच दिस ऑनलाइन क्लासेस गो ऑन, ऑफलाइन क्लासेस गो, फिजिक्स वाला बायजूस दिस दैट, ओके एवरीथिंग इज गुड, बट वो हमारा स्कूल का टीचर जो क्लासरूम में घुस के बच्चे को बोलता है कि बेटा चॉक लो, ओके वी विल टॉक, एंड स्टार्ट्स राइटिंग ऑन द बोर्ड. And that very presence of the teacher, so sometimes people say, no, when the teacher turns towards the board, the children start talking. No, it's not like that. Children also, with the personality of the teacher, as the time moves on, children also get the flavor of the teacher. They will not make any form of disturbance or anything. And the presence of the teacher is important. That human touch of the teacher is very important. उसको replace नहीं किया जा सकता है. हाँ, yes, and और दूसरा बात क्या है? टेक्नोलॉजी का जरूरत है. यस, टीचर्स हु आर, आगे सर जी प्लीज. हाँ सर. एब्सोल्युटली राइट सर, कि टीचर्स का जो है कोई भी टेक्नोलॉजी मुकाबला नहीं कर सकता, कितना भी कुछ सीख जाए, कुछ भी करे, लेकिन जब विदाई का दिन आता है, फेयरवेल का दिन आता है, तो कोई भी कंप्यूटर, कोई भी मोबाइल रो नहीं सकता है. वो भावना वो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो आता है, कोई नहीं दे सकता है. वो वही समझ सकता है जो एक टीचर और एक स्टूडेंट. क्या बात है, आपको सर एकदम दिल को छोड़ के चले गए. यस, 5 स्टार फॉर सर, और 5 स्टार फॉर सर. हाँ सर, we often have telephonic discussions with each other. अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं. एंड यू नो कभी-कभी हम लोग वो गांव के भाषा में भी बात करते हैं. क्या सर करते हैं कि नहीं? सर एक तो हमें तो हाँ आदि दास की सर सीरियसली कोई छेड़ नहीं बोलते. ठीक है वो जरूर से हमारा तभी एक आत्मा का मिलन होता है. हाँ जी सर, हमने देखा कई बार स्मार्ट क्लास में हम गए, देखिए कि मशीन से पढ़ा रहे हैं. जी सर. लेकिन उसमें कई एक गलतियां हैं. जी सर. काफी गलतियां. जी सर. जैसे समाज में हमने देखा प्रत्यय आदि पढ़ाते हैं, तो उसमें देखा कि काफी गलतियां. तो वो टीचर जो पूरा करता है वो स्मार्ट क्लास या आर्थिक नहीं कर सकता. टेक्नोलॉजी हमें जरूरत है. विदाउट टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट लिव, बिकॉज़ विद चेंजिंग नीड्स ऑफ द वर्ल्ड वी नीड. The demand is modernization. Yes ma'am. Demand is modernization. It is demanded, it is needed, but it is the ultimate. That's not there. Teacher is there. हाँ. So who but- operate? Who operate this? हाँ, who human beings are operating it. Okay. Even we teachers are They are also operating. operating this. Maybe in future the robots will come, but they will not have that feeling that That feeling we can that- have. Until unless वो रजनीकांत का robot feeling बन जाए, वो कुछ और बात. Yes sir. Please. There is a story in class, English class book, the fun they had. The fun they had. Yes sir. I read the That's story. it. During my school days, I also read it. The fun they had. Yes.
So it is obviously it is fun to teach in front of a real teacher instead of a robotic teacher. Right. Definitely. But yes, the teachers who are not using technology will definitely be replaced by teachers who are using technology. That we have to keep it in mind. हम technology जानेंगे उसके साथ देंगे, लेकिन it's not even because we need it. Okay. Then what do we have? Emphasis on conceptual understanding. Now moving away from the rote learning, NEP 2020 says go for conceptual learning. Let the child understand the concept of it. Let's go deep into it. Let's dig our hands deeper and come out with our hands, dirty hands, to make sure that the children know exactly what is there. तभी जाके rote learning खत्म होगा. थोड़ा और time लगेगा, maybe another 10 years it will take for rote learning, because in a country like ours, okay, it is not so easy to remove rote learning, but वो धीरे-धीरे आएगा with the help of teachers. That's what NEP 2020 believes. Unique capabilities, recognizing and identifying them in each student. हर स्कूल में, हर क्लासरूम में एक दो गिफ्टेड स्टूडेंट है क्या? आदर्श बच्चे है जो वो, if you see Bloom's taxonomy, maximum students remain in the lower cadre, that is remembering and understanding part, but a handful of them, maybe one or two who goes up to that creative world, extraordinary, जो कुछ नया बनाते हैं, ये बच्चे भी स्कूल में है, हर क्लास में. Special attention should be given to these students because they are the future human resource of the nation. They are the genius human resource हम बोलते हैं. Human resources, they are the assets of the country. तो उनको अच्छे से कराना चाहिए. They should be taken. Critical thinking and creativity, a major part of 21st century skill. Critical thinking doesn't mean कि criticize करेंगे, but think why it is there. Madam is wearing this green dress. Why it is green? Why not it is blue? What is so speciality about it? And that is where the critical thinking is. Okay, the machine is rotating from left to right. Suppose if it starts rotating from right to left, then what will happen? What are the drawbacks that will come out? And if those are the drawbacks, for this reason it is rotating from right to left. So that is what critical thinking is. Can we correlate with analytical? Not many things. We can correlate with analytical also. Okay. Analytical thinking, critical thinking means not to criticize. Many people have this vague idea. It's not to criticize. It's to find out why it is happening in that way. Once that idea gets into the head of the children, that okay, it is happening because of this particular. After that, no, learning will be wonderful. Jawab. Yes. So that's what we need. Yeah. Recognizing and identifying them in each student. Critical thinking to encourage logical decision. What we call as logical decision. This is the logic behind it. परियों की दुनिया धीरे-धीरे चल रहा है. जाना पीछे. Okay, and finally continuous review. In order to develop school, whatever, review is regularly needed. We are coming out with the next year CBSE. A lot of webinars are going on SASQAA, School Quality Assessment and Enhancement, and all those things are there. Okay, assurance, School Quality Assessment and Assurance. अभी हो रहा ना क्या आप जो रेगुलरली पढ़ेंगे ना हर चीज का डेटा आपको रखनी पड़ेगा क्योंकि you have to provide the quality connection of your school to CBSE. After that CBSE is coming out with a very special system by which it will be monitoring each and every school. थोड़ा बहुत फाकीबाजी बंद हो जाएगा. So that is what, continuous review should be there based on what they are doing, what the children are doing. Even if you take a small test of say Saturday test, you review that test. You have taken a test of say 10 marks test here. Isme you find out, okay, you can make this what you call mean chart. 0 to 5, so many students have scored. 6 to 10, so many have scored. Now why they have not scored? Why that the other children have? Go and deep into it, analyze it, and come out with a critical analysis why the children are not getting that also. Perfection is not coming, and all those data needs to be maintained. The next, the NEP 2020 is actually an education policy which is data based. आप सर करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, किंतु परंतु नहीं चलेगा. Principal order दे दे, I need this data, you have to submit it. That will help you as well as the school itself to grow, develop, and the students, obviously. So this is in this I wanted to talk because a lot of discussions were there. After that, we'll go to the main one. We'll have a 5-minute break. Just a 5-minute. Nobody will leave this place. You just stress yourself over here. In the meantime, I'll just set it up and we'll go for the next one. Okay, the exact program that I was told to talk about, that also we'll have a lot of discussions and all this. Just a 5-minute break. We'll have. Okay? Is it okay? Yes. Boring to nahi laga?
Thank you. Yesterday, thank you, sir. Yesterday, Hazar Shaban, a young boy, very small boy, he's a teacher, around 20. He suddenly came and fell on my feet. गुरुजी कहाँ से लाते हैं इतना एनर्जी? कौन सा दवाई खाते हैं? मैंने कहा बेटा कुछ दवाई नहीं है पॉकेट में। 4 ठो रोटी खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में और थोड़ा सा सब्जी खाते हैं, टाइट ब्रेकफास्ट, दोपहर में थोड़ा सा राइस लेते हैं, थोड़ा सा सब्जी, और रात को 2 ठो रोटी खाते हैं, बस और कुछ नहीं खाते। सर हो जाता है इसमें, कहीं नहीं होगा, तो भी करके देखो ना। लेकिन अभी मत करो, अभी तुम्हारा उम्र कम है, तुम्हारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। So you know that love develops slowly. बहुत अच्छा लगता है जो न्यू टीचर्स से मिलने, उन लोगों का सोच विचार से। ओके, अब हमारा भी काफी उम्र हो रहा है। I am now 50 years almost. Okay, if not lacking that, okay. But still I keep myself to be as young as possible. थोड़ा मन में भावना को रखते हैं यार। चलिए, we'll have a 5-minute break and then we will go to the next part because after that Sukla sir is there, he will take his session and all. Okay, 5-minute break. In the meantime, we'll just change it. अभी भी आप जवान हैं। जवान है। एक गाना है ना, अभी भी आप जवान हैं। आप सेंचुरी में भी कर पड़ेगी तो Sukla sir, you will take your session right now. Okay, you take one part. Okay. Okay, after that again the school management and all, and classroom management and all those things. After 5 minutes, Sukla sir, get ready. Patrick, am I too much boring? Patrick is a very good friend. He is from my neighborhood. Okay. गांव वाले आपके। गाँव वाला है। शुक्ला सर। In front of our highly qualified and educated teachers. So, my dear teachers, today we are in the 21st century, which is full of challenges. Teacher professing is itself challenging and most rewarding profession of the world. As sir earlier shared, that it is one of the noble profession, I do agree. But the modern day teacher have to face a lot of challenges in the classroom. Okay, unless or until he is able to solve the challenges, it becomes very difficult for a teacher to carry out his classroom, to complete the syllabus and curriculum in the right time. So, whenever he enters in the classroom, he has to be well prepared. But still, so many challenges are there, what he has to face. So, my dear teacher, a teacher's job becomes frustrating if he is not taken to challenges in the classroom. Okay? And the student who feels unmotivated, he can be the participative part of the teaching, but who is not ready to, who is not interested to help with you while teaching, then the teacher is not able to tackle the problem smoothly. So, first of all, can anyone tell me what is the origin of the word discipline? Anyone? From which language and what does it mean? discipline itself. Okay. Anyone else, sir? The word discipline has been derived from the Latin word disciplina, which means instruction and training. Whenever the instruction are not followed nicely, it comes under the category of indiscipline. And if you are not going to diagnose the ailment, you cannot provide the treatment for a patient. So we must know the reasons which causes indiscipline, why the students are misbehaving in the classroom. If you are not able to control the class, can you able to teach? No. Nobody can. So first we have to mastery over 3 elements: control of the language, control of the class, and obviously control over the subjects. Okay, so I have divided my module into 4 parts. First, we'll deal with what are the various activities or acts which come under the category of indiscipline and misbehavior. And second part, we'll deal with what are the causes of indiscipline and misbehavior. Next, its effect on the society. You know, the students are the future citizen of the nation. So, my dear teacher, we are on the second day of offline in-house training organized by
Confederation of Jharkhand Sahodayas, one more important day is. Okay, can you tell 26th November has its own importance due to Constitution Day? Yes. Okay, and I will start the program with the national slogan of the Indian Constitution, that is Satyame Jayate. Truth always wins. Is it the fact or not? Yes. So this truthfulness lies in the behavior of a teacher. If you want to make the student responsible, who will lead the nation in different ways, in different categories, so he must inculcate these values of truthfulness, punctuality, morality, discipline, and all the things. And if you are teaching nicely in the classroom, it's not enough. We have to create that environment. Whenever you are getting little time, just inculcate these values in them. And I think it will become very easy for the teacher to control the class through these activities. Your discipline, your punctuality, your morality will reflect through your behavior. Isn't it? Just you ask in any school, some of the students will say, these teachers are very honest teachers. These teachers are very disciplined. These teachers are very punctual. These teachers having morality. Actually, the right lessons they are getting from your behavior. Are you agree with me or not? Yes. So we have to behave in that way, where the students will get the right kind of discipline from your behavior. Now, we are all teachers. While teaching, you are facing some acts of indiscipline. Which categories can come under the act of indiscipline? There are so many categories. In the Google, there are 27 or 28 categories have been given. But I have chosen only 8 or 9. Okay, because I am not having that much time. So, sir, slide check. नीचे वाला This one. हाँ इधर नहीं उससे ऊपर हाँ, इधर मुँह कीजिए Yes. So these are the different categories or acts which come under it. And you are all aware through that. First one is disruptive talking. Sir, from here you point with the this thing, Okay, like okay. with the red light. Okay, then. Please. Okay, this one is disruptive talking. While you are teaching and some students are still busy in talking, we cannot carry out our way of teaching. When we are teaching attentively, other students are listening attentively, but some of them are busy in their own schedule. So it creates a kind of indiscipline in the classroom, and we are unable to concentrate whatever we are teaching. Okay, so it is the most common topic. Next one is cursing. Cursing का हिंदी होता है किसी को श्राप देना. यहाँ पे श्राप तो नहीं दे रहा है, लेकिन तो क्लास में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है तो श्राप के बराबर ही है. और ये बाद में क्या होता है? बाद में क्लासरूम में मारपीट की नौबत आती है और आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है, जिसको आपने बहुत मेहनत से बनाया हुआ होता है ना? तो जब कर्सिंग वाली एक्टिविटी होती है तो इसमें टीचर को इंटरफेयर करना पड़ता है. So, सबसे कॉमन कर्स क्या देता है बच्चे एक दूसरे को? Easy. मर जाओ तुम. और कुछ सर आप Yes, where is madam? ये सर देखो 0 मिलेगा तू फेल हो जाए. Hey, chocolate for madam. I was eagerly waiting for that. One 5 star, sir. 5 star sir for man. ये कॉमन होता है. Okay, next one is harassing and bullying classmates. परेशान करना. आप देखते हैं जब क्लास होता है तो कुछ बच्चा दूसरे कैसे मारता रहता है या कान खींच के चुपचाप बैठ जाता है. ठीक है. और जो बुलिंग की बात है, चलो स्कूल के बाहर देखते हैं तुमको, तुम कितना बड़ा हीरो बना है. और ये क्या होता है कि बाकी बच्चों को वहां से उसको दूर कर देता है. वो अगर चाहता भी, आप देखते हैं क्लास में एक बच्चे की चलती है कभी-कभी बहुत ज्यादा. Whatever may be the reason, he dominates the other students. In that case, what happens? We cannot maintain discipline in the classroom. Okay, and this one is defiance. Defiance means कि वो आपकी बात को मानने से इनकार करता है. He is not going to obey your order. Okay, sometimes you are clearly instructing, if you want to stay in the class, if you want to stay in the school, you have to follow these rules and regulation. But it's clearly defined. No sir, I am not going to follow it. Do what you wish. आपकी जो मर्जी कर लीजिए, मैं नहीं करूंगा. Even the head boy or the head girl or the house prefect is saying, I am going to report it to the higher authorities. Even he is saying, I am not going to follow it.
Okay, so it is the most important part which makes the student indisciplined in the classroom. Now next one is drug and alcohol abuse. It is not seen in our remote and backward areas, but in the states like Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, this is one of the reasons. You cannot imagine the situation, the places like Punjab, the states like Punjab, okay, and one place is Hoshiarpur. Earlier you have seen the news, the students are taking drugs with their school bag. And when the search was going on, you cannot imagine, more than 50 students have got with that drug thing. And these causes disturbance in the classroom. Actually, whenever the teacher is teaching nicely, any topic it may be, whenever the disturbance is occurring, the teacher is still efficient, but he cannot remain effective. You should know the difference between efficient and effective. I think all of you are knowing. If you are having that much qualities, but you are unable to put that qualities in the classroom while teaching. Just you have seen the match of India and Australia, the final match. Indian players were efficient, but on that day they were not effective. Just next match after that, again they have become effective. So sometimes teachers are efficient, they are highly qualified, they are able to teach, they are having all the qualities so that they can control over the class, but due to this reason, they cannot concentrate on teaching. We are preparing our lesson plans, we are preparing all the things, we are taking the teaching aids or kits, but whenever we are entering in the class, we have to face this kind of difficulties in the classroom. And what to say about this? Fighting? Everywhere, in each and every school, we are getting this is one of the common problems. Students are always involved in fighting, even in some small issues. They have got 1 mark less from the topper, they are fighting with that. Okay, always when you are having game period, 1 or 2 extra teachers are needed to control the activities of the students. Whether it is a match of cricket, whether it is a match of basketball, or whatever the match is conducted, we need some extra teachers because I have earlier told that we are in the 21st century, they are knowing everything. Even they are searching what can be done. If school is going to restricate us, what steps we can take? Okay. They are knowing everything. Just you ask anything, they will search in the Google. And one more thing I want to tell you, sir, and madam, respected teachers, that students are searching those questions from the Google where the teacher is confused. They are searching the toughest question from the chapter light, from the chapter sound, from the chapter energy, from the chapter the nationalism in Europe, which is not in the syllabus. But he will raise the hand and ask the question. Sir, ये वाला कब हुआ था? Sir, लेनिन कब मरा था? Sir, लेनिन कैसे मरा था, sir? This is not given. So we are concerned, we are just attached to the syllabus, we are completing our portion, but sometimes it is not to their need, it is not to their requirement. But to disturb in the class, they are raising this kind of question. Okay? Deliberated breaching of school rules. They are knowing they have to come before the assembly, but willingly they are doing that. It comes under the category of indiscipline or not? You tell them to bring the book or copies covered, but they are not doing that. Okay, whatever is instructed, I am not talking about all of the students, but some of the students are behaving like that. Whatever is instructed, they are just opposite of that. Okay, and this one, vandalism. Are you knowing the meaning of vandalism? Sir, damage to the school property. Yes, sir. So damage to the school property is also one of the common factors. Okay. They are just seeing web series, YouTube videos, they have grown muscles, but where to implement it? You know where they are getting. It's no other place for them. So our topic was school, the ultimate place of learning. Ultimate place of learning मतलब सीखने का अंतिम स्थान, लेकिन होना चाहिए सीखने का सर्वोत्तम स्थान, जहां पर हम लोग सिर्फ सीखने और सिखाने के लिए ही आते हैं, हमारा और कोई दूसरा मकसद नहीं रहता। बच्चों का मकसद सिर्फ सीखना होना चाहिए, शिक्षकों का मकसद सिर्फ सिखाना होना चाहिए, लेकिन सिर्फ खिड़की तोड़ना, दरवाजा तोड़ना
यही vandalism में ही नहीं आता. Sometimes they are writing on the bench. Okay, on the wall of the school. Kittu loves Kitty. Okay, so many times. We are just washing it, again they are writing. And they are working this thing in a very secret way. Nobody will understand. इस काम में वो CBI, CID सबको डिफीट कर देंगे. कब आया, कब लिखा, किसी को पता नहीं चला. लेकिन वो लिख के चला जाता है. तो जब ऐसी स्थितियां आती हैं, तो हम लोगों को जो डिसिप्लिन की हम लोग इतनी सारी बातें करते हैं, वो लेकिन ब्रेक हो जाता है. और ये सारी बातें इनडिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाती है. ये तो हम लोग सोच लिए बच्चों का पक्ष. But what are the causes? What makes them indisciplined? We need to understand that. Sometimes they are not doing it willingly. Some reasons may be there. Okay? Okay? So these are the causes of indiscipline. First one, lack of ideals. Earlier we have ideals like Swami Vivekananda. Okay, Netaji Subhash Chandra Bose, Ramdhani Singh Dinkar, Maithili Saran Gupta. Okay, in the world of cricket we are having the players who are playing the game with their dedication and devotion. In every field we are getting ideals. But just you see, if a paragraph a student have to write about his or her favorite person, he thinks so many times. The person who is ideal. तो सोचना, हम लोग बोले अपने पेरेंट्स का नाम मत लिखो, अपने पेरेंट्स छोड़कर बताओ. तो सोचता है किसको लिखें? जो मेरा फेवरेट प्लेयर था वो तो घूस लेने के आरोप में जेल में है. जो मेरा फेवरेट मिनिस्टर था उस पर तो बहुत सारे केसेस चल रहे थे. जिनके आश्रम में हम लोग जाते थे वो खुद अभी जेल में बंद हैं. ठीक है, हमारे आसपास समाज में हम लोग किसको देखते हैं तो उसको किसी को आइडियल नहीं पाता. वो जब ढूंढ के देखता है कि यही लोग जब कामयाब हैं तो रास्ता इधर का वो चुन लेता है. वो सोचता है कि पढ़ाई के एकेडमिक से हमको कुछ नहीं होने जा रहा है, हमको पैसा कमाना है. एनी हाउ वी हैव टू अर्न मनी. तो अदर एक्टिविटीज में वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है. अगर उसके पास अच्छे आइडियल्स आएंगे तो हमको लगता है वो क्लास में ज्यादा डिसिप्लिन रह पाएगा. ओके, सेकंड वन, ओवरक्राउडेड क्लासरूम. स्टूडेंट टीचर रेशियो, इट इज 30:1 or in higher classes 45:1 according to our present education system or curriculum. But in some of the classes there are more than 60 students, 70 students or 80 students. Is it possible for a teacher to control the class? If he gives one or two questions, okay, suppose during the process of teaching I have just given one question to the student, what he or she had to write the answer. If I am going to check the copies, how much minute do I need? If I need 1 minute for one student, so at least 60 minutes are needed. And how much time we are getting in the classroom? 35 to 40 minutes. Okay, so the student knows कि मेरी कॉपी नहीं चेक होगी, मेरी कॉपी आने तक घंटी बज जाएगी. ओके, जब टीचर उससे बोलता है कि मैं आज सबसे प्रश्न करूंगा एक एक करके, स्टूडेंट तुरंत अपने पीछे वाले बेंच में चल जाता है. यहाँ तक नहीं आएंगे सर, आप ज्यादा से ज्यादा कश्मीर से मध्य प्रदेश आएंगे, कन्याकुमारी तक नहीं पहुंचेंगे. मैं कन्याकुमारी में सेफ हूँ. तो जब ओवरक्राउडेड क्लासरूम होगा तो यहाँ पर भी हम लोग डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाएंगे. अगर रेशियो मेंटेन हो पाएगा तो डिसिप्लिन भी जरूर मेंटेन हो पाएगा. और दूसरी बात है टीचर्स लेटनेस एंड एब्सेंटेइज्म इन क्लासरूम. टीचर्स लेटनेस कभी कभी होता है, घंटी पड़ गई और मैच भी चल रहा है, मतलब पूछना है कितना विकेट गिरा सर, और थोड़ा सा अब तो बहुत अच्छा खेल रहा है विराट कोहली, 2 बॉल और देख लेते हैं. ऐसी भी बातें होती हैं. कभी कभी जरूरी भी हो जाता, आ रहे हैं तो उनको हो सकता है कि पैर में मोच आ गई, कुछ जेन्युइन कॉजेस भी होते हैं. बट व्हाटएवर मे बी द कॉज, इफ द स्टूडेंट गोज लेट इन द क्लास, द स्टूडेंट आर गेटिंग देयर ओन फ्रीडम. वो अपने क्लास के राजा हैं. गाना सुने ना, यहाँ के हम सिकंदर, वहाँ के सिकंदर हैं. आगे बोले जानते हो तुम, हम जब आ रहे थे ना तो देखे सर की तबीयत खराब, वॉमिटिंग कर रहे थे. बोले चलो और 15 मिनट मिलेगा. इससे एडजस्ट करने में तो टाइम लगेगा ना. और जब वो 15 मिनट होगा तो वहां पर क्या होगा, वो बच्चा गदर मचाएगा, गदर, और वो आ जाएगा डिसिप्लिन की कैटेगरीज में. सेकंड वन इज एब्सेंटिज्म इन क्लासरूम. ये भी किसी कैटेगरी में आता है. अगर टीचर मान लीजिए बहुत दिनों से एब्सेंट है,
तो क्या होता है कि टीचर अपने पैटर्न से पढ़ा रहे, अपने ट्यून से पढ़ा रहे, बट व्हेन द न्यू टीचर कम्स with his own methodology, with his own teaching style, the student is unable to cope up with that. Okay, and what happens? Earlier the discipline what was maintained in the previous teacher's class, the new teacher is unable to maintain it because he knows the teacher is temporary. After 2 or 3 days he will go. Again our new teacher will come. Then we will study nicely. Then we will study attentively. So these are the reasons. Next one is poor teaching and poor leadership qualities in a teacher. You know, teachers are inborn leader. They don't need any degree or diploma in political science. Everywhere, whenever they are entering the class, at least 45 or 50 students are there. For that time period, he have to lead all the students. He have to give the morals, he have to complete the syllabus. At the same time, he have to tell that what we are going to learn in the classroom and where to implement it. But if you are carrying out the old traditional style, then what will happen? They are not going to be attentive in the classroom. So our poor teaching methods are not applicable in present time period. Our national education policy also focuses on that. Even it instructs us to carry out the vernacular language. If the student is unable to understand Hindi or English, then you have to carry out the vernacular language. Okay, I have seen one video on YouTube. It was in Kanpur. For smaller children, the teacher is entering, "Kaho kaise hai yaar? Kaho karte yaar? Kitab utab nahi laya hai?" This is the common language of UP. वो बच्चा अभी इंग्लिश नहीं समझता, वो बच्चा अभी शुद्ध हिंदी भी नहीं समझता. उसके बाद उसको बताया जाएगा कि देखो जब स्कूल में इबा ना तब कहा गुड मॉर्निंग सर, और जब स्कूल से जाया तब बाय बाय सर. इसको आप इंग्लिश में बता दीजिए, वो कुछ नहीं समझेगा, वैसे ही आएगा वैसे ही जाएगा. लेकिन जिस दिन वो समझ जाएगा वो लेकिन इंप्लीमेंट करेगा. तो मेन लक्ष्य है हमें बच्चों को पढ़ाना, मेन लक्ष्य है हमें बच्चों को सिखाना. और जब पढ़ेंगे बच्चे, सीखेंगे बच्चे, तो क्या लगता है आपको डिसिप्लिन रहेंगे? वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनका बोर्डम समाप्त हो जाएगा, वो अपने आप आएंगे. देखते कभी कभी हम लोग देखते छुट्टी है फिर बच्चा लोग स्कूल आ गया है. अच्छा बोलते हैं कि आज स्कूल नहीं है, छुट्टी है, लेकिन नहीं जाना चाहता है क्योंकि स्कूल में उसको लगाव है, वो सीखना चाहता. सब बदमाश बच्चे नहीं है, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं. तो बोलते हैं सर मेरा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट नहीं है. हम लोग प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर ले रहे हैं. हम लोग ठीक है प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लो, लेकिन इसके बाद चले जाना. उसके बाद भी वो सब कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है. तो अगर हमारे टीचिंग मेथड सही है, अगर हमारे टीचिंग टेक्निक सही है, तो हमको लगता है डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन के प्रॉब्लम को पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन बहुत हद तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट वन, लैक ऑफ मोटिवेशन. व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन फॉर ए स्टूडेंट? कैन एनीवन टेल मी? To build his proper character at first. Okay sir, thank you sir. Anyone else? Teacher should be role model. Sir, positive influence. Okay, positive influence. Why the students needs motivation? वो तो पढ़ रहा है, लिख रहा है, नंबर पा रहा है, लेकिन पढ़ लिख के नंबर पाके भी उसको कॉम्पिटेंट बनना है. We are in the age of globalization. Globalization simply means merging of home economy with the world economy. You have to face a different kind of world where different language is there, different culture is there, different custom is there, different tradition is there. So whenever we are not motivating that children, then what will happen? He feels unmotivated. And when the student feels unmotivated, he has a negative approach in the classroom. He is not participative. Okay, and he is not interested whatever is instructed by the subject teacher. He needs motivation. Everyone needs motivation. यहाँ पर जितने जन हैं, क्या आपको भी मोटिवेशन नहीं चाहिए? सबको चाहिए. और इसका एक रोल होता है. आज जब मैं यहाँ आया था तो बहुत सारे टीचर्स ने हमको बताया सर ऑल द बेस्ट. सर चलिए एकदम जितना होगा बोलिएगा अच्छे से. तो मोटिवेशन सबके लिए जरूरी है. क्रिकेट टीम के मैं आपको बताऊं, डू यू नो द नेटवर्थ ऑफ विराट कोहली? एनीवन? नेटवर्थ ऑफ विराट कोहली? कौन सर नोज? आई नो. Someone else? 1052 crores. 1052. And Mahendra Singh Dhoni 1040 crores. Still they need motivation. चक दे इंडिया, इंडिया दिखा दो. ठीक है? तो मोटिवेशन का जो है ना हमारे पैसे से
और हमारे पोस्ट से कुछ लेना देना नहीं होता, सबको मोटिवेशन की जरूरत होती है। हम लोग जब कुछ अच्छा करते हैं तो हमें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अच्छे काम में बाधा ज्यादा होती है। गलत काम के लिए किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, गलत काम वो खुद करता है। लेकिन जब अच्छा काम करते हैं तो वी नो वी हैव टू फेस a lot of hurdles, a lot of barriers. For that we need motivation, and this motivation works like a fire of the aircraft. एयरक्राफ्ट ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि उसके नीचे एक आग होती है, ये आग ही मोटिवेशन है। जब उसको सही आंच मिलेगा तो एयरक्राफ्ट अपने आप ऊपर जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स नीड मोटिवेशन। So the teachers also. Also that Teachers also need motivation. social media influence, Instagram, WhatsApp, Facebook, बहुत सारी चीजें हैं और ये चीजें कतई खराब नहीं है, इसे खराब नहीं कहा जा सकता, but everything has a particular time period. Yes, it should be within life. And content also. Yes, content also. Okay, so as they are getting some influences from the social media, they are trying to implement in the classroom, outside the classroom, where they are getting some leisure, where they are getting some time period, they are just utilizing this in the classroom, and this thing becomes one of the reasons for indiscipline. Old teaching methods, I have told you, it comes under the category of poor teaching. Now the inconsistency in punishment. One important fact I want to share with you, that according to RTE 2009, the law has implemented on 1st April 2010 under section 17(1), under section 17(2), you cannot punish any children physically or mentally. Now it has become a criminal offense. So when you cannot punish any student, student क्या हो जाएगा? Indiscipline. चलो क्या है सर, कितना पीटेंगे, चलो देखते हैं। हम देखें राम इज सेइंग टू श्याम कि हम देखें कली गूगल में, कुछ नहीं हो सकता, खाली 3 महीने के लिए बैठा सकता है और कुछ नहीं। लेकिन अगर पीट दिए तो हम लोग यहाँ से हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा जाएंगे पुलिस स्टेशन। अभी आपको पता है बच्चे पढ़ रहे हैं चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकार। आप लोग भले ही मानवाधिकार नहीं पढ़े हो, लेकिन बच्चे अपने अधिकार जानते हैं। कुछ भी होगा ना, लोग आपस में डिस्कस करते हैं, कुछ नहीं होगा, हम देखे हैं। केस स्टडी देखेगा तुम, जबलपुर का मेरे पास रखा हुआ है और उसमें वही लड़का केस जीता है। तो इतनी सारी चीजें हैं उसको इंडिसिप्लिन होने के लिए। हम लोग सोचेंगे छड़ी लेके उसको मार के बैठा देंगे, वो सिस्टम चला गया सर, वो छड़ी वाला काम खत्म हो गया। आप छड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप बोली का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षक की बोली किसी छड़ी से कम असरदार नहीं होती। जिस दिन बच्चा जान जाएगा ना कि शिक्षक मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनको ऐसा बोलना पड़ रहा है, तब बच्चे उनकी बात को जरूर मानेंगे। हमने देखा है बहुत जगहों पर, हम लोगों ने भी पहले पढ़ाया है, वहां पर भी देखिए बहुत इनडिसिप्लिन बच्चे हैं, लेकिन जब उनको प्यार से समझाया जाता है तो लेकिन वो बात सुन लेते हैं। हम अभी आते सर लोग से शेयर कर रहे थे बस में कि बहुत सारी जगहों पर जो काम पनिशमेंट नहीं कर पाता, वो काम लेकिन शिक्षक की बोली कर जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा कभी अहित नहीं चाहेंगे, कि मेरा कभी नुकसान नहीं होने देंगे, और बच्चा उनकी बात को अच्छी तरीके से सुन लेता है। So these are the causes of indiscipline. Now we are to the next slide. Effects of indiscipline and misbehavior. अगर वो indiscipline का शिकार है, अगर indisciplined है, तो उसको फ्यूचर लाइफ में किस किस तरह का प्रॉब्लम, यही सब बताइएगा क्लास में, कि अगर तुम indisciplined होगे तो तुम यहाँ से तो पास होके चले जाओगे, but you have to face this problem. Social inabilities. Okay, social inabilities means you have to reside in a society, you have to reside in a family, you have to reside within the school campus for some time period. If his or her behavior is not social, he cannot accommodate, he cannot get accustomed with that. जब आप इसके बाहर जाओगे, वो तो क्लासरूम नहीं है और टीचर तुम्हारे जान पहचान के नहीं है, आप वहां पर अगर ठीक से बात नहीं करोगे तो आपको देन एंड देयर पनिशमेंट मिल जाएगा। बच्चे दो ही जगह अपनी ताकत दिखाते हैं, एक माँ बाप के सामने और दूसरा, ठीक है, और बाहर वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, लेकिन घर में पूरा लड़ते हैं, घर में कोई इशू दीजिए देखिए उठापटक शुरू कर देंगे, लेकिन वही चीज जब बाहर का आदमी बोलता है तो वो कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो सोशल
इनेबिलिटीज जो डेवलप हो जाती है वो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाते। ओके, हमको अपने जॉब के सिलसिले में, वर्क के सिलसिले में कहाँ जाना पड़े कोई नहीं जानता, क्या हम अपने इस रवैये के साथ वो एडजस्ट कर पाएंगे? मैंने कल फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में बताया था कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, जो कि यहाँ से 999 किलोमीटर है। तो अगर जो मान लीजिए कि मैं खराब रवैया के साथ आऊंगा तो अयोध्या के बाद वाला स्टेशन जो है अकबरपुर में, वही नहीं कर सकता। दुर्गा की बात को छोड़ दीजिए। तो हम लोग को बच्चों को बताना होगा कि तुम अगर रवैया नहीं चेंज करोगे बेटा तो दुनिया बहुत बड़ी है, जहां भी जाओगे लोग तुमको एडजस्ट नहीं होने देंगे। जस्ट चेंज योर बिहेवियर। सेकंड थिंग इज करप्शन इन हाई एंड लो प्लेसेस वी सी। ओके, जब भी हम देखते हैं कि दिस ऑफिसर इज वर्किंग नाइसली बट ही इज वेरी करप्ट, दिस प्लेयर इज प्लेइंग नाइसली बट ही इज वेरी करप्ट इन द रियल लाइफ। इवन इन द केस ऑफ सम सेलिब्रिटीज, ओके वी हैव सीन, हम लोग एक एग्जांपल बताते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले सारा के मालिक सुब्रत राय का डेथ हुआ और एक समय अमिताभ बच्चन साहब को बहुत मदद की थी उन्होंने, ठीक है। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो इन लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, उनके अपने बच्चे अमेरिका से नहीं आए उनकी लाश को जलाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मेरा पापा जो था करप्शन के केस में इतने तो जेल बंद था, उनको उसके प्रति एक तृष्णा हो गई। ठीक है, करप्शन सिर्फ जो है गैरों को आपसे दूर नहीं करता, वो अपने अपनों को भी आपसे दूर कर देता है। ठीक है, तो बच्चों को याद रखना पड़ेगा, अगर आप इनडिसिप्लिन हो रहे हो, अगर करप्शन के नजदीक जा रहे हो, ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। टेंडेंस वीक सोशल इंस्टीट्यूशन, हमने पहले बताया एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इन सब की बुनियाद कमजोर हो जाती है। अगर जो कहीं पर भी हम लोग इनडिसिप्लिन को देखते हैं, आपको लगता है कि कोई भी फैमिली बिना डिसिप्लिन के रन कर सकती है, कोई भी एजुकेशन सिस्टम बिना डिसिप्लिन के रन कर सकता है, कोई भी सोसाइटी बिना डिसिप्लिन के रन कर सकती है? आप देखिए जो गवर्नमेंट सिस्टम में जब ऑनेस्ट ऑफिसर आते हैं तब क्या तब्दीली आती है। हम लोग तो सिंघम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सिंघम कोई नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उसको ऊपर की कमाई बंद हो जाएगी। उसके सारे तो उसके जितने अंडर में वर्कर है वो सब चाहेंगे इसका ट्रांसफर जल्दी से जल्दी हो जाए, सारी ऊपर की कमाई बंद हो रखी है। लेकिन बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा ऐसी क्वालिटीज के साथ भी लोग रह सकते हैं। सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया लाल बहादुर शास्त्री का, मैं उनका रियल लाइफ में बहुत बड़ा फैन भी हूँ। लाल बहादुर शास्त्री का जब डेथ हुआ तो उनको ऊपर कार का लोन बाकी था, सिर्फ 4000 रुपए का। वो देश के प्रधानमंत्री थे, वो चाहते तो आराम से कहीं से भी उसको मैनेज करके दे सकते थे। और दूसरा एग्जांपल मैं कलाम साहब का देना चाहूंगा, जब उनके राष्ट्रपति भवन में उनके 17 रिलेटिव्स आए थे और रहे थे तकरीबन 30 दिनों तक, तो पूरा का पूरा खर्चा उन्होंने अपने सैलरी से दिया था। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑनेस्टी। जब भी हम लोग वहां से बताएं, इन लोग को अपना रोल मॉडल बनना है। हम लोग कभी बच्चों को बताते हैं, हम लोग को मौके मिलते हैं कि हम लोग क्लास का कुछ लीजर पीरियड मिलता है, हम दूसरी क्लास में चल जाते हैं, तो हम लोग रोल मॉडल बना देते हैं सेलिब्रिटीज को। जैसे कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच हुई है तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, उस दिन सारा कैमरा का फोकस था सारे सेलिब्रिटीज पर, लेकिन उस दिन नीरज चोपड़ा भी मौजूद थे, एक भी कैमरामैन ने नहीं दिखाया। एक दिन पूरा देश नीरज चोपड़ा पे गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि उसने गोल्ड दिलवाया था 28 साल के बाद, लेकिन हम लोग सिर्फ 28 सप्ताह में भूल गए। ठीक है, सारा हमारा ध्यान सेलिब्रिटीज पे था क्योंकि उनके लिए नीरज चोपड़ा ने ऐसा कुछ नहीं करा है जिसको गर्व किया जा सके। लेकिन हम लोगों को इन लोगों को भी एग्जांपल सेटअप करना चाहिए। जब उनको बुलाया गया कि कुछ दो वर्ड्स बोलिए तो बोले कि सर मैं अपनी मदर टंग में बोलूंगा, लैंग्वेज कोई मायने। यस सर। So recent example I would like to focus. Sir, I would like to highlight one recent example which just took place. Asian Games was there. Our honorable sir was also there, and he was doing the hospitality over in Ranchi. In the final match, India defeated Japan. China. Yeah. Yes. Then, despite of that, they were not elected. They were not appreciated. So this type of appreciation will come from we teachers. We have to select our role models, the persons who have earned fame and fortune through his or her honesty, not by adopting wrong means of the life. Okay. Now the tendency of revenge. ये तो बहुत होता है डिसिप्लिन बच्चों में, छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। और इसी तरह की फिल्में जो थी बहुत फेमस होती हैं। एक्चुअली आप देखिएगा बहुत सारे बच्चों का रोल मॉडल क्रिमिनल्स भी बन गए हैं। ठीक है, बहुत आश्चर्य की बात है।
तो लोग अपना जो सिलेक्ट किए हैं फोटो सब क्रिमिनल्स को, और बोलते हैं जैसे उसने बदला लिया ना वैसे मैं बदला लूंगा। मैं अपनी बॉडी बना रहा हूँ, बस चिंता करो जैसे निकलेंगे याद रखना। तो इन डिसिप्लिन का कभी कभी मुआवजा जो है कभी कभी शिक्षकों को भी मिल जाता है। बहुत जगहों पर लोग बोलते हैं बेटा देख लेंगे तुमको, बोलता है बस और 2 साल देखिए सर, उसके बाद तो हम देखेंगे आपको, ठीक है। तो इसका इफेक्ट जो होता है ये भी बहुत दिक्कतें करता है क्लासरूम कंटिन्यू करने में। और लैक ऑफ मोरल्स, नैतिकता की बहुत जरूरत है। शिक्षक मतलब ही नैतिकता, जहां नैतिकता है वही शिक्षक है। अगर नैतिकता नहीं तो शिक्षक नहीं है वो, भले उसकी डिग्री कुछ भी हो, वो एमएड हो, बीएड हो, पीएचडी हो, कुछ भी हो, अगर उसमें मोरल्स नहीं है तो उसकी सारी डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है। और अगर हम अपने मोरल्स को कंटिन्यू करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर लैक ऑफ मोरल्स नहीं रहेगा, उसका इफेक्ट मोरल्स में रहेगा। और वो पूछेगा कि आप बताइएगा आप जीवन में इतने कामयाब। हमको बहुत आश्चर्य लगता है जब हम लोग अपने स्कूल में प्रोग्राम में किसी आईएएस आईपीएस को बुलाते हैं और जब उन लोगों से पूछते हैं कि आप किससे इंस्पायर्ड हुए, तो 90% लोग अपने टीचर्स का ही नाम लेते हैं। ये टीचर की सबसे बड़ी विजय है। माय डियर टीचर्स, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। इसके लिए आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो ऐसी बात आएगी तो इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेंगे। और ये है हाउ टू टैकल द सिचुएशन, जो कि टॉपिक है हैंडलिंग मिसबिहेवियर एंड इनडिसिप्लिन। हम लोग इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं? फर्स्ट, बिकम फेमिलियर विथ योर स्टूडेंट्स। कैसे फेमिलियर बनेंगे? जैसे मैं क्लास में आया और मैं बोला मोहन सीधे होकर बैठो, तुम राम साइड हो जाओ, और तुम, यानी स्टूडेंट जानता है कि टीचर इज माय नोइंग माय नेम, दैट मींस आई एम स्पेशल टू हिम। जब भी देखिए कहीं पर भी आप कहीं पर एग्जाम में गार्डिंग भी दे रहे हैं और आप बोलेंगे राहुल तुम क्यों नहीं लाए, तो बोलते सर आप हमको जानते हैं लेकिन आप तो मेरी क्लास में नहीं जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं बिकॉज़ यू आर वेरी गुड इन आर्ट्स, यू आर वेरी गुड इन पेंटिंग, बिकॉज़ यू आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स और इन अदर एक्टिविटीज। तो जब बच्चा को लगने लगता है ना कि टीचर मुझे जानते हैं, तब वो थोड़ा सा कम इनडिसिप्लिन हो जाता है। पूरी तरीके से डिसिप्लिन नहीं हो जाए खाली नाम जानने से, लेकिन वो आपके सामने बदमाशी नहीं करेगा। इसको आप आजमा सकते हैं। जिसको भी आप बोलते हैं इधर आओ मोहन, क्या बात है हम कल तुमको देखे, और अगर आप उनके पापा के नाम को जानते हैं उनके, तो और भी शांत हो जाएगा। मेरे परिचित वाले से, ठीक है, बोलते तुम्हारे पापा को मैं देखा था मार्केट में, बस अपने आप शांत हो गया, ठीक है। 1 minute. Yes. Actually, this psychology ऐसा है कि each and every human being in this world, you know, the sweetest sound that they want to hear is the sound of their name. Yes. आप किसी भी व्यक्ति को उनका नाम से पुकारिए, देखिए एक आपके towards आपके तरफ एक अलग किस्म का खिंचाव आएगा। That is why बोला जाता है कि हर व्यक्ति का नाम जान जाइए, उनका नाम से पुकारिए, and it will create wonders. It will create wonders. Sorry to disturb. लगा बोलना। Okay, sir. Next one is setting rules and expectation. जो prescribed rules है, आप उससे थोड़ा अलग भी बना सकते हैं. It should be flexible, because students are different according to time, according to place, according to some their physical abilities or disabilities, whatever. So you have to set your own rules and regulation, but you have to set the limit also. Don't cross the limit. और मैंने बताया ना कि आप उनको जब बता वो नहीं क्रॉस करेंगे। हम लोगों ने देखा है कहीं पर हम लोगों ने अपने बच्चों की टीम को बिना टीचर के भी भेजा है, वो लोग पार्टिसिपेट करके प्राइज लेके खुद ब खुद कंट्रोल होके आए हैं। उसी में से किसी को मैंने लीडर बना दिया है और लीड करके लाता है कि नहीं सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझे करना है। आप देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी के समय हम लोग जो भी काम देते हैं बच्चों को, ऐसे तो नहीं देना चाहिए, लेकिन मान लीजिए बहुत इमरजेंसी वो करता है, लेकिन वो अपना काम छोड़ के करता है। तो इसका ये जो इंस्पिरेशन है ना, वो हमारे वो रूल से पता है जो हमने उनको सेट किया, क्योंकि सर भी तो आते हैं, सर भी तो इसको फॉलो करते हैं, सर को भी तो करना पड़ता है। यस, डू यू वांट टू से समथिंग सर? ये माइक ऑन दीजिए तो अजय सर को। Sir, I agree with you for this point at first, and then I say example. 15 नवंबर की बात है, हमारा राज्य का स्थापना दिवस था। सभी स्कूल प्राय छुट्टी थे। एन वक्त पर कल प्रोग्राम होना है, शाम के समय आया
कहीं से भी हमारे अथॉरिटी को फोन कि कल आपका स्कूल का कल्चरल प्रोग्राम में ये कार्यक्रम देना है, और कुछ स्कूल में आए थे, सभी ने डिनाई कर दिया कि नहीं दे सकते। हम लोग भी डिनाई ही कर दिए थे, क्योंकि वैसे हालात, लंबी छुट्टियां चल रही थी, स्टूडेंट कहीं थे, हम लोग कहीं थे। मैंने एक स्टूडेंट को फोन किया जो कल्चरल प्रोग्राम में वेलकम सॉन्ग का लीडरशिप करती है, उनको पूछा कि क्या ये संभव है। बोले यस सर, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं और ये संभव होगा। और एन वक्त पर हम लोगों ने 7 बजे रात में बच्चों को स्कूल बुलाया, सारे बच्चों को इकट्ठा करके लाई, अगला दिन तक फुल कोऑपरेट करके जो नहीं सीखे थे उनको सिखाकर हम लोगों ने स्टेज में परफॉर्म किया। तो जरूर ही स्टूडेंट का बहुत बड़ा ये सब में योगदान रहता है। अगर हम उसके प्रति कुछ आशा रखते हैं तो वह भी हमारे आशाओं पर वो खरा उतरने में बिल्कुल साथ देती है। Well said, sir. Thank you, sir. Anyone else want to say this topic? Rajesh sir. Yes sir. सर, उस बात को मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि बच्चे के नाम लेकर को हम अगर पुकारते हैं तो सच में उसको बहुत अंदर से फील होता है। इस बात को थोड़ा सा हम सामाजिक रूप से लेके चलते, शादी होने के बाद महिलाओं को उनके पति का नाम लेने नहीं दिया जाता, शायद इसी वजह से घर में झगड़े होते हैं। That is a different issue, sir. हम लेते हैं सर, आपको नहीं पता, आप लेते हैं, पहले नहीं लेते थे, हम लेते हैं सर। यहाँ तक उनका सरनेम भी चेंज नहीं करते हैं, वो सरनेम भी रहने देते हैं। ठीक है, वो कानून बन गया, वो कर सकते हैं वैसा। ओके, नेक्स्ट, डील विद प्रॉब्लम्स एट देयर रूट। हमें किसी भी चीज को, जैसे कि 2 पार्ट होते हैं ना, रूट एंड शूट। शूट सबको दिखता है, रूट किसी को नहीं दिखता, क्योंकि रूट जमीन के अंदर होता है। Unless or until root nodules go inside, the other part, that is shoot, cannot go upwards. So you have to know the reason. If you are going to search for the root, if you are going to find out the root, then we can get the solution. ठीक है, हम लोग सबके पर्सनल लाइफ में तो इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन टीचर का मैंने बताया ना बहुत बड़ा रोल होता है। वो जब बुलाएगा, क्या दिक्कत है तुमको, he starts crying or weeping. Okay, अमित सर, आप फेस such kind of problem, I am knowing. Okay, लेकिन अब इनको माइक नहीं देंगे, हर बार आप ही बोल रहे हैं, इस बार दूसरा किसी को देंगे। ठीक है, अगर जो हम लोग उनकी समस्याओं को जाने, मैंने पहले बताया है, without diagnosis of the ailment, we cannot prescribe the prescription, we cannot prescribe the medicines. First, we have to know what kind of ailment he or she is suffering. कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और कुछ बातें भी होती हैं ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एडोलेशन, जो सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। टीचर इज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ऑलवेज दे आर गाइडिंग, ओके, ऑलवेज दे आर टॉकिंग अबाउट फिलॉसफी, ऑलवेज गिविंग फिलोसॉफिकल स्पीचेस, बट व्हाट अबाउट योर फ्रेंडलीनेस? ऑलवेज यू आर स्ट्रिक्ट विद द स्टूडेंट्स, you have to ask just like a friend, what happened to you? Come to me, what happened to you? And the student tells, sir, पहले तो नहीं बताएगा, जब बहुत उसको अपने आप विश्वास में लेंगे, then you start. आप जब जान जाएंगे, देखिएगा धीरे धीरे उसका इनइफेक्टिवनेस चला गया है। अब वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जैसे ही पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, वो टीचर की सबसे बड़ी विजय है। लेकिन ठीक है, क्योंकि जो लोग बहुत अटेंटिव है, जो बहुत हाईली टैलेंटेड है, ठीक है, जो लोग आईआईटी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दे आर स्पेशल, इन ऑल केसेस दे आर स्पेशल। उनको 10 के समय आप 12 का मैथ दे दीजिए, वो बना लेगा, लेकिन इसके लिए हम बच्चों को 12 का मैथ 10 में नहीं बनाने लगेंगे। दैट इज एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्शन नेवर बिकम्स रूल। तो हम लोग जब रूट में जाएंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि क्या दिक्कतें हैं जिस कारण से वो क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। अगर जब हम लोग रूट लेवल्स पे जा पाएंगे तो हमको लगता है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। दीज आर द सजेशंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट्स नीड सोशियो इमोशनल सपोर्ट। ओके, इमोशनली तो आप लोग जुड़े हुए रहते हैं। कभी कभी ऐसा है कि बच्चों के रोने के साथ आप भी रोए हो? दीपी सर रोए हैं फेयरवेल में, हमको पता है। हम लोग फिल्में देखते हैं तो रोते हैं, इतने हम लोग 2 घंटे में जुड़ जाते हैं फिल्म के साथ, और इतने साल 5 साल में बच्चों के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। बच्चा बोलता रहता है लेकिन हम लोग नहीं सुनते, लेकिन वहां पर लेकिन जुड़ना पड़ेगा। जब हम लोग उसके साथ सोशियो इमोशनली वे में एंगेज हो पाएंगे तो ऑटोमेटिक, जैसे लैंग्वेज बैरियर होता है बहुत बच्चों का, एज बैरियर होता है, क्लास में थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, इसका नाम रख दिया घटोत्कच, ठीक है। क्लास में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होता है स्पीच करने में, बोलने में, डिसलेक्सिया के जो प्रॉब्लम ने तारे जमीन पे देखा था,
उसका नाम ही ईशान अवस्थी रख दिया। ठीक है, तो ऐसी चीजों में क्या होता है कि वो जब इमोशनली ये सब चीजों को फील करता है ना, तो धीरे धीरे पीछे हटता चला जाता है, वो क्लास में कभी पार्टिसिपेटिव नहीं रह पाता। तो हम लोगों को सोशली एंड इमोशनली बच्चों में इस तरह अटैच, मैंने बताया था ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द मेन अप्रोच। Socially, economically, politically, spiritually, whatever may be the ground, the ultimate result is that he can succeed in the real life. Wherever he goes, he will represent you. कभी कभी कोई बोलता है तुम इतना अच्छा इंग्लिश लिखा है, सच बोलो तुम कहाँ पढ़ता है? सर मेरे पापा पढ़ाते हैं। सच बोलो। नहीं नहीं सर, हमको ये जो इंग्लिश लिखा है ये जरूर यही सर पढ़ाए होंगे, और कोई इतना अच्छा इंग्लिश सिखा ही नहीं सकता। तुम इतनी अच्छी मैथ कहाँ से सीखे हो? तो आपका परिचय है वो स्टूडेंट। आप नहीं रहोगे, लेकिन उसके थ्रू से आप जिंदगी भर जिंदा रहोगे। जब जब नाम होगा आपका नाम लेगा, आपकी बात करेगा। इस तरह मैं जो भी हूँ उनके कारण हूँ। सर ने सिखाया इसीलिए मैं आज बोल पा रहा हूँ, सर ने सिखाया इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, perhaps register not knowing. One student is Sikha Modi. Now she is in Deloitte company of Bangalore, and presently she is getting a salary of 1,23,000. So whenever the director of the company have asked the reason of her success, he desperately told it is due to Sidhu Kannu High School. Because from say class KG to class 12, she always stood first in the class. And when she passed class 12 with 95.2%, and that year the mathematical question was very hard. Still, she got 95 in mathematics. And yes, sir. Sir, one more student, Cobra. Yeah, Cobra. That is Vishwajit Thakur. वो अपना एक गैंग बनाया था। It was in बांग्ला। आचोम का हमला ठेक, अचानक हमला करने वाले। क्लास में बहुत डिसरप्टिव स्टूडेंट था वो। लेकिन एक दिन जब हम लोग मिले V2 के सामने, तो yes, sir want to share. Yes, I want to share with Cobra students. He was very famous. क्लास में जब ये सर हमको मैट्रिक पास करा दीजिए। क्यों रे, क्या हुआ? मैट्रिक तो ही पढ़ोगे? सर हमको मैट्रिक पास करा दीजिए, हम डंडा वाला हवलदार बनेंगे या 3 बाजार में ठेला वाला से कलेक्शन करेंगे। Unfortunate that he got the Khuti. He is inspector. Now he is an inspector. Really, in Khuti district. Yes. तो हमने बोला भी कि तुम खूंटी में चले गए, वो तो नक्सली बेल्ट है। बोला सर हमसे बड़ा नक्सली कौन होगा, आप लोग तो जानते हैं। So it is the effect of teaching, love, affection and all the things. Teaching can change everything. Yes sir. I think I have to share this. I remembered. Okay sir. Last year, one phone call came to me. One girl, female voice. Hello, sir. Who are you? Do you remember me? I am Rituparna Banerjee. In year 2000, you taught me in Dinobli school. So I don't remember. Then she started telling me the background. And you know what happened? Actually, that time I was a new teacher there in Dinobli school, young boy, and I was teaching. And suddenly one parent came to me and told, "Sir, you are Patrick, sir." Oh, yes. Few of the teachers have sent me to you, and purposely all the teachers they have sent that parent to me because they knew that he is a new guy and he will be trapped. And he came to me and said, "Samson sir, Patrick sir, one request. Ekta request আছে শুনুন না." কি বলুন? আমার মেয়ে আছে, ছোট আছে, I think she was in class 1, 2, 3, 4, I don't know, some class. And said that girl is having a phobia, you know, of coming to school. She's not coming to school. Some phobia she was having, like that fear to come to school. And I took so many teachers, but all are fed up. So few teachers said, "You are a very good teacher." But I am not a good teacher, I am a new teacher. Well, please sir, this is my request. You come to my house and you give some tuition to my daughter. Same school she was studying, but she never used to come to school. ठीक है, चलिए, ऐसा challenge है sir. चलो, let's go. I went there.
Then the father and mother is telling, sir, আমার মেয়ে এখানে নাই, আমার মেয়ে কোথায় আছে আমি জানি না কোথায় আছে আমার মেয়ে। বলে वो हाइड করছে ভিতরে কিছু রুমে, वो ब्लैंकेट बुंकेट ओढ़ के जो है कहीं छिप के है, ये समझ गया कोई टीचर आ रहा है। अरे बाप रे बाप, so what I have to do now? Then first I have to search that girl, you know. Then I asked the mother, भैया कौन वाला रूम में मिलेगा बताइए आप। बोले वो कौन रूम में देखिए ना। I saw in blanket one girl is hiding there, and I knew the name. I said, Rituparna, hello, how are you? Then that girl heard my voice. Actually, he thought कि कोई young लड़का है लगता है। So he took like this because all that old. I'm not talking bad about old teachers. All teachers they go like this with blanket. She's looking with one eye. Like a movie, you know. And then slowly she's taking out the blanket and looked at me. I am your new teacher. And don't think I'm a teacher, I'm your friend. Come with me. And she jumped and came. I took her in the lap. And beforehand I, set the table, carrom board for her. I said, carrom board लगा के रखिए, पढ़ाएंगे नहीं, लोग खाली खेलेंगे इसके साथ. And for at least 2 weeks I played with her in her house. For 2 weeks. The third week she said, I'll go to school only with Samson sir. And that time I was not having any vehicle, no bike, nothing was there. So I borrowed one bike from my friend, scooter. And that scooter I went to her house morning, took her in my scooter and brought her to the school. And then she started, and that day she called me and said, you remember me? And I was really shocked. And she was so happy. She is now married, having child, and now settling in Chennai, in a very good position. So I just Thank you, sir, for sharing your views. One joke is there. एक बार एक बच्चा देखता है कि कसाई जो है वो बकरे को लेके जा रहा है और बकरा चिल्ला रहा है, जैसे कि मैं करके चिल्लाता है। तो पूछा अपने पापा से, पापा वो क्यों चिल्ला रहा है? बोला कि उसको काटने ले जा रहा है। बोला अच्छा, हम तो सोचे स्कूल जा रहा है। तो शिक्षकों को खौफ रहता है सर, वो धीरे धीरे ही जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इसका सीधा साधा हिंदी है, कथनी और करनी में बहुरूपता नहीं होनी चाहिए। जो आप कहें उसका पालन करें। बच्चे आप पर बहुत विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि अगर जो आप गलत आंसर भी लिखवा देते हैं ना, तो घर में लड़ता है कि आप मेरे टीचर सलाह जानते हैं क्या, मेरा टीचर सही लिखवाया है। तो जब हम जो प्रीच कर रहे हैं अगर प्रैक्टिस करें तो बच्चों से सबसे ज्यादा सीखेंगे। बच्चे जान जाएंगे अच्छे हैबिट्स में आता है और एक खराब हैबिट्स में आता है। तो अगर जो मान लीजिए कि आप जो इनडिसिप्लिन की बातें कर रहे हैं ना, आप अगर खुद बहुत डिसिप्लिन है तो बच्चा कम से कम आपके सामने इनडिसिप्लिन होने से कतराएगा। आर यू एग्री और नॉट? बाकी को डिस्टर्ब करे या ना करे नहीं पता, लेकिन जानता है जो सर बहुत पंक्चुअल हैं, जो सर बहुत डिसिप्लिन है, जो सर बहुत अच्छा हम लोग को पढ़ाते हैं, जो हम लोग के हमेशा भले के बारे में सोचते हैं, वो वहां पर कम से कम इंडिसिप्लिन होने की कोशिश नहीं करेगा। और जब क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन, दिस minorities can't disturb you. Okay? And the next one is make your class interactive. क्लास को जिंदा रखिए, मृत मत रखिए। क्लास जब जिंदा रहेगा तो क्लास अपने आप डिसिप्लिन रहेगा। जब उनको लीजर मिलेगा, जब कुछ नहीं होगा तो ये डिसिप्लिन हो जाएंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप अगर जो सर्च करेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जिसमें हम कल एक एक्टिविटी खेले थे नेम प्लेस एनिमल थिंग वाला। अगर आप मान लीजिए ड्राइंग के टीचर और मैथ का पीरियड, तो आप क्या पढ़ाएंगे? वो एक्टिविटी कंटिन्यू कर दीजिए, बिकॉज एवरी एक्टिविटी हैज अ लेसन। कुछ एक्टिविटीज हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास को जब इंटरेक्टिव रखेंगे, कभी कभी होता है ना कि हम लोग क्लास में चलो कुछ अंताक्षरी खेल देते हैं। तो अंताक्षरी आपको पता है भजन का भी होता है, अंताक्षरी भजन का भी होता है, अंताक्षरी जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उसका भी होता है। तो बच्चे जाके सर्च करेंगे, अंताक्षरी कई मोरल वर्ड्स के भी होते हैं, खाली गाने का ही अंताक्षरी नहीं होता। तो आप लोग अपना अपना जो है एक शेड्यूल ऐसे बना सकते हैं जिससे बच्चे क्लास में एंगेज भी रहें, क्लास इंटरैक्टिव भी रहे और क्लास से कुछ अच्छा रिजल्ट भी आए। तो हमको लगता है कि डिसिप्लिन के मुद्दे को बहुत हद तक सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, रिवॉर्ड गुड बिहेवियर। इफ समवन इज पंक्चुअल, रिवॉर्ड हिम और हर। If someone is very truthful, reward him or her.
If someone has the courage to speak the truth in front of 100 people, he or he must be rewarded for that. इतने जन के सामने बोलने का हिम्मत तो किया, कोई होमवर्क बना के नहीं लाया, एक बच्ची लेके आई है. What is generally teachers are saying, सबका एक साथ चेक करेंगे, तुम रख दो. तो उसका तो पनिशमेंट हो गया ना. और आज जग के 2-2:30 बजे तक बनाई, उसका नहीं चेक हुआ. एक जन का ही चेकिंग कीजिए, उसको एग्जांपल बनाइए कि इनसे कुछ सीखो. छुट्टी तो सबके लिए थी, दुर्गा पूजा की छुट्टी सबके लिए थी, दिवाली की, ये कैसे बनाई? तो इसी तरह से जब भी आपको थोड़ा भी गुड बिहेवियर मिले, आप रिवार्ड कीजिए. बच्चा डिसिप्लिन होने की और कोशिश करेगा. ओके? एंड प्लान एंड ऑर्गेनाइज, ensure that there is a routine and rhythm in the classroom. Everything works according to rhythm. Just tell about the cycle. Our seasons. First, the winter season, then the summer season, arrival of monsoon, departure of monsoon, again winter season, and the process goes on. Sun, stars, everything have their own rotation, have their own values. If they are in rhythm and they are working according to their need and requirement, according to their geological systems, so why not we people? आज ठंडी पड़ रही है तो हम लोग जैकेट पहने, कल नहीं पड़ेगी तो हम लोग नहीं पहनेंगे. लेकिन अगर रिदम चेंज हो जाए तो, अगर आप देखें कि नवंबर 26 तारीख तक भी थोड़ी ठंडी, सब बीमार पड़ जाएंगे. तो उस तरह क्लास का भी अपना एक रिदम है, क्लास का भी अपना एक सिस्टम है, उसका भी एक साइकिल होता है. हम लोग वाटर साइकिल पढ़ाते हैं, ट्रेड साइकिल पढ़ाते हैं, क्लास का भी अपना एक साइकिल है. ये डिस्टर्ब होगा, बच्चा इनडिसिप्लिन हो जाएगा. ये रुकेगा, बच्चा इनडिसिप्लिन हो जाएगा. When the students are in dilemma what to do and what to not, they are just starting their disturbance in the classroom. They are starting their nuisance in the classroom. They are asking some silly question, foolish question, who have nothing to do in the classroom. तो हम लोग इस रिदम को नहीं ब्रेक होने दें. हम देखते हैं कभी भी मजाक करते करते बच्चा लोग हद पार कर जाता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. तो आप देख लीजिए कि जब वो बात हद से ज्यादा निकल रही है, तो आप उसको रोक दीजिए, उसको डाइवर्ट करिए दूसरे डायरेक्शन में, उससे दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए, जैसे तुम बताओ. तो इसमें क्या होगा, जब रिदम मेंटेन रहेगा तो डिसिप्लिन नहीं होगा. एंड कीप योर स्टूडेंट्स एंगेज्ड, एबीसी में है मूव अराउंड द क्लासरूम. सर जैसा कि पहले इसको हटा दिए, घूम घूम के सब बता रहे थे, ये बहुत अच्छा चीज है. ठीक है, सबसे इंटरेक्ट हो पाता है. और सबसे हम लोग जब हम लोग घूमते घूमते जाएंगे ना, तो हर बच्चा जो थोड़ा सा बेंच पे इधर भी बैठा है, आपको देख के फिर इधर हो जाएगा. ठीक है. और पढ़ाने के दौरान क्या होता है, टीचर्स हमेशा अच्छे बच्चों पर निगाहें रखते हैं. ठीक है. अगर देवाशीष मोहंती मेरा क्लास का फर्स्ट बॉय है, मैं उसी के चारों तरफ घूमता हूं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मैं उससे आगे नहीं जा सकता. लेकिन देवाशीष मोहंती के चक्कर में सौरभ कुलकर्णी कुछ नहीं पढ़ पाया, और उसको पता है कि सर आएंगे भी नहीं. तो इसका क्या हाल है कि देवाशीष मोहंती तो पढ़ेगा, सौरभ कुलकर्णी कभी नहीं पढ़ेगा. लेकिन मेरा टारगेट होना चाहिए कि सौरभ कुलकर्णी पढ़े, क्योंकि देवाशीष मोहंती तो पढ़ ही रहा है. जब मैं क्लास में इतने सारे सौरभ कुलकर्णी को फाइंड आउट करके ला पाऊंगा, then we are able to control discipline in the classroom. And this one is for you teachers. 6 pictures are there. You have to identify the pictures which comes under the category of discipline and which comes under the category of indiscipline. One by one you can come with picture 1, picture 2, picture 3, and you have to tell why these categories come under discipline and why these categories come under indiscipline. Anyone who is interested? Anyone, sir? Amit sir? Yes. One more picture we need. आइए सर, आप डिसिप्लिन एक्टिविटीज को फाइंड आउट कीजिए, and Rajesh sir will get the indiscipline activities. And why they are coming in this category, we have to explain, sir. Please, sir. This picture having indiscipline man and indiscipline. So this one and this one, all 3 are in discipline category. इस पिक्चर में वो किसी को चिढ़ा रही है वो, और क्लास में ऐसे बच्चे लोग करते हैं, किसी को देख करके कुछ किया तो ऐसा कर देते हैं. और इसमें हम लोगों ने देखा है बरसात के दिनों में जब बारिश होती है, क्लास में अटेंडेंस कम होता है, तो बच्चे कागज फाड़ के एरोप्लेन का वो बना करके खिड़की के बाहर फेंकते हैं. ये बिल्कुल
बढ़िया वाला एक डिसिप्लिन है बच्चों के लिए, और एक यहाँ ये फाइटिंग हो रही है, ये बुली लोग करते हैं क्लास में सर। Thank you, Rajesh sir. Now, Amit sir. Sir, this picture is full of discipline because see the discipline maintained by the students while the teacher is attending the class, and all are very attentive, and you know that full of active participation is there. And here also the children are taking interest in the curriculum delivered by the respective teachers, and they are participating. They are trying their efforts whether it is right or wrong. So this is also one of the prominent part of effective teaching. On the other hand, this is the maintenance of law. They are in the queues and they are formulating the rules and regulations and calmness of the school for the betterment of the school and the character. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So, sir, one chocolate for Rajesh sir, one chocolate for Amit sir. Now, sir, we are having lunch break. Yeah. After 10 minutes. No. Lunch break. Okay, sir and madam, please be on the ground. Now we are having lunch break for 10 minutes. Okay. So after lunch break, there will be photography session, just like yesterday. Then we will come to this. So, okay? Okay, thank you everyone. Everybody has to. Nobody is exempted from it. That, no, I am the principal, I am not there, or I am the librarian, I will not be there. No, it's not like that. Each one of us must be trained, and it should go on continuously because learning is a never-ending story. There is no end to learning. Okay, so now we will see the main theme is classroom, the ultimate learning space. Now, learning means what? Is it only the syllabus of the curriculum? No, something beyond that. Something beyond that. Lot many things we should know. So before we go into the classroom, let us try to see what we understand about your classroom or how much idea we have about our classrooms. It's very important that we should know what exactly is a classroom. What are the things that we should know? The basics of the classroom. Okay, so we will start with this short discussion. What we will learn today? Okay, what we will learn today within this thing. As classroom is the ultimate space for learning, that's what they say. It is the ultimate space for learning. So it is very important for any teacher to know the classroom. We all go to the classroom, we teach. I have taught for say 19 years until I am teaching. Although I am the principal, but I still love teaching because that is what we all are. Before anything else, we are teachers. After that, we are principals, vice principals, whatsoever. So we should know our classrooms. How to effectively manage the classroom, that's very important. I will only be able to teach properly in the classroom if I am able to manage the classroom. So I should know some certain things about classroom management. Okay. So to effectively manage the classroom, thus effective classroom management is the first and foremost goal to achieve. You should have a goal, and that is effective classroom management. How result-oriented classroom management you know and you apply and you go for it. That's very important. And we should also know the good practices in teaching learning inside and outside the classroom. So one very famous educationalist, Elizabeth Taylor, not that actress Elizabeth Taylor. There's another Elizabeth Taylor. She was, I think all of you have heard about the actress Elizabeth Taylor. Senior people must be knowing it, who played the role of Cleopatra and all. But another Elizabeth Taylor was there, who has written a book, Beyond the Classroom, where she has spoken length and breadth about classrooms and all. And teaching learning is not only limited to the four walls of the classroom. They are beyond the classroom. They can be under the tree, they can be under a shade, they can be on the playground, near the swimming pool, and so on and so forth. Okay. So we will see all those things, but before that we will see this questionnaire. A few questions are there. As per, let's answer a few questions. Let's see. This is your world. Okay, you will decide. There's nothing like correct answer or incorrect answer and all. Okay, just to know your classroom. Okay, as per CBSE guidelines, what is the normal size of a classroom? Can anybody tell? We all are teachers. We should know the normal size of the classroom. As per CBSE guidelines, what is the normal size of a classroom? Anybody knows? Yes, sir. Please, sir is there. Please tell us. Classroom, dimension of the classroom. 30 feet by 40 feet. Okay, anybody else has any other answer? 30 feet by 40 feet, that's what you are saying? Okay. Anybody else has any other answer? What is the exact dimension of a classroom? 24?
24 by 40. Okay, madam is saying 24 by 40. Any other answer we have? 2040. You are saying 2040. 2040. Okay, no issue. Tell us. Anybody else? Where is our Devopriyo sir? Sir, this training we received. What is the exact dimension of the classroom? Yes, you and me both were there. We were taking this training program. Actually, right now I can't. You cannot. Okay, no issue. No problem. Okay, sir. 30 by 30. Who is saying 30 by 30? 30 by 30. Okay. 30 by 30. Fine. Somebody is saying 30 by 30, 30 by 40. Okay, none of the answers are wrong. Yes, madam is saying something. Yes, ma'am. 24. Why you are hiding? Come in front if you want to tell us the answer. No. Okay. Right. 30 by 30. Okay, 30 by 30. Anybody else has any other answer? I'll give you the correct answer. All answers are correct. There's nothing wrong. It's like little bit here and there it will take. The exact dimension as per CBSE guidelines, as per the affiliation bylaws of CBSE, okay, the exact dimension of a classroom is 20 feet by 25 feet. Okay, 20 feet by 25 feet is the normal dimension of any classroom in a CBSE affiliated school. Okay, please remember this because as a teacher you should also know these basic things. Okay, I will request all of you visit the CBSE site. Okay, visit the academic site. There you will get the affiliation bylaws. And it is not only that the principal should only know the affiliation bylaws or vice principal, each and every teacher should know the affiliation bylaws of the school. There is nothing, many schools don't allow the teachers to see this, which is a very bad practice, which is a wrong practice. That world is your world, you can, anytime you can visit it and you can see it, because that will increase your knowledge about the school. When you are taking this profession, when you are taking this book, or rather the vocation to your heart, you should know about school, about the rules, regulations. Simply teaching is definitely important. It is the major part of it, but other associated information should also be there with us. So that is why it is very important to know the classroom. Students write their homework and classwork on what? School diary. Homework and classwork on school diary. Suppose homework and classwork assessment you give, that they will write on what? Copies. Copies. Okay, how many of you agree with copies? How many of you say notebook? You are saying notebook. Notebook. How many of you say copies? Copies, subject copies. Okay, subject copies. How many of you say copies and how many of you say notebooks? Notebook. Sir is saying notebook. Notebook. Okay, notebook. Actually, students don't write on copies. This is a common mistake that all of us make. They write on notebooks. Copy is something different. You make a Xerox copy of that. Yes, even Xerox is also a wrong word. You know, we make photocopies. We make original copies. We don't write on copies. We write on notebooks. We write on notebooks. Students write on. These are small things that needs to be taken very seriously. Then the quality of the teacher will be depicted. Students write on notebooks. We say, please take out your notebook. Please take out your English notebook, Hindi notebook. Okay. Copying means you are copying something. That's a different thing altogether. Okay. Subjective notebooks. Okay. More probably subjective notebooks. So we all write. This is important to know. As per NEP 2020, what should be the minimum age of a child to enter in the school? As per NEP 2020, 6. In the morning we discussed a little bit about it. 6. How many of you say 6? Sir is saying 3 years. Okay, sir is saying 3 years. Yes, madam over there. Yes, ma'am. 3 years. You agree with 3 years? As per NEP 2020, the entry level age of a child in the school is 3 years. You are saying? How many of you are saying 3 years? Raise your hand. 3.5. 3.5. 3. How many of you say 6 years? Let us see. 6 years. 6. Okay. Fine. Good. 5 plus. 5 plus. 6 plus. According to NEP 2020. I'll tell you, yes. According to NEP 2020 and as per the latest guidelines received from NCF 2022, the entry age
of a child in a CBSE school from now onwards, I mean from the next session onwards, will be 3 years. Bal Batika, what you call. Because this part was never taken, I showed you in that part also, that this part was never taken so seriously by CBSE. But now, they have taken it very, school will now start, any CBSE affiliated school will now start from the Bal Batika. And the entry age is 3 years. Obviously 6 months, this side, that side will always be there. We cannot exactly get all the child with 3 years and put, no, that cannot happen. That's a natural process, okay, it will be a little bit here and there. But please remember, if somebody asks you, you tell the entry level will be 3 years, because now we are having the foundation stage. Foundation stage, madam, Maushumi madam, no, I think, madam, your name is Maushumi, no? Madhumita madam, Madhumita, Madhumita is, my goodness. बाद में एक स्टोरी बताएंगे, अभी नहीं, सबके सामने नहीं बताएंगे। बोल जाएगा, इतना बदमाश आदमी है, हम पता चल जाएगा। सुना दे? सर के सामने सुना दे? मेरा जिंदगी का पहला गर्लफ्रेंड था मधुमिता। हम क्लास 9 में पढ़ते थे, हमने मधुमिता को बोला, मधुमिता हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो? क्या क्या तुम कर सकते हो मेरे लिए? हम सब कुछ कर सकते हो। तो मर सकोगे मेरे लिए? नहीं, मर तो नहीं सकते। मेरे लिए कितना सारा मरने के लिए रेडी है, तुम मर नहीं सकते। चलो जाओ, you are out. You are dismissed. Okay. And I still remember those words, Madhumita madam. So that's why whenever I meet somebody called Madhumita, I have a discussion about it. Anyway, chलिए, jokes apart. Okay. Please tell, whenever parents will ask you, whenever any school management people ask you that what is now the entry level age for a child in the school, you will say 3 years, because Bal Batika will start from 3 years, because that 5 years, Madhumita madam, that 5 years you are talking, it's not the age 5. 5 years will be the duration of study in the foundation stage, okay? जिसमें आपका होगा Bal Batika, जिसको हम नर्सरी भी कर सकते हैं, प्ले स्कूल, देन LKG, UKG 1 and 2, ये सारा जो कोर्स है ना, ये पूरा 5 साल में बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद वो चला जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज में, जो 3 साल का होगा, 1, 2, then 3, 4 and 5, फिर वो मिडिल में जाएगा 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12 एकदम सेकेंडरी लेवल में। ये नया सिस्टम स्टार्ट किया CBSE, क्योंकि अब 10+2 जो सिस्टम है वो अब एबॉलिश होने वाला है, अब आने वाला है 5+3+3+4, and the entry level is 3, obviously 6 months here and there can always be 3.5, it can also go. हाँ जी बोलिए। What is the, as per NEP, what should be the minimum age? Minimum age should be 3. 3. Minimum should be 3, nothing less than 3 will be taken into consideration. Okay, it can go above. Okay, 3.5, 4. 4 तक, कि 5 हो जाएगा तो फिर दूसरा क्लास में डालना पड़ेगा, फिर बाल बाटिका में नहीं आएगा। ये एकदम दिमाग में हम लोग को डाल देने पड़ेगा, it should be implemented on the this thing brain. Okay. अच्छा, what is the difference between assessment and assignment? हम लोग हर दम ये बात करते हैं, I'm giving assessments, I'm giving assignments. What is the difference? Amit sir will tell later. Oh, हाथ मत करेंगे ना, सही बात है। Yes, Amit sir is answering not. Sir is saying yes sir, please. Assessment is to analyze and assignment is the given task. ये तो सर हाई फाई थ्योरी का बात है। Assessment मतलब to evaluate, evaluation करना, measurement और assignment मतलब कोई task उसे। Assessment. Anybody else wants to say what sir has said? Yes ma'am, please. We do basically evaluation of students. And assignment means we are giving certain project work. By this way, a student are able to see their art and activities, or maybe present analytical thinking by this way. Wonderful. Often we make this mistake in the classrooms, you know, with assessment and assignment. Assessment means we evaluate. हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, करेक्शन करते हैं, जिसको और सीधा भाषा बोले कि कुछ भी वर्क जो हम देते हैं उसको हम करेक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं असेसमेंट। हम असेस करते हैं बच्चे कितना लाया, और असाइनमेंट इज द नॉर्मल होमवर्क। These are small technical words which sometimes makes us very confusing. Okay, so in order to know that, we should also know all this. Madam, what is your good name? Aparajita Singh. Sir, madam के लिए 5 star. Madam के लिए for the first time she has given an answer, and a beautiful answer. Often we make these mistakes. Okay, this is like a little bit of brainstorming should be done. Do your students read in a classroom or they study in a class? They study in. Why? They don't read. They read also. They read also.
read comes under study. You have given, अच्छा, oh, 3 years, sir, यहाँ पर sir बोले थे, 3 years. Give it to sir, yes sir. They study in a classroom or they read in a classroom? They study in a classroom. Okay. Actually, students study in a classroom. They can read a book, they can read a magazine, they can read a lesson, but they cannot read the book. No. Only they can, when they will become adults, they will be able to read the mind of their friends and colleagues and all. कभी बोलते हैं ना कि हम उनका माइंड पढ़ लेते हैं. अब पता नहीं लोग कैसे किसका माइंड पढ़ते हैं. हमने तो जिंदगी में कभी किसी का माइंड नहीं पढ़ पाया. Okay, but there is a saying, they can read the mind. Students actually study in the classrooms. Okay, often you will find in many schools, they ask this question, what class do you read in? It's a typical wrong question. What class do you study? Okay, what class do you study? They can read a book, they can read a newspaper, but they cannot read a classroom. They study in a classroom. होता है क्या ना, actually, you know, the school where I studied in Asansol, it's a very famous convent school of almost 100+ years. Patrick, you can see Mr. Patrick, he is also a student of the neighboring school, St. Vincent's. So ours are a very strict level, hi-fi, standardized convent schools where the brothers used to be there. You know, the Irish Christian brothers, they used to teach us. And their teaching was absolutely flawless. Often we make a mistake, you will find, this also I want to discuss because that is important, because that's the ultimate place of learning. Students often say, we say 3 into 3. In the mathematics class it is taught. 3 into 3. What is 3 into 3? It is 6. It's wrong. 3 into 3. 2 into 2. 4 into, I'm going to put it inside that. Okay. Be very logical. The critical thinking works over here. Okay. 2 multiplied by 3 multiplied by 3. These are small. Then the students also study the tables. 2 2s are 4. But what is the sound that comes out from our side? 2 2 jar, 3 3 jar, 4 4 jar, 5 5 jar. What is this? 3 3s means 3 3s. 3 3s are 9. 3 3s are 9. 3 2s are 6. That's what classroom teaching is. Actually, these are small things that we often overlook, but we should take these things very seriously once we are inside the classroom. Because whatever we will teach to our students, they will carry this thing. Many public schools, this problem is there. 2 2 jar, 3 3 jar, 4 4 jar. Ojar. Okay. Now you tell me. Now more questions are there. What are the major challenges faced by teachers in the classroom? Okay, whatever sir said in the morning, there is a discipline and all this thing. But as a teacher, if you are teaching for the say last 10 years or 15 years, what are the major challenges that you face? Okay, you have the freedom. You will ask time separately. I will ask. Sir is very serious. It's very serious. Sir, what are the challenges? One challenge you can face in the class. This stand up. अरे आप बताइए ना सर, आप तो क्लास में पढ़ाते, क्या चैलेंज आप फेस करते हैं? अरे बच्चे का मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है आपका क्लासरूम में, है? आप बताइए ना सर, आप नहीं बता सकिए. So many challenges I have faced as a teacher to maintain the discipline in the classroom. Discipline. Yes sir. सर, हम भी बहुत चैलेंज को फेस कर रहे हैं. मेरा क्लास में एक बच्चा है, वो मेरा क्लास में लिखता ही नहीं, कुछ नहीं लिखता. हम उसको बोले एक दिन, यू डोंट राइट, व्हाई डोंट राइट, लिखता ही नहीं है. तो हम उसको बोल्डली एक दिन बोले, तुम कुछ नहीं पढ़ता, नथिंग, यू डोंट स्टडी. बोलता है कुछ नहीं पढ़ता है तुम, नथिंग. तो बोला सर हम पढ़ते हैं. कहाँ पढ़ता तुम? मेरा क्लास में तो तुम नहीं पढ़ता है. नहीं सर हम पढ़ते हैं. तो कहाँ? ट्यूशन में पढ़ते हैं सर. हाँ, तो बोले, हम उसको बोले ट्यूशन में क्यों पढ़ता है? सर बहुत मारता है सर. हाँ, ट्यूशन सर बहुत मारता है, इसलिए वहाँ पढ़ते हैं. हम तो नहीं मारते, नहीं पढ़ते.
the challenge from my side. So how can I? Please give me. Sir, while we will go on with the program now. When you come to this particular part, I will give you the solution. Because right now, I have to ask the questions about the challenges. Your challenge, I am keeping it in my mind. While we will move on with the PPT, I will help you out. आप तो मानते नहीं हैं तो कैसे पढ़ेंगे? अरे क्या बात है? Wonderful. Yes, ma'am, please. Sir, in my class there are 2-3 students. If I ask them to read, they start crying. Major challenge of convincing the students to learn in the classroom. जैसे सर इसे मेरे क्लास में बच्चे पढ़ता है ये fact है. This is a fact. She is saying whenever I ask a child to read, he or she will start crying. It's a fact. It's a major challenge for us. How we will make them. Anybody else has any? Not many challenges we face. Yes, sir. I am Manish from the major problem is that after the students have diverged from their way that they have divert from their writing skills. If I am teaching English teacher, so I start derivation, they cannot write because in the corona period they are habited with the oral teaching. I is saying that another challenge that I face is, yes ma'am, coming to you, is that the students don't want to write. They have lost the art of writing because for 2 years they were not in school, they were not in classrooms. And yes, if they are not in the classrooms, how they? So this is why classroom is important. Yes ma'am, at the back wants to say something. Acha, you want to? Yes ma'am, please. Sir, I am Sanskrit teacher. So regarding Sanskrit subject, I face challenge that whenever I go to class, some of the students they say that I don't want to study. Then I asked why. Then they say that Sanskrit पढ़ के क्या करना है? 9-10 में तो पढ़ना ही नहीं है, आगे में इसका कोई use नहीं है. So how what I will say to them? How I will tell them to study? It's a big problem. Some of the subjects that we are teaching, it has been put into the mind of the children that these subjects are not required for your future life. So why should we teach? Why should we learn? These questions of इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे जैसे सर के बात की. First, I want to know the challenges that you face. It's a very important challenge that we face very often. Anybody else has any other challenge, any other problem that? Yes, sir. Sir, can you, sir? Yes. Communication. Communication. Yeah, and understanding the learning styles. Understanding the learning styles. That is also a major challenge. Sir, please. नमस्कार सर. चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे भी हैं कि अगर कोई पॉइजन है तो उसको अमृत कैसे बनाया जाए. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है. 50 के क्लास में अगर 45 पढ़ता है तो 5 ऐसा भी है जो हर हाल में नहीं पढ़ेगा. अब कितना बड़ा भी टीचर के उसको पढ़ाना संभव है, वो पढ़ेगा ही नहीं और दूसरों को भी बिगाड़ देगा. तो these things are very much disturbing. I face myself. कोशिश बहुत किया लेकिन कामयाब हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो पढ़ने ही देगा नहीं, वो पढ़ेगा भी नहीं और किसी को पढ़ने भी नहीं देगा. तो these children are just like poison, but still we are trying. Okay sir, thank you. Yeah. Thank you. Some children are there who are not at all interested to study. So how to bring them back into the forefront? Yes sir. I want to extend what Sir Amit said just. Communication problem. So actually what I really understood right now that we don't listen to understand, we listen to reply. That's the big deal. Thank you. Sir, one 5-star for sir. We don't listen to reply. We don't listen to understand. We listen to reply. Sir, a 5-star for sir. What is your good name, sir? Sudeep sir. Sudeep sir. So see, so many problems are there. Problems will be endless. If you have 40 children in your classroom, you will have 140 problems. But those problems need to be solved. And every problem has a solution. We should always try to find out a solution within a problem, not a problem within a solution. No, that should be our goal. So like all of you have said, now we will enter into effective classroom management techniques and we'll see how we can solve those problems. And any other problem you face? Problem of the principal? That is also a challenging work inside the classroom. Yes, कभी-कभी principal घुस जाता है.
और आके बैठ जाता. Now the students also enjoy and the teacher also enjoy. Yes, it happens. Or too much movement of the principal within the corridors of the school is also challenging. I was taking a training in 2017 in IIT Delhi, and there it was told that too much movement of the principal within the school premises is also disturbing. Too much movement of the principal within the school is also disturbing. So principals should also move, but not too much. Some finicky principals have a habit of always peeping through the windows. Kya ho raha nahi ho raha? Kya ho raha nahi ho raha? Always putting the teachers in stress. That is also challenging. Yes, it's a fact. Hey, but in standard schools, schools like Sidhu Kanu, schools like Sacred Heart, schools like Millennium, schools like Western School, schools like Ashram School, I don't think principal moves too much. Schools like Jharkhand Public School, where the principal doesn't move too much. Once in the morning he will move, once after the recess maybe he will move around and to see that everything is perfect or not. We should not be the disturbing elements of the school also. But कुछ principal होते हैं, बड़ा खड़ूस principal होते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं teacher. No, this should not be there. And some principals are very, what you call khadus principal. They will run behind the teachers like anything. That is also disturbing, that is also challenging. Should not be there. Okay. Movement should be there. Principals should move. Principals should keep an eye on what is happening around the school. But that is also in such a way that it doesn't harm the day-to-day progress of the school, and the teacher should not be under the surveillance always. Otherwise, we will not be able to get the best out of the teacher. So one of the aspects of principal's training is this also. Okay, let's see now. So work objectives are what? Let us see. Today we will know the definition of classroom management. Quickly we will see this. Okay, after that we will see to learn practical techniques of managing learners positively. वो जो सर बोल रहे थे ना, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है. सर क्या करे? मैडम बोल रही थी संस्कृत पढ़ना ही नहीं चाहता, वो हमको पढ़ के. We will see to that also. Okay, to learn the practical techniques of managing learners positively, how we can manage them positively, and to know some examples of disruptive behaviors and how to deal with them, which sir also did in the morning, but it is a part of classroom management, so we should know, because classroom is the ultimate site, ultimate place of learning. Okay, let's see. What is effective classroom management and why it is necessary? Okay, can somebody read? Madam in the front, madam, can you read? Can you read that? Effective classroom management is necessary? Please, all of you just repeat. This is a very good answer. Effective classroom management. Effective classroom management is necessary for all teachers and facilitators. Classroom management involves all aspects of what is going on in the classroom while a lesson is being taught. Not only does class management include how the teacher delivers the curriculum, but also how the students interact with the teacher and with others in the classroom, and extends to the classroom environment in which students learn as well. Okay, thank you so much for reading. So, this is what is effective classroom management. Okay, it is necessary for all teachers and facilitators of education. Nowadays, we don't call them as teachers, we call them as we are known as facilitators of education. You are providing facilities to the students. Okay, so classroom management involves all aspects of what is going on in the classroom while the lesson is being taught. The lesson is being taught, discussions are being made, children's action interactions are also taken into consideration. What are they saying? What are they saying? What they are not saying? What they want to say but cannot say? So lot many things are happening within the classroom. Okay. Not only does class management include how the teacher delivers the curriculum, but also how the students interact with the teacher and others in the classroom, and extends the classroom environment in which students learn well. So how they make the classroom environment, how the teacher is teaching, how they are interacting with the teachers, how the students are interacting with the other students, the peers, what you say, the friends and all. So this is what is effective classroom management all about. Okay, where result-oriented things are happening. Right. Now you can see this is a classroom, a typical classroom, where the children have raised their hands and all these things that we do. Okay. Definition. That was the meaning. Now, if you go for the
academic definition, like we have scientific definition, we have academic definition. Classroom management refers to a wide variety of skills and techniques that teachers use to keep students organized, orderly, orderly, focused, attentive, on task, and academically productive during a class. Academically productive means whatever we teach them, they keep that in their mind and they retain it for the rest of their life. There is a saying that good teaching leads to better learning, and better learning leads to best retaining. Or what will you do? Just 5 to 6 minutes you take. If you are writing that feedback form, either you first write it, because both the things cannot go simultaneously. You write it down. In the meantime, I will show you a video, if we can, so that you can finish it. Because now the form has come, and I know human psychology is like that. First you will fill up the form, then only you will listen. So it is better you fill it up and you listen. In the meantime, you will see a video if you can see, because that is also important. I mean, for the time, because fill it up, sir. 5 to 6 minutes, because otherwise things will not go. क्या बोले मैम? हम तो पहचान रहे हैं। हाँ सर, आप खेल आए थे स्पोर्ट्स में भी आए थे, रेगुलर क्लास में भी आए। हम वॉलीबॉल में खेलते थे सर। कहाँ? स्कूल में। अभी आप आओगे स्कूल में कभी तो देखोगे यहाँ पे 6 साल क्लब्स हैं। ठीक है, फोटोग्राफी, लिटरेचर, आर्ट, इसमें सारे एक स्टूडेंट है जो दुर्गा में है, फोटोग्राफी वो भी अपना एक शिवम are very unique. Men's brains are made up of little boxes, and we have a box for everything. Men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes, and we have a box for everything. We've got a box for the car, we've got a box for the money, we've got a box for the job, we've got a box for you, we've got a box for the kids, we've got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is, the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother.
that superhighway. And it's all driven by energy that we call emotion. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. Now they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still brain. You know, they connected all the wires and stuff like that, watch their brain activity and all of a sudden, I think he's dead! Huh? Women can't do it! They can't do it, their minds never stop. And they don't understand the nothing box! And it drives them crazy! Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing! It's just a satire. Gender discrimination or something like this. Okay, I hope I know the feedback from you. Now we'll move forward because both things cannot go simultaneously. Okay, now we'll go back to the professor. We'll change this. Okay, Surajit sir, I want to add a little bit of information regarding this. Yes, please. So, please. Do it, sir. आप लोगों को पता है कि एक आदमी में बात करने का कैपेसिटी कितना है पूरे दिन भर में? एक मेल 3 से 4,000. वेरी गुड, सही है सर. और फीमेल में Double. 6 to 7,000. Exactly. Sriman sir once again is correct. एक चॉकलेट श्रीमंत सर के लिए. So एक मैन वो 4 से 5,000 बात कर सकता है एक दिन में, और एक वुमन जो है वो 6 से 7,000 बात कर सकती है एक दिन में. अब बात ये है कि जो लोग काम करते हैं, जो वर्किंग वुमेन है, उन लोगों का फिर भी ठीक है, लेकिन जो हाउसवाइफ्स होते हैं वो अपने बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पति भी काम पे चले जाते हैं, कोई मिलता नहीं है, उनको तो उनका 6 से 7,000 वर्ड पूरा करना है, और पति जो है 3 से 4,000 बार जब काम करने जाते हैं बाहर, वो ऑलरेडी खर्च करके आ जाते हैं. So
अभी जब पति आते हैं काम करने के बाद घर, तो वो चाहते हैं कि आई विल रिमेन साइलेंट, पर पत्नी जी का बात पूरा नहीं होता है, इसलिए वो बोलते जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये काफी जिगजैग है, तो इसलिए पत्नी जी हर एक बात को मिला जुला के बोलते हैं और वो कभी कुछ भूलती नहीं है। आज से 10 साल पहले आपको एक गहना नहीं मिला था, वो आज आपको थोड़ा सा नमक कम दिए हैं खाना में, उसको अगर बोलने जाइएगा तो वो आपको 10 साल पहले की वो घटना सुनाएगी, क्योंकि she remembers everything. Okay, thank you very much. Okay, so we'll move forward with the definition of classroom. Thank you, sir. Let's again. It is important that we should know the human nature, human behavior, and sometimes they definitely turn out to be very, very good for our mental health also. Okay. Now this is an ongoing process of managing students. Now classroom management, every day is a new managing day. ये हम लोग को दिमाग में रखने पड़ेगा. Every day in the classroom is a different day. You always encounter different situations, different things in the classroom. It is an ongoing process of managing students' behavior. It is a multi-factor process. एक या दो फैक्टर से बात नहीं चलता है और वो हर दिन कुछ नया बन के ही आता है. Okay. What are the benefits of managing a classroom well? If you are able to manage a classroom well, what are the benefits you will get? Okay, let's see what are the benefits. Learners learn best in a safe and secure environment. That's why we make so tough buildings. First thing is the safety and security. Parents today now look for that school where there is more safety and security, where the teachers are dependable. Okay, there are schools and there are schools. But in our time, okay, it was never taken into consideration that I'll put a child in a good school where there is a good building and all the facilities. But nowadays, because the families have become small, the nuclear families, only one child, maximum 2 child. So all parents prefer that they should put their children in such a school where enough safety and security is available, because that is the prime concern. Okay, so learners learn best in a safe and that's why we are making our schools very safe and very secure. Why we are installing CCTV cameras, time to time we are talking to teachers, telling them about POSCO and POS and this, and so that they must not do anything for which the child will feel insecure. Because once if the child feels insecure, the child will never come back to the classroom again. Why dropout rate? One of the reasons for dropout rate is also because of insincere class teachers or subject teachers and schools rooms which are not very much secure. So first thing is that it should be a safe place to learn. Then only learners will learn best. What about the next point? Let us see. It saves time and effort for the teacher. Once the student gets a secured classroom, then the teacher don't have to shout too much. No, sometimes we say, no, the children don't listen to us. Actually, the environment needs to be created in such a way, no? And the very personality of the teacher, the very personality of the teacher plays a very vital role in shaping up our students' character first, I will say. Learning character. A student, small child, what character you learn? His or her learning character. So that they will love coming to the classrooms every day. That's why it is very important that we teachers develop a very strong mentality with a very strong personality. I still remember my KE class madam was there, Mrs. Mac Reddy. What a personality she had. We all loved to be in. She used to hit us, used to beat us, but we still used to love to be in her class because that feeling of motherliness was there very much within her. So that's important. So it saves time. If we have a safe environment, we teachers will be able to teach properly. It is easier to engage students and get them on task. So learners, so what are the benefits of managing the classroom well? First of all, learners will learn safe if the classroom is safe. Second, your work, it will take some less time and it becomes easier to engage the students and get them on task if you are managing the classroom properly. Many teachers complain, sir, देखिए बच्चे बात सुनते नहीं हैं, ये नहीं करते. Reason क्या है? Teacher खुद is the problem people. That's all. Convert yourself. Yes, the teacher himself or herself is a problematic person. That's why he or she cannot control the classroom. एक हमारा स्कूल में था एक साहू जी, संतोष साहू. Every day सर बच्चे ऐसा कर देते हैं, बच्चे वैसे. तो and I saw he used to joke around with the students and the students will take him lightly, ना?
आप अगर बच्चे को अजीब अजीब किस्म का बात बोलिएगा, अपने खुद अजीब किस्म का आवाज निकालिएगा मुंह से, तो बच्चे आपको तो मजाक का साउंड बना लेंगे। वो सर नया मोटरसाइकिल खरीद के लाए साहू जी, सो ए बाबू हाथ नहीं था, द स्मॉल चिल्ड्रन ना दे विल हैव अ क्यूरियोसिटी, सर नया लिए हैं सर, नया खरीदते क्या होता है, ए बाबू हाथ मत लगा मेरे। एक लड़का बोला सर किस्ती में लिए हैं क्या? See the IQ level of the student to what है कि संतोष सर डायरेक्ट पेमेंट करके खरीद ही नहीं सकते, वो किस्ती में लेंगे। Now this is no, I was standing over there, मैं वो बात को सुना, I heard those words, and I started to see the thinking capacity of the students. So that is a very strong personality of the teacher. That बोला सर किस्ती में लिए हैं क्या? ओपन लेना डायरेक्ट। सोचिए ना किस्ती में लिए हैं क्या? तो अजीब अजीब किस्म के घटना। एक और घटना बता दें, क्यों क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, क्यों टीचर्स को थोड़ा अलग होना चाहिए पर्सनली। स्कूल में एक बार, ऑल ऑफ यू कैन हियर मी नो, स्कूल में हमारा स्कूल में होली मदर्स में जब हम वाइस प्रिंसिपल थे वहाँ पे, वो मैडम चली गई, शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। पेरेंट्स टीचर्स को पेरेंट्स नाइट होता है हम लोग का सबका, ईयर एंड में एक बार कॉन्सर्ट होता है, कोई स्कूल कॉन्सर्ट बोलते हैं, कोई पेरेंट्स नाइट होता है, कोई एनुअल फंक्शन होता है, तो उसका प्रैक्टिस हो रहा था। तो एक टीचर थे, एक सर, वो एक नाटक करा रहे थे, तो नाटक करा, तो उन्होंने नाटक में था कि कुछ गरीब आदमी होगा, कुछ ये होगा, और हमारे एक घोसाल सर थे, वो अजीब किस्म का बात करते थे, मतलब वेरी फनी टाइप ऑफ पर्सन। और तो एक सर वो सब सिलेक्ट कर रहे बच्चे को ना, चूजिंग करके इसको क्या रोल दिया जाए, तो वो आए, मैडम उनको, हमारा प्रिंसिपल मैडम, उस वक्त का प्रिंसिपल मैडम उनको घोसाल सर को चार्ट देते कि यू घोसाल, यू गो एंड सी एवरीवेयर हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, वेदर द वर्क इज गोइंग द प्रॉपर वे और नॉट। सो ही वाज लाइक मूविंग, हर जगह जा रहे थे, देख रहे थे। तो हाँ सर आप क्या नाटक कर रहे हैं, कोई एक संजय झा सर थे, आप क्या नहीं सर, हम एक नाटक कर रहे हैं जिसमें कुछ गरीब आदमी रह गए। अच्छा सिलेक्शन कर लिए, वहां से सिलेक्शन तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो बोला ठीक है। तो 3-4 बॉयज वर स्टैंडिंग ओवर देयर, सर बोला सबको नहीं सर 3-4 और मिल रहे हैं, तो कैसा क्या चाहिए, कैरेक्टर क्या है, सब एक गरीब आदमी, मुझे ये तीनों को लीजिएगा, गरीब गरीब देखने में है। सोचिए सिचुएशन, डायरेक्ट ऐसा बोल दे, ये तीनों को लीजिएगा, ये लोग गरीब गरीब देखने में है, तो सोचा बात हो गया। लड़का लोग बोलता सर ऐसा क्या आप बोल रहे हैं, ऐसा तुमने तो गरीब गरीब देखने में है। And you know sir, I remember next day क्या होने वाला है स्कूल में, I was well prepared. Yeah, parents आ गए, parents आते हैं, same sir. Parents used to respect me a lot. I was a vice principal. I lived with them. I talked with them. I breathed with them. Everything. घोसाल सर ये कैसा हो रहा है, घोसाल सर इतना दिन पुराने टीचर है, ऐसा बोल दिए हैं। अच्छा भले हमारा बच्चा, हम गरीब भले हैं, लेकिन गरीब गरीब देखने में ऐसा कहीं कोई बोलता है क्या? क्या बोला, लंगड़ा को आप लंगड़ा बोलिएगा, अंधा को अंधा बोलिएगा। Understood that situation? बैठिए बैठिए, अरे गुस्सा मत, पानी पीजिए पहले। The first effective thing that you should do whenever parents get angry, tell them to sit and give them a glass of water. अरे पानी पीजिए, अरे चाय लो, चाय पी लो। नहीं साहब चाय नहीं पिएंगे, आप पहले फैसला कीजिए, ये सब क्या बात है? अरे हम आपको क्या है गुस्सा, हम जानते थे। सुनिए बात ऐसा नहीं है, वो बच्चे थोड़ा गलत सुना है। क्या गलत सुना है सर, बोलो कैसे? नहीं एक्चुअली सर का कहना ये था कि देखिए आप जो नाटक करें, बच्चे जो गरीब बच्चे आप बनाइएगा, उसको गरीब आदमी, वो गरीब दिखना चाहिए, नहीं पूरा गरीब जैसा दिखता है, नहीं दिखता नहीं है, दिखना चाहिए नाटक में। अभी आप ही बोलिए, हम अगर एक गरीब आदमी का कैरेक्टर करेंगे, उसको सूट बूट पहना देंगे तो कैसे? नहीं सर ये तो सही बात है, तो सही नहीं लगेगा। नहीं सर लेकिन सर ये सब मतलब देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, उल्टा पुल्टा बात नहीं, बात सर ऐसा बोले थे कि गरीब जैसा दिखना चाहिए ना, गरीब जैसा दिखता है। But very offensive words were there. I myself got it. So this is where the classroom management, the effective teaching management, the personality of the teacher plays a very vital role. ये जिंदगी का जो मतलब examples है, हम लोग life examples होता है, इसके लिए किताब का जरूरत नहीं पड़ता। तो always be very careful whenever you are saying something to the students. आज बच्चे बहुत sensitive हो गए, किसी को अगर बोलिएगा तुम गरीब गरीब दिखता है, इतना गुस्सा आएगा ना। So it's like that. Okay, we'll move forward a little bit. हाँ सर प्लीज नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट जो रहता है सर क्लास में जो पढ़ता है सर, तो स्कूल ड्रॉप आउट करता है, फिर चेंज होता है, स्कूल फिर चेंज होता है, ऐसे चेंज होते रहता है। और टीचर जो है शिक्षा देने के लिए उसको काफ़ी टाइम लग जाता है जानने के लिए सर।
तो उसको कैसे रोका जाए उस ड्रॉप आउट को सर, और टीचर का क्या रोल रहेगा सर, और ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहेगा सर? देखिए सर, तो थोड़ा सा हम टाइम ले लेंगे यहाँ पर। सर के जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। एनईपी 2020 का जो रिपोर्ट है, जो हमारे पास एनईपी 20 हमारे बुक लाना भूल गए, बट आई विल ट्राई टू शो इट। वहाँ पर दिखाया गया कि हमारा सब स्कूल, हमारा जितना भी स्कूल चल रहे थे, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, बट मोस्टली ऑन द गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में तो थोड़ा कम होता है। अप टू क्लास 1 में 100% एडमिशन होता है। बच्चे क्लास 5 तक पढ़ते हैं, 5 से ड्रॉप आउट रेट स्टार्ट हो जाता है। और ये स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, बहुत अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है कि क्लास 5 से ड्रॉप आउट रेट स्टार्ट होता है, और क्लास 5 में लास्ट 2 ईयर का ड्रॉप आउट रेट है 0.96%। मींस ऑलमोस्ट फॉर every 10 student 1 student has left it. It is like that. By that time वो जब 7-8 में जाता है, it comes around I think 26% or something. वो जब क्लास 11-12 में जाता है तो वो 59-60% ड्रॉप आउट रेट होता है। Why that drop out rate is there? That is why CBSE is giving more emphasis on the foundation stage. Drop out इसलिए होता है कि बच्चे तो एडमिशन ले लिया, लेकिन ये जो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं होता है, बच्चे को टीचर का सही ढंग का पढ़ाई नहीं करवाया जाता है, इसमें स्कूल मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत रिस्पांसिबल है, टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज रिस्पांसिबल। बिकॉज़ इफ द चाइल्ड इज नॉट गेटिंग कंफर्टेबल इन क्लास 5, द चाइल्ड विल नॉट स्टडी। व्हाई द चाइल्ड, वो क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि उसका फाउंडेशन स्टेज में सही ढंग से पढ़ाई हुआ ही नहीं, उसीलिए वो छोड़ के चले जाते हैं, ये स्कूल छोड़ के, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, समझ में नहीं आता है। नाउ हियर द रोल ऑफ द टीचर कम्स। और यहाँ पर आप चाहे कुछ भी लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए, कुछ लॉजिक हम नहीं सुनेंगे, हम एक ही लॉजिक सुनेंगे, सर हम दिल और दिमाग देके बच्चे को पढ़ाएंगे, तभी जाके आपके बच्चे बन पाएगा। नहीं तो आप हजारों कोशिश कीजिए, हजारों रूल रेगुलेशन, ये वो फलाना ढक लगाइए, आपके बच्चे नहीं सीखेगा। आपको बच्चे के तरफ आने पड़ेगा। बच्चा अगर 2 स्टेप आता है, आपको 14 स्टेप आगे जाने पड़ेगा, उसको लेके बैठने पड़ेगा, आपको सब कुछ देने पड़ेगा, तब जाके आपका बच्चा सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। यहाँ पर हमें 120% सैक्रिफाइस करने पड़ेगा। इस बात जब हो रहा था, एक छोटा सा और स्टोरी बता देते। हम रांची में एक स्कूल में ट्रेनिंग देने गए थे। 12 बजे जब ट्रेनिंग का थोड़ा सा ब्रेक हुआ, हम देखा एक स्टेयरकेस में एक मैडम एक बच्ची को कुछ समझा रही थी। ओके, और बच्चा इधर कभी जा रहा, उधर कभी जा रहा, उधर चला जा रहा, इधर चला जा रहा, हाँ, और उनको फिर बुला के ला रहा, यू से दिस आई विल गिव यू दिस, यू से दिस, ऐसा हो रहा। जब 4 बजे ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, तब भी हम देखा वो मैडम वो बच्चे को लेके वहां बैठा हुआ है, और हमसे रहा नहीं कि हम डायरेक्ट उनसे जाके उनके पास जाके पूछे कि मैडम फ्रॉम आफ्टरनून आई एम सीइंग यू डूइंग दिस, ये क्या हो रहा था, आप क्या कर रहे थे? बोला सर विश्वास नहीं कीजिए, हमारा क्लास में 40 बच्चा है, 39 बच्चे को हम कुछ चीज 100% ऑलमोस्ट सिखला दे, इसको हम नहीं सिखला पा रहे थे, ये किसी ना किसी तरीके से नहीं सिख रहा था। क्लासरूम में हम टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमको और 39 बच्चे को दिखाना है। उसीलिए हमने ये तैयार किया कि आफ्टर क्लास आवर्स हम इसको लेके बैठ, इसका पेरेंट्स से हम बात किए, हम आफ्टर क्लास आवर्स इसको लेके बैठेंगे, हमारा तरफ से जितना कोशिश है, जितना इमोशंस है, दिस दैट देके, क्योंकि इसको वो 10 वर्ड्स हमको सिखाना है, उसको तैयार करना है। हम तुमको देखो मैडम, अगर हम हमसे उम्र में छोटी नहीं होती तो मैं आपका पैर छू के प्रणाम करता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एजुकेशन। तो ये चीज तैयार होना चाहिए सर हम सब के अंदर, तब जाके बच्चे नहीं स्कूल छोड़ेंगे, और वो आपको मतलब क्या बोलोगे सर, सुबह बोल रहे थे ना कि एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है ना रिस्पेक्ट का, वो पार होके चला जाएगा। हमें सर 120%, 130%, जितना भी परसेंटेज आप लगा ले वो दीजिए, बच्चे आपका बनेगा, आपके बात सुनेगा, आप पढ़ेगा, स्कूल बनेगा, फलेगा, फूलेगा। मतलब ये फैक्ट है सर, और ये होता है, और आप लोग कर रहे हैं। अगर नहीं करते थे तो फिर आप इतना दिन प्रोफेशन में नहीं करते। How many years sir you went to profession? This is 2 years. अगर सर दिल दे के नहीं पढ़ते, 2 years भी नहीं रह पाते, 7 दिन में उनका छुट्टी हो जाए। तो क्लासरूम मैनेजमेंट वो होता है। हम जितना भी बड़े बड़े बातें बोले, वो बड़े बड़े लोग, हम जब तक यहाँ से दिल से नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं बना पाएंगे, तो देना ही पड़ेगा। हम हमारा टाइम में सुबह 5 बजे दिन से उठते थे और स्कूल जाते थे, और रात को 10 बजे वापस आते थे। मैं नहीं करता, सारे किए हैं, तभी जाके हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, जिसके लिए दे पा रहे हैं, क्लासरूम बन पा रहे हैं, बच्चे आते हैं हमारे स्कूल में। Good teaching will always lead to better learning, and better learning will always lead to the best this thing what you call retaining in the place. बाकी सारे चीज काम नहीं करता, बस ये चीज काम कर रहे हैं। This one, once you have this one,
Your passion and compassion will only work to make the school grow and rise. इसके आगे और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। सर आप बोल रहे थे ना कि बच्चा बोलता है हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, ये भी एक जवाब है सर। आप सर बोल रहे थे ना कि बच्चा बोलता है हम पढ़ेंगे ही नहीं। सर हम आपको गारंटी देके बोलते हैं, ये मेरा दावा है आपके साथ, वो जो बच्चा आपको बोलता है हम नहीं पढ़ेंगे, उसको 7 दिन अपना साथ रखिए, 7 days अपने साथ रखिए, आप कोशिश कीजिए, अपने पास रखिए, उसके साथ बात कीजिए, उसको पूछिए बेटा क्यों तुमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे नॉर्मली पूछिए, घूमिए फिरिए उसके साथ और देखिए 8वां दिन से वो पढ़ना स्टार्ट करेगा। मैडम संस्कृत मैडम, somebody was saying, talk with the student, tell the student, not because not the value of Sanskrit. He says no that after class 10 I don't need it. Okay fine, you don't need to study Sanskrit after class 10, after class 8. But tell him, you have to dig deep into it. You have to tell the student why Sanskrit is used in our school. Why up to class 8 it is used. What benefit you will get out of this Sanskrit learning. Okay, पढ़ाई लिखाई सिर्फ बेटा नंबर पाने के लिए नहीं होता है, हमारे अंदर का जो इंसान है उसको जागृत करने के लिए, हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है उसको तैयार करने के लिए, वो संस्कृत आप सीख के रखिएगा। अगर 5 साल बाद वो संस्कृत आप यूज कीजिए, लोग आपको भी एक विद्वान कहकर बोलेगा। आप हमको विद्वान बनाना चाहते हैं, आप हमको कोई नंबर वाले एक रोबोट नहीं बनाना चाहते। करके देखिए, अगर नहीं रिजल्ट आया तो मैडम आप जो बोलिएगा सही कीजिएगा। मैंने बॉक्स में मैडम सर क्या जरूरत है हिस्ट्री पढ़ने का, क्या जरूरत है? आई एम अ साइंस मैन, आई टोल्ड यू हिस्ट्री अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आप अपने आप को नहीं जान पाइएगा कभी। सोशल साइंस अगर आप नहीं पढ़ अपने आप को नहीं जान पाइएगा। तो दिस इज द फैक्ट। नो ये हम थोड़ा इमोशन हो जाता है ये सब बिकॉज़ आई लव टीचिंग लैंग्वेज एंड लाइक ऑल ऑफ यू, आप लोग जैसे प्यार करते हैं हम भी। यू नो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय स्कूल टीचर्स, हम ऐसे ऐसे टीचर्स देख, हमारे एक टीचर थे ब्रदर ह्यूज, आयरलैंड से आए थे, गुजर गए अभी। आप विश्वास नहीं कीजिएगा वो ब्रदर ह्यूज का जो अजीब किस्म का पढ़ाने का, मतलब वो कभी कभी अपने आप को ना कैरेक्टर को ड्रेस पहन के कैरेक्टर मेकअप लेके रात भर, वो गोरा सफेद आदमी आयरलैंड से आए थे, अपने आप को काला आदमी बना के लाके पेश करता था बिकॉज़ ही वांटेड टू शो दैट कैरेक्टर हाउ इट लुक्स। ये डेडिकेशन के बिना नहीं हो सकता है। एक एक बच्चे का पेपर करेक्शन करते थे, नेगेटिव में हम लोग को नंबर देते थे। इफ यू हैव नॉट कट द टी प्रॉपर्ली -5, इफ यू हैव नॉट पुट द डॉट ऑफ द आई ऑन द राइट पोजीशन -7, नेगेटिव में नंबर आते थे। बहुत गुस्सा आता था उस वक्त, ये क्या सर ऐसा करते हैं, ब्रदर ह्यूज ऐसा करता है, कहीं इनको ये कहीं नहीं चले जाते स्कूल से। आज समझ में आता अगर ब्रदर ह्यूज नहीं होते तो हम आपके सामने खड़े होकर बात नहीं करते। हमारा और एक टीचर है जिसको आज तक हम फॉलो करते हैं, आई कॉपी, हम फोटो दिखाएंगे उनका, ब्रदर पिंटो, गोवा से आए थे, गोवानीज मैन, अभी बूढ़े हो गए लेकिन स्टिल ही हैज द सेम चार्म है ना। मतलब डेडिकेशन क्या बोलता है ना बच्चे को, बच्चे क्यों नहीं सीखेगा, दैट वाज देयर क्वेश्चन, व्हाई ही विल नॉट। सब कुछ दाव पे डाल देते। अगर आप हम ब्रदर पिंटो को बोलते कि सर एट 5 o'clock we will come, we will run YouTube, he used to come at 5 o'clock in the field, वो हमारे साथ दौड़ते थे, कोई ट्रैक सूट पहन के he used to run with us because he felt that if he runs with the children will feel happy, that happy children will study in the classroom। वाह, बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा चीज देने पड़ता है, तब जब हम शिक्षक हम सॉरी सर ना ओके थोड़ा सा सॉरी फॉर बीइंग टू मच इमोशनल बट यू नो लाइफ इज लाइक दैट। ओके, techniques of achieving good class management, what are the techniques? Okay, these are some copybook techniques but technique तो इधर से ही आता है। What are the techniques? Let us see one by one. Body language. First is your body language. Sir also told in the morning I think, if your body language has some sort of negativeness, आपके बच्चे जिंदगी में नहीं पढ़ेगा, वो आपको वैल्यू ही नहीं देगा। आपको लेके बस वो नाम बनाने जाएगा। हमारा वो होली मदर्स डे टीचर थे, बच्चे उनको बोलते थे तातिया बिच्चू। So they are very intelligent. Okay, they will make it in that way. So you have to give it body language. Setting rules. Some rules and regulations you should make, otherwise the school will not be managed. Offer praise and incentives. What sir has discussed. Okay. Yes, if children are doing something good, please pat their back. Appreciate. Tell them, son, you have done very good today. You deserve this, you deserve that. They really play a very vital role in the classroom. Good lesson plan and those few minutes left. Good lesson plan. Every day planning is necessary. Without plan, we simply cannot move forward. No matter
For how many years you are teaching in the school, how much experience you have, how many great students you have, they have passed out through you, but still you need to make a plan. Tomorrow is a holiday or you have school? Holiday. When Tuesday you are going back to school? Tomorrow, acha, you have school. Okay, some schools are giving holidays, some are not giving holidays. I'll not enter into that controversy. Okay, मेरा co-principal साथ में है, उधर मेरा sister साथ में है, बोलेगा sir, you are becoming first year. So let's anyway. Tuesday, let's say Tuesday जब आप school जाइएगा, definitely you will go with the plan. You have already made the lesson plan. An effective lesson plan always saves time. And those last few minutes we talk about, no, those last after, see, a child will be attentive in the classroom for 25 minutes. That's the human nature also. In a class of 40 minutes, 25, maximum 30 minutes. Nowadays children, they say that they have developed that tendency that they can. But those few minutes, the last few minutes, they are very, very crucial for any teacher. Whether you review the chapter, whether you recapitulate the chapter, or you add some sort of moral values related to the chapter, this is very important. Because those last few lines will make the child remember the things that you have taught forever. Okay, after that what we have? Control class energy. Teachers should not be sitting in the classroom. जो टीचर चेयर में बैठ गया और बैठ के बच्चे को पढ़ा रहे, हाँ बच्चे बैठ जाओ, बच्चे होते हैं दिल के सच्चे, चलो हम सो रहे हैं तुम लोग पढ़ो, जब घंटी बजे, जिंदगी में नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए. एनर्जेटिक हर द मूवमेंट कीजिए एकदम. Proudly I am telling you, again you will say sir is talking too much, but ये मेरा साथ होता है तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा. Very proudly I can tell you, active teaching में 15 to 16 years में active teaching किया. उसके बाद my teaching was little less because I was more involved with the this thing administration, but still I go on teaching, I teach. मैंने जो 15 साल as a teacher till my PGT days, for not a single day I sat on the classroom and taught. I was always moving. आज भी देखते हम नहीं कर पाते, हम नहीं बैठ पा सकेंगे, हमारा बड़ी पिकुलियर टाइप का bad habit है. Yes, good. Don't sit in the classroom. The more you move in the classroom, more your students will like you. ऐसे teachers role model नहीं बनते हैं ना, हम भी कुछ देते हैं. उसीलिए everybody's role model is, ऐसे सारे बोल देते हैं ना, my teacher. Yes, we all. अभी हम भी बोला ना, मेरा role model वही उन लोग. I still copy Brother Pinto and I still teach and talk the way he used to talk. Okay. Frontal teaching and X group dynamics. Frontal teaching, face to face teach कीजिए, back में जाके teach कीजिए. It is said that the class is more interesting at the back than the class which is interesting in the front. You know, what is the special? We have given a term called backbenchers. It's a very vague term. Backbenchers, they all are benchers. सभी classroom. But what's the speciality with the people who are sitting at the back compared to the people who are sitting in the front? Extreme mind. In a more simple way, sir, okay, this is a little bit hi-fi words you are using, extreme mind. In a very simple way, can you tell us, can you elaborate? Rudosi madam is sitting in the front, no ma'am? Rudosi ma'am, how difficult you are finding to turn this side? It's difficult, no ma'am? Yes. You are finding it difficult, no? This part is a little bit aching, you try it this way. Yes. Are you getting that same feeling? If Rudosi madam wants to see the classroom, what she is saying, madam, if you want to see the world, you have to turn, no? And it is giving you pain, no? Little bit of pain over here and here. Okay, thank you, ma'am. What about you, sir? Are you getting? You can see the entire class. So, the best point with the backbenchers, I was a perpetual backbencher. जिंदगी में कभी हम front seat हमको मिला ही नहीं. Lifelong हमको last bench ही मिलता था. But by sitting at the back bench, I got the opportunity to see the entire class. Now, when we say about the entire class, you depict the meaning in which particular way you want to get that meaning. So, teaching should be frontal X. Okay, it should not be. We should not limit ourselves in the front benches. Go front, go at the back, come at the front, stay this side, stay that side. Then only the students will like you. Otherwise, students will, oh, sir, तो खाली जो cream boys है first bench पे बैठे, उन्हीं को समझा देते हैं. हम लोग को कुछ बचाते ही नहीं. क्या पढ़ेंगे उनके पास? Time waste करना. Come to the back. देखिए back में क्या मजा होता है. Sorry sir. सारा मजा वहीं होता है. Yes. Innovation वहाँ से आता है sir. All the best entrepreneurs of the nation are the backbenchers.
Huh? All effective minds, efficient minds, minds with tremendous rate of efficacy are from the backbenchers. They believe in themselves more. Yes, so don't miss the end of the classroom. Okay. Yes, sir, please. Time will go. Quickly we will finish it up. This is the last part of it, okay? So we'll finish it up. Because until and unless no, you don't get to that, वो feeling जब तक नहीं आता है ना, training के लिए मजा नहीं आता। क्या करें हम? Learner involvement in activities. Teacher का बड़ा problem है। तो जब शुरू करते हैं तो खत्म ही नहीं होना चाहिए। Learner involved in activities. Lot of activities. सिर्फ किताब से नहीं. Okay. Then we'll give for TSA, teacher-student rapport. Develop that rapport. Rapport means that closeness, that calling by name, feeling for the student. Sometimes even some teachers are there who also pay money from their pocket in order to make sure that the students get their books or their fees are paid or something. That is how you develop the rapport. That is important. Classroom setting, how you set the classroom, and change it time to time. Don't be very much partial with it. Positive classroom atmosphere. Teacher should always be positive. If teacher is always drooping and आज ये बीमारी है, कल ये है, परसों ब्लड शुगर हो रहा बाबू, ये हो रहा वो हो रहा तो नहीं चलेगा. So these are the things that you need to do in a classroom. Okay. After that we have body language and physical proximity, facial expressions, hand gestures. You always make a what you call a smiling face, a laughing face. Okay. Vary your voice and tone. कभी-कभी voice ऊंचा कीजिए, कभी-कभी नीचा कीजिए. No, that baritone should be there. Keep an eye contact and go into their space to give aid. Go to each and every child. Yes, better. These are the things we need to do. I cannot think other. Audible voice. We all teachers should have a teacher's voice. So then a teacher's voice should be that. It should be audible from the first page to the last page. Okay, so these are the facial expressions that they are showing. Body language, how you talk, how you discuss and the things. Right. Then we have setting rules and routines, what sir has also told. Teachers need to establish some class rules of discipline. These are for effective management. Power teaching classroom rules. Power teaching. What is this power teaching? Let us see. Follow directions quickly, very fast. Don't waste too much of time on this and that. Okay, raise your hand for permission to speak. Okay, tell the students that make these rules. Okay, raise your hand, then speak. Not all at a time. These are some of the things. Raise your hand for permission to leave your seat also. These things we have to teach us. If you want to leave, ma'am, this may go, this may come in. Okay, make smart choices. Smart goals we have. There's a training program called Smart Teachers Make Smart Schools. Is there with me? If you get time, we'll discuss about it some other time. Keep your dear teacher happy. Keep your dear teacher happy. So who is your dear teacher? You are the dear teacher of your student. Tell them keep your dear teacher happy, your classroom will be in a jovial way. Okay. Teachers set routines for collecting homework, distributing worksheets, checking attendance, etc. Time routine should be made, rules should be made, effective management. Our classroom is ultimate place of learning बन जाएगा. नहीं तो फिर वो बस बनते ही रहेगा सब. Maintain the students' dignity and self-esteem and encourage them to be responsible for their own behavior. Make them understand you are a gentleman, you are coming from a good family, you are coming from this, you are coming. Sometimes you have to emotionally blackmail also some of the students. वो सर बोल रहे थे ना कि कुछ बच्चा तो सुनना ही नहीं चाहता, पढ़ना ही नहीं चाहता. सर उनको emotionally blackmail कीजिए वो पढ़ लेगा. Emotionally कभी-कभी blackmail करता है. अभी time नहीं हो रहा 4 बजने जा रहा है. I will take another 10 minutes and we will finish it off. But इसमें एक छोटा सा बोलना चाहिए इसको कि ये घटना ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करके बच्चे को मतलब लाइन में लाया जाता है. एक हमारा स्कूल में बच्चा था देवेश कौशिक, थोड़ा सा मोटा था, बदमाश था, coming from a very good family. सर आप खड़े क्यों हैं? तो थोड़ा सा बदमाशी करता था, डिस्टर्ब हर चीज में डिस्टर्ब करता था. टीचर्स यूज्ड टू कंप्लेन टू मी, सर देखिए देवेश तो ऐसा करता है. हम ही पढ़ाते थे तभी भी थोड़ा बहुत करता था. एक दिन हम उसको बुलाए, तो देवेश जी बैठिए. देवेश जी बैठिए. सर जी का मतलब मतलब देवेश जी देखिए आप इतने अच्छे खानदान से आते हैं, तो आपके पिताजी का इतना नाम है खतरास बाजार में, लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं. हाँ सर. आपके दादाजी के नाम पे देखिए लाइब्रेरी है. फिर आप ऐसा कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, बोलिए.
And finally to add a little bit, I said, देवेश जी देखिए आप मेरे चाचा जैसे हैं, आप ऐसा कीजिएगा तो हाँ सर सही बात है। Then after नहीं सर चाचा नहीं है सर, चाचा नहीं है सर। So that was the punchline, you know, चाचा नहीं है। हेलो सुनिए, तो आप मेरे चाचा नहीं है ना? ये हम मानेंगे तो हाँ सर प्लीज सर चाचा मत बोलिए सर तो थोड़े हम है थोड़ा हमारा बल्कि है लेकिन सर तो कल से पढ़ाई लिखाई कीजिए नहीं तो आई विल कॉल यू देवेश अंकल इन द स्कूल एंड यू विल नॉट बिलीव दैट वर्क लाइक एनीथिंग एंड ही स्टार्टेड स्टडी और अच्छा रिजल्ट करके निकल गया अभी आर्मी में नौकरी करता है तो यू नो समटाइम यू इमोशनली ब्लैकमेल आपको ना सिचुएशन मतलब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड तैयार करना दैट विल ओनली कम विद एक्सपीरियंस एंड योर थिंकिंग अदरवाइज इट विल नॉट वर्क ओके then we have a little bit more discussion. Offer praise and give incentives. थोड़ा सा बच्चे के साथ इसको कीजिए. देखिए बच्चे आपके तरफ खींच के आ जाएंगे. हाँ, give them gifts and all these things. Praising learners or giving them incentives when they do good things. Okay. When misbehave or use verbal punishment with words of disappointment that lead to them behave well in future. Avoid using physical punishment. थोड़ा सा मुंह से आप बात कर सकते हैं, but not this. Okay. साथ में we have a good lesson plan बनाइए, very important. This is the one that will create a different personality of yours. Planning lesson which is suitable to the level of interest, learning styles, group of learners. Okay, so make it in such a way that they give an effective learning. Okay, after that, classroom, class energy. Okay, teachers are used energizers, steerers to answer. Be very energetic. जो बात हम करें तो उसकी डिटेल में to activate learners, teachers play energetic games with them, like storytelling, listening to music also sometimes, listening to song, drawing. कभी-कभी अगर मूड नहीं आता एक दिन गाना ही गाइए. चल, हाँ, yes, कीजिए, एकदम बहुत अच्छा. चलो बेटा आज मूड है, चलो आज गाना गाते हैं. Yes. शाहरुख खान का वो गाना है ना? कितनी तितलियां, something like that. Sing it to the children. मैं कोई ऐसा गीत गाऊंगा, थोड़ा सा नाचिए कूदिए ऐसा करके देखिए, तो मच जाएगा क्लास में. कैसे बच्चे नहीं पढ़ेंगे? Okay. Frontal teaching and group dynamics. आप teaching अगर peculiar pattern, the typical pattern of teaching the classroom setting you can make it, you can turn it, you can twist it. आप उसको कीजिए, देखिए आ जाएगा. Group dynamics will be there and students will learn different. These are the settings of classroom. Okay, you can set the class. The frontal teaching occurs when the teacher addresses the whole group who respond in union one by one. Okay, new approaches you can come out. I am not going into detail into this. Okay, you all know this. 7 of the learners' involvement in activities. How can teachers increase learners' involvement in participation? This is what should happen inside the classroom. That is why it is the ultimate place for learning. Arrange the sitting of learners in ways of that enables people-to-people interaction. Okay, student-to-student interaction भी होता है. Give effective and clear instruction. Relate material to students' life experience and current event. ये जो कुछ life experience हम आपके साथ बोल रहे हैं, देवेश को ऐसा बोला था, उसको बोला. Try to bring out these incidents. Okay, these events, they will learn it. Add them. Okay. Pace the instruction is best of it. Step by step, धीरे-धीरे बताएंगे. Engage students to give work and all. Okay. Teacher-student rapport तैयार कीजिए. You can create it. There is no such rules that is. आप बच्चे से मिलिए, उसका दुख समझिए, उसका दर्द समझिए, क्यों वो ये कर रहा, ये कर रहा, and you will get it. Please don't humiliate a child. किसी उल्टा नाम से मत बोला. Emotionally blackmail कीजिए. That is किसी को जैसा होता था ना हमारे टाइम में हम चश्मा पहनते थे तो कुछ टीचर्स हमको स्कूल में बोलते, hey you specky stand up. तो spectacles पढ़ता था तो specky. हम लोग गुस्सा नहीं करते थे उस पर कि तुम्हें समझ. आजकल अगर बच्चे को बोलिए ना you specky तो हो गया. देखते पूरा मोहल्ला आ जाएगा. So that is what we need. Some tips of rapport building. Call your students by name. What sir said. Eye to eye contact. Non-verbal clues. Reward the students. Okay. So almost saying that what he has said. More tips on rapport building. Let students know and care about them by attending an outside the class activity if possible. Meet them outside. Talk them if they want to say. And if you want to really say something to the student, please don't say it in front of the classroom. Call in your chamber or in your particular place. Sit with the child. Emotionally, थोड़ा blackmailing कीजिए, सीख जाएगा. होता है. What else we have? Classroom setting. These are the different types of classroom settings. Arrangement of sitting. You can do it this way, round way. Okay.
The choice of sitting depends on the number of class members, what activity you want to do. Change the class sittings time to time. That will have a different, because children also want to change. No, that same typical सदियों से चले आ रहे लंबा सा लाइन, उसी में बच्चे बैठेंगे, थोड़ा सा इधर कीजिए, थोड़ा उधर कीजिए. Shape, rotation गिरते रहेगी. Yes, that is good. Okay. Creating positive class atmosphere, maintain safe and secure class atmosphere. Teacher himself should be a person who should prove to the student that you can depend on me in various ways. And to the young teachers I will tell, teachers like this teacher, sir, all young. Yeah, you also, yes, you are also there, you are also there. Stay away from the girl students a little bit. एकदम पता की बात बताते हैं, नहीं तो you never know, so always maintain that distance. Okay, I will teach you because कोई कोई गर्ल से अभी तक लव लेटर मिला? नहीं मिला. Yes, as a teacher we have मिला तो अच्छा हुआ. It's a souvenir. I will tell you later why you got that. Okay. Yes, students sometimes, teachers sometimes get love letters also from the girl students. Okay, ये होता है. और boy students का कुछ female teachers के ऊपर crush भी रहता है. होना भी चाहिए. It's a normal, natural process. That's how we grow and develop. But then we have to tell them what are the points to be taken into account. So that is there. Use games attractives so learners you care, interest and support and love them. Minimize fear and stress. Okay, sir, I'm giving it to you. Okay, because it is almost over. Okay, so classroom layout has actually not many things are there. Okay, you can see them. Okay, mutual respect, classroom rules, regulation, dynamics should be changed. These are the good classroom management is also an important factor related to dealing with the destructive behavior. बच्चे बदमाशी करते हैं, सुनते नहीं हैं, वो सर बोले तो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहते. कुछ बच्चे जैसे आप क्लास में घुसेगा they will start making sound. हमारा टाइम में होता था, तब वो अभी भी होता है, तब भी मतलब वो सदियों से होते ही रहे. So हमारा टाइम में I remember at that time there was a Hindi film called त्रिदेव बोल के एक पिक्चर आया था. तो कुछ हमारे नए टीचर्स आए थे, तो बच्चे इतना बड़ा सेंटेंस स्कूल मतलब it is very difficult over there to do anything, but still students used to वो एक डायलॉग आया था और क्या है ओए सर को मालूम है. I'm sorry student, वो एक सिंथिया मैडम आई थी. सिंथिया मैडम क्रॉस कर ओए and she went and complained to principal. So ये सारी चीजें होते रहेंगे, but then we have to tell them why they should not do. So that is why these disruptive children will always be there, and we need to take care of them. Examples of disruptive behaviors क्या करते हैं? Clowning, कुछ है जो एकदम हाथम जोकर की तरह करते हैं. They will always, because they want to seek attention. Okay, clowning, acting like a clown to attract attention. Give him private warning. तो अलग से ले जाइए. ठीक है, you are okay, you are jovial, but please make it a point that हरदम जोकर मत बनो, नहीं तो जिंदगी भर मजाक बनते ही रह जाओगे और मजाक का इंस्ट्रूमेंट बन जाओगे. फिर लोग तुम्हारे साथ जिंदगी भर मजाक ही करते हैं. Hit them emotionally, they will change. Okay, refuse to attempt a written assignment. Sir, वो बच्चे को नहीं लिखना चाहता था. सर बोल रहे थे ना, हमारे पास बच्चे नहीं लिखना चाहते. अब देखिए आपका आंसर आ गया है. Okay, offer help to the student and show a caring attitude. आप कोई सर बोल रहे थे ना कि हमारे क्लास को लिखना ही नहीं चाहता है. सर आप आगे बढ़िए, बच्चे के साथ बैठिए, नोटबुक लीजिए, पेंसिल लीजिए, आप लिखिए, वो लिखेगा. गारंटी के साथ बोलते हैं. ओके, लुक फॉर पॉसिबल रीजंस फॉर हिज मिसबिहेवियर. क्यों ऐसा कर रहे हैं? व्हाट आर हिज प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द डिसेबिलिटीज? ऑफर एनकरेजमेंट एंड एफर्ट. केयर करके देखिए, होता है. Diabetes है ऐसा. Some children are hyperactive, always moving around the place. Sometimes to the washroom, sometimes to the staff room, sometimes here and there. Sir, may I go in? Sir, may I come in? Sir, may I go over there? Sir, madam is calling me. Sir. Hey, these are the hyperactive. Moving all the time, not being able to concentrate. Show care and passion to them. Sit with them. क्या बात है बेटा? आप हरदम आप क्यों दौड़ते हो स्कूल में? क्या प्रॉब्लम हो गया? कौन आपको बुलाता है? किसी कोई नहीं बुलाता है. Nobody calls you. Why you are unnecessarily keeping yourself busy so much? Assign responsibility and give this fellow something. Hey, every day you will bring the notebooks from the staff room. Okay. Second thing, you will collect all the flags at the end of the day and keep it in the sports room. School में लोग सुबह flag लगाते हैं ना? Make sure that the mic and everything is in the right at the end of the day. You will do it. You give them response, they do it. Then only we can bring them to the forefront. Okay. Give them some project and all. From there also they can learn. Okay. Quickly. Thank you.
Thank you. Thank you. This is what exactly you should do in a classroom. If you can do it, एक दिन में देखिए ये होता नहीं है. Regular practice, सदियों से practice. आज भी हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, but सीखना जो है वो एक लेवल है. But with this we come to the end of my sessions. Now sir will take and sir, sorry वो हमारा थोड़ा सा problem है sir. I am like this man. मेरा थोड़ा problem है. Sabir sir. Give me the pointer. दोस्त साथी सखा. I will start with 2 lines. Okay. कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3 और जैसी संगति बैठिए वैसी ही फल 3. Do you know the meaning of these 2 lines? कदली का अर्थ होता है केला. सीप तो जानते ही हैं जिससे मोती प्राप्त होती है. ठीक है. भुजंग मतलब सांप होता है. स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले पे पड़ती है तो कपूर बन जाती है. जब सीप पे पड़ती है तो मोती बन जाती है. और जब वही बूंद सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाती है. बूंद की कोई गलती नहीं है. अलग अलग स्थान है. 3 अलग अलग चीजों ने उसको बदल दिया. So my dear teachers, peer relations plays a very important role in the life of a student. As the quality of the friends they are getting in their real life, so they are going to build their character. So they are going to build their behavior. And if the peer relations are not good in the classroom, so the classrooms are not involved classroom. Okay. So these are the definition of peer relationship. These are the interpersonal relationship established and developed during social interaction among peers. Here should be R or individuals with similar levels of psychological development. There are 3 different kind of peers. One, they are the friends including close or best friend. Peers in general, boys and girls. The topic for which the discussion is going on, that is school peer. That means the peer of the classroom. इसके बाहर भी हो सकते हैं. आपका कोई कॉलीग भी पेयर हो सकता है. ओके. लेकिन हम लोग को यह देखना है कि उनके रिलेशनशिप किस तरह अच्छे तरीके से बने ताकि सुचारू तरीके से हम लोग क्लास ले सकें. ठीक है. अगर रिलेशंस नहीं अच्छे होंगे तो फिर हम लोग का क्लासरूम अच्छा नहीं होगा. तो क्लासरूम अच्छे कैसे हो सकते हैं? Importance of peer relationship, they learn a range of critical and social emotional skills such as empathy, such as cooperation and problem solving strategies. Universal school-based social emotional learning programs provide a strong foundation for positive peer culture. Here the word what we going to stress is positive peer culture. Peer culture तो कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे खराब, लेकिन ये पॉजिटिव रखना है क्योंकि उस बच्चे को सारी जिंदगी पॉजिटिव ही रहना है. उसको सिखाना है कि नेगेटिव चीजें जो आ रही हैं उसको हटा के उसको आगे बढ़ते रहना है. अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव होंगे तभी हम अपने जीवन में जो हमारे जो नेगेटिव थिंग्स हैं उससे हम लोग आगे निकल पाएंगे. तो इसकी बुनियाद जो है ये हमें स्कूल लाइफ से मिलनी चाहिए. कि देखो बच्चे, तुम्हारे क्लास में जितने सारे हैं उनका बॉडी कलर अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, सोच अलग है, उनका जेंडर अलग है और वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी हमें सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा. हमें डिफरेंसेस को सीखना पड़ेगा और ये कोशिश करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम लोग इस डिफरेंसेस से कोप अप कर सकें. ओके. Causes of poor peer relations, very much important for the teachers. We need to understand why the student is having poor peer relationship. Why he is not going to make relation with others so comfortably and confidently. Why he is lacking confidence. So the first reason, some students having speech problems. They cannot utter everything very clearly. They want to say something but they can't pronounce very clearly. So this speech problem is not going to be helpful to making friend. Nobody wants to make friend. Just you consider your school life. जो ठीक से नहीं बोल पाता, जो थोड़ा हकलाता है, उसके दोस्त कोई नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है कोई समझ नहीं पाता और वो अपने दोस्तों से दूर चला जाता है. सेकंड थर्म इज फिजिकल डिसेबिलिटीज. ये भी एक कारण है. मैं टिफिन में जाऊंगा, मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, खेलने जाऊंगा, लेकिन मेरा जो दोस्त है वो चल नहीं सकता तो मैं उसको अपना दोस्त नहीं बना सकता. जब कुछ होता है तो मेरे साथ भाग नहीं सकता. तो ये सारी दिक्कतें हैं. ये सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो बच्चों को साथी बनने में मदद नहीं कर पाती. सेकंड है पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस. सब बच्चे बहुत अच्छा अच्छा टिफिन लाते हैं, नहीं ला पाता. सब बच्चे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर टीचर्स डे वगैरह सेलिब्रेशन होता है, बहुत महंगे गिफ्ट देता है, नहीं दे पाता. तो अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लेता है, ये थोड़ा एलिनेट हो जाता है. और मेन क्या होता है कि ये सिर्फ पढ़ाई से अलग नहीं होता,
वो जो संगति बन रही है उससे भी दूर होता चला जाता है। और जब तक वो जुड़ नहीं पाएगा तब तक वो बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि बढ़ने का पहला क्रम जुड़ना होता है। तो पीयर रिलेशनशिप में क्या होगा कि पहले हम लोग उनको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पार्टिसिपेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हमको ध्यान में रखनी चाहिए। मेंटल डिसेबिलिटीज भी होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो स्कूलों में हमको फेस करना और करना भी है। क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये कहती है सबको साथ लेकर चलो। जब आप सबको साथ लेकर चलिएगा तो ये भी साथ में रहेंगे, और हमको दिखाना पड़ेगा कि ये जो है ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, ये कुछ मामलों में अलग हो सकता है लेकिन कई मामलों में बढ़कर है। तो आप इससे दोस्ती करो, इससे आपको फायदे होंगे, नुकसान नहीं होंगे। बीइंग इग्नोर्ड बाय अदर चिल्ड्रन, जब वो दूसरे बच्चों के द्वारा इग्नोर्ड होता है तो भी वो लेकिन दूर होता चला जाता है। सो दीज आर द बेसिक कॉजेज ऑफ पुअर पीयर रिलेशंस, एंड दीज कॉजेज creates an hindrance in the development of the children. Okay, you can say even in the mental development. देखिएगा ऐसे बच्चे जो इन लोगों को दिक्कत होती है, ये लोग कभी भी कोई प्रोजेक्ट में, कोई असाइनमेंट में वो साथ नहीं होते हैं। आप देखिएगा जब भी क्लास में कुछ करने को बोलेगा अपने आप को सेपरेट कर लेता है, क्योंकि जानता है कुछ करेगा नहीं, सिर्फ खड़ा रहेगा, और कहीं ना कहीं एक्चुअली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी देखभाल हम टीचर्स को करनी होगी, ताकि इसको भी हम लोग, क्योंकि ये पार्ट है इन्वॉल्व क्लासरूम, सबको इन्वॉल्व करना है। डिटैच करके हम लोग क्लासरूम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ओके, हाउ टू इंप्रूव द पीयर, हैव पीयर इंटरव्यूज विद ईच अदर ऑन सॉल्यूशंस है हम लोगों का कि हम लोग पीयर रिलेशंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं। हम लोग आपस में बातचीत कंटिन्यू कर सकते हैं। कई टॉपिक में देखिएगा बच्चे पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, ठीक है, तुम क्या करते हो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। एक्चुअली इन्हीं से दूर होता है। जब क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो जाता है, वो लोग उसको घेर कर बैठ जाते हैं, वो कहाँ से है, किस बैकग्राउंड से है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग अपने सामने बोले देखो एक नया स्टूडेंट आया है, आपके सामने वो इंटरव्यू सेशन होना चाहिए, और ऐसा हो कि वो भी पॉजिटिवली कुछ ले, ये कुछ नया। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का आया देवघर से, तो देवघर से कुछ नहीं तो कम से कम बाबा राम के बारे में तो जानता है। तुम गए हो, कई बार गए मेरे घर के सामने, जो डिस्कशन होगा ना धीरे धीरे जुड़ेगा साथ में। तो हम लोग कहना पड़ेगा कि पहला है कि उन लोगों में आपस में बातचीत हो सके, कम्युनिकेशन डेवलप हो सके। हैप्पीएस्ट शेयर पर्सनल ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। देखिए आज के बच्चे जो है वो शेयर नहीं करना चाहते है तो कहावत की शेयरिंग एंड केयरिंग, बट ही डज नॉट वांट टू शेयर एनीथिंग। ओके, ही इज डेवलपिंग सच ए कांसेप्ट that whatever he is having is of superior quality and he cannot share it with someone else. So we have to teach the values to the students, we have to inculcate the values to the student so that they can share their ideas, their emotion, their feeling. Intuitions is not possible, but their objects also. Okay, it will develop a habit of sharing. In the long run is going to become a good peer, and student can be assigned to find peers who have a particular characteristics and then get their signature. Okay, एक particular characteristics में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। Language में भी एक characteristic, age में भी एक characteristic, punctuality में भी एक characteristic, morality में भी एक characteristic, discipline में भी एक characteristic। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक characteristic लिख देंगे और बोलेंगे तुम लोग find out। जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं कोई पेयर जो है वो उससे दूर हो गया, नहीं बातचीत कर रहा है, तो हम लोग बोल देंगे characteristic quality किसमें है, ऑटोमेटिकली वो फाइंड आउट करके वो नाम देंगे। जब वो नाम आएगा तुमसे पता चले, और वो जो क्वालिटी में बताऊंगा तो बच्चा रिवार्डेड होगा, प्रेज्ड होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे जुड़ना शुरू करेगा। कोई बहुत अच्छा गाता है, होता है ना, बहुत अच्छा गाता है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, बचपन से ही बहुत अच्छा गाता है। अब यूट्यूब वगैरह में देखिए 3-4 साल के बच्चे जो भजन गा रहे हैं, हम लोग कभी सोच नहीं सकते, लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो जब हम लोग म्यूजिक का कोई क्लास करे, कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग बोले ऐसे बच्चों को चुन के लाओ जिसकी म्यूजिक अच्छी है, इसका लैंग्वेज अच्छा है, ठीक है। तो इन चीजों में भी हम लोग जोड़ सकते हैं, और जैसे ही वो आएगा तो जिस तरह जो सेलिब्रिटी अपना इंटरव्यू दे, क्या नाम है, सिग्नेचर देता है, सबको इसका सिग्नेचर लेगा, जो भी चुना जाएगा उसका सिग्नेचर वहां पे लिया जाएगा। उस दिन के लिए, उस पीरियड के लिए वो उस दिन का सेलिब्रिटी होगा, और धीरे धीरे जुड़ता चला जाएगा। ओके, एंड स्टूडेंट राइट डाउन ए फेस, यहाँ पर फैक्ट होगा नॉट फेस, डाउन ए फैक्ट अबाउट देमसेल्व्स, then give it to the teacher and student should guess who it is. जैसे कि मान लीजिए एक बहुत कठिन काम है to know to yourself.
ओके, हम लोग अभी बड़े हैं, हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग बहुत दिनों से टीचिंग प्रोसेस में हैं, तो हम लोग अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन स्टेज पर बताओ, हम लोग अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। जब हम लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर हमको रिपोर्ट दिखाता है तो पता नहीं चलता मेरा रिपोर्ट है कि दूसरा का रिपोर्ट है। उसी तरह बहुत सारी शक्तियां हमारे अंदर छिपी रहती हैं। तो जब हम लोग जान जाएंगे कोई एक तो पार्टिकुलर फैक्ट के बारे में, हम लोग क्या करेंगे, उस फैक्ट के बारे में उसको बताएंगे। और जब स्टूडेंट अपने बारे में लिखेगा, इसीलिए पहले शायद डायरी लिखने को कहा जाता था, आत्ममंथन, आत्मचिंतन के लिए, जब अपनी शक्तियों के बारे में जाने, जब वो जानेगा और वो टीचर को सबमिट करेगा, धीरे 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 सारे बच्चों ने होगी कि मेरे अंदर प्लस पॉइंट। जैसे देखिए, हम लोग जब क्लास 10 के बाद बच्चों को स्ट्रीम चूज करने को बोलते हैं, वो कितना कंफ्यूज रहता है, उसको पता ही नहीं कि आगे बनना क्या है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। दिक्कत इसलिए आती है कि वो अपने आप को पहचानता ही नहीं। एक्चुअली वो लैंग्वेज में बहुत अच्छा है, लेकिन वो आर्ट्स से ह्यूमैनिटीज में नहीं जाना चाहता, उसको लगता है इधर कोई फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम बचपन से उसको उसकी शक्तियों के बारे में बताएंगे तो क्या होगा कि जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे लिटरेचर क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, ठीक है, और बहुत सारे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारे क्लब बनाए गए हैं। तो क्या करेगा, वो जाके जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो धीरे 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 क्या होगा, तो धीरे धीरे उसी प्रोफेशन में आगे बढ़ता रहेगा। तो इसकी शुरुआत एक एज के बाद क्यों, छोटे से क्यों ना हो। जब छोटे से क्या होगा, तो उसे क्लास में दो देखिएगा, क्लास में जो 2-3 बच्चे गाने वाले होते हैं जुड़े रहते हैं, क्लास में 2-3 जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं जुड़े रहते हैं, जो डिबेट एंड स्पीच करते हैं लोग जुड़े रहते हैं, इन लोगों में वहां पर कन्वर्सेशन होता है। तो कम से कम जो अपने ग्रुप से जुड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिकली लगेगा कि मैं अगर उसमें आगे नहीं हूं तो क्या, मैं अपने जगह पर तो सही हूं ना। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो पीयर रिलेशंस होंगे वो धीरे 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 इंप्रूव करते चले जाएंगे। और बाय द वे हमारे जो है क्लासरूम्स जो हैं, ये एक्टिविटीज भी धीरे धीरे इन्वॉल्व होती चली जाएगी। ओके, improve classroom with improved peer relationship. So what we teachers can do, build positive relationship with the students. We have to encourage or promote collaboration, flexible learning environment. What Surjit sir have told in details, the environment should be very flexible. हम जब पानी पीते हैं बोलते हैं अपनी सुविधा के अनुसार पीजिए, बहुत गर्म पीजिएगा तो जो मुंह जल जाएगा, एकदम ठंडा पिएगा तो फिर गर्म करके क्या लाभ हुआ उसको। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इट शुड अडॉप्ट द क्वालिटीज ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विड हैज अ वेरी स्पेशल क्वालिटी बिकॉज इट कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, व्हाटएवर मे बी द शेप ऑफ द कंटेनर। जब लिक्विड जाएगा तो उसको एडजस्ट कर लेगा। दिस फ्लेक्सिबिलिटी वी हैव टू डेवलप अमंग आवर चिल्ड्रन फ्रॉम द अर्ली स्टेज। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट विद द कंटेंट। व्हाटएवर कंटेंट इज गिवन, स्टूडेंट को उसके साथ इन्वॉल्व कर लेना है और कोशिश करनी है सबको इन्वॉल्व कर लेना है, कोई भी नहीं बचे। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप देखिए कोई भी नहीं बचना चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक सब जुड़े रहे। तब क्या हुआ, वो क्लासरूम में आपका परिश्रम सफल हो गया। और जब सब बच्चे जुड़े रहेंगे तो इन लोगों के बीच का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज सेट हाई एकेडमिक एक्सपेक्टेशन। द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन, वी आर एडुकेटर्स, स्टूडेंट्स आर एडुकेट, but what is the ultimate goal? We have to set high academic records. We have to set a record of high percentage marks. We have to teach the students in such a way that they can get success in their life, but by adopting good relationship. Not only to produce a student of 98% marks, we have to produce a student of 98% marks with good morality, with good quality, with good discipline, with good behavior. In all respects, she or he is going to be good. Then its beginning will from the early childhood stage, and in this way we can develop good and positive peer relationship. Okay, and this is the end of the session. Thank you. If any mistake committed by me, I beg my apologies for that. I have tried my level best. Thank you all. Now I would like to call DP sir, Devri Mukherjee sir, to give the vote of thanks. Please sir. अबे वो वाला काम कर लो। If any teacher want to give feedback of today's program, yes sir, please be on the stage. Fantastic, very good.
And why you say forgive me and all these things? Has anybody told you that you are not good? The first time, that's so what? I, Ashok Kumar Gan, want to give the feedback of today's session. Today really we enjoyed the training. Actually we learned today. Sir Sudhadit and Sir Pradesh Shukla. No doubt, marvelous. What an extraordinary training today. Splendid, exquisite. It's a sandal. Actually both the teachers hit sixes only today. Thank you sir. दिनेश सर, दिनेश Bejor. Oh, Bejor. Really Bejor. Adbhut. Thank you. Yesterday also, ma'am also done the very good job. And that's her also. But today's program, no doubt, extremely beautiful. Thank you. सिद्धू कानू सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। और आज के सेशन के बारे में तो कहना ही कुछ नहीं है, कितना भी बोलूं मैं बहुत ही कम है। सुरजीत सर का ट्रेनिंग मैंने पहले भी बहुत जगह लिया है। वंडरफुल सेशन। इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से ग्राउंड स्तर पर जो चीज होता है वो चीज को वो समझा देते हैं कि हमें विद्यालय में अपना परिवेश क्लासरूम में कैसा करना चाहिए। बड़े बड़े लेवल की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन सर जो सिखाते हैं ग्राउंड लेवल से सही में मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। और मैं साथ में शुक्ला सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मतलब मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूं कि शुक्ला सर इतना अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं। और मैं तहे दिल से शुक्ला सर का धन्यवाद करता हूं। कल के सेशन में मैंने रोदसी मैम को भी सुना, बहुत अच्छा लगा। ये मतलब ये सेशन में फर्स्ट रोदसी मैम का ट्रेनिंग था, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और सिद्धू कानू सीनियर सेकेंडरी परिवार की तरफ से आप सबों को आए हुए सभी शिक्षक शिक्षिका मुख्य अतिथिगण सभी को हार्दिक अभिनंदन है। और दादा के लिए स्पेशल थैंक्स जो इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया। थैंक यू। आप लोग अपने अपने सीट पे बैठिए। 2 मिनट और 2 मिनट। हम लोग जेंटलमैन है, खराब लग रहा है ना सेशन के बाद जाएंगे। 2 मिनट 2 मिनट आ जाए सर। आप लोग आइए, गलत बात कर। देखिए सर आप लोग नीचे आप सामने आइए। 2 मिनट रुकिए, 4 वेट करिए, 4 नहीं हुए। एक सेकंड प्लीज ऑल ऑफ यू टेक योर सीट्स। इट्स नॉट ओवर येट। यू हैव कौन है अंदर भेजिए। अगर बाहर कोई है तो आप लोग आइए। अभी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, अभी डिसिप्लिन बोल रहे हैं। बहुत सारे की बात हो गया। Yes sir. So it was a fabulous session. दो दिन का ये जो कार्यक्रम रहा ये बहुत अच्छा रहा। सारी चीजों से हमारे साथ 4 रिसोर्स पर्सन थे। ये चारों रिसोर्स पर्सन काफी लर्न थे, काफी एक्सपीरियंस थे और इन लोगों का सेशन हम लोगों को सही में बहुत कुछ दिया है। वैसे हम लोग ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम है और देखने को भी मिल रहा है कि आप लोग घर जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक भी है। ये होता है, हम अपने वक्तव्यों को काफी छोटा ही रखेंगे, लेकिन एक बात बिना बोलकर रह नहीं पा रहे हैं। हम लोग 2 दिन 5-5 घंटा का ये ट्रेनिंग करने के लिए इतना ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं और बच्चे हर दिन स्कूल जाते हैं। 6 घंटे। अगर हम लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं, हम लोग उन लोगों को क्या पेशेंस सिखाएंगे? ऐसे सर बता रहे थे
खरूस प्रिंसिपल के बारे में। लेकिन बात यह है कि अगर इस प्रकार का इम्पेशंस, इनडिसिप्लिन हमारे टीचर्स में देखा जाएगा तो खरूस प्रिंसिपल का ही जरूरत पड़ता है। एक छोटा सा चीज हम भी बताते हैं। एक लड़का नींद से जाग नहीं रहा है, उसकी मम्मी उसको उठा रही है और बोल रही है कि जाओ स्कूल जाओ, तो वो बोलता नहीं जाएंगे। तो उसकी मम्मी पूछती है Why don't you want to go to school? Give me 2 reasons. तो बोलता है कोई भी बच्चा हमको प्यार नहीं करता है, everybody hates me. कोई भी टीचर हमसे प्यार नहीं करता है, the children and teachers both hate me. Now you tell me why should I go to school? Give me 2 reasons. तो उसकी मम्मी बोलती है you are 48 years old and you are the principal of the school. Okay, thank you very much. आज यहाँ पर आप लोग जो उपस्थित हुए हैं सारे स्कूल के प्रिंसिपल, एसटीएनसी, सारे पार्टिसिपेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे सिद्धू कानून हाई स्कूल रघुनाथपुर और दुमका दोनों के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे कल्चरल प्रोग्राम में, टेक्निकल टीम में बहुत सारे थे। बहुत सारे ड्राइवर आए हुए आप लोगों को लेकर। हम देखे आश्रम स्कूल को, वो वहां के टीचर्स लोग ऑटो में आए हैं इतना दूर से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटो में हम किसी को आते हुए देखे हैं, कोई बाइक में आए हैं, कोई बस में आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। So thanks for coming everybody. यहाँ पर 2 दिन से 2 छोटे बच्चे वो कैमरा लेके आप लोगों का फोटो खींच रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुक खाना बनाए हैं आप लोगों के लिए, उनको भी धन्यवाद। और ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो छोटा सा तिनका भी उठाया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों का चाय नाश्ता रेडी है और हम लोग जाके चाय नाश्ता तो करेंगे, लेकिन उसके पहले आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे उन दोनों को भी हम लोग थोड़ा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, लव, रेस्पेक्ट वो देना है। और रोदोशी मैम कल की रिसोर्स पर्सन, शी वाज वेरी यंग, आई एम सॉरी, शी इज वेरी यंग, स्टिल यंग, एंड हर एफर्ट इज बीइंग अप्रिशिएटेड। उसके साथ हमारे सैमसन पैट्रिक सर जो हैं, इनका भी प्रेजेंस, अरुणा मेरी जी, हमारे प्रदीप्त मुखर्जी सर, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाह रहे हैं कि आज के लिए आप दोनों रिसोर्स पर्सन यहाँ पर आए, स्टेज के ऊपर आए। प्लीज कम ऑन द स्टेज, बोथ ऑफ यू सर। मैं रोदोशी मैम को और सैमसन पैट्रिक सर को दोनों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग आके इन लोगों को ऑनरिंग गिफ्ट कीजिए। इट्स ए टोकन ऑफ हम्बल गिफ्ट। अभी हम लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े होंगे और उसके बाद चाय पीने के लिए तो चले जाएंगे, लेकिन एसटीएनसी जितने भी है स्कूल के वो यहाँ पर रुके रहेंगे। जितने भी एसटीएनसी है स्कूल के, पर्टिकुलर स्कूल के, वो रुके रहेंगे। सर आप आइए सर, हमारे चेयरमैन सर प्रदीप्त मुखर्जी, प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर ग्रुप फोटोग्राफ। ओके।
they say that everything is well that ends well. In the morning, to be very honest with you, I was supposed to start at 6 in the morning. I thought I'll reach by 9. But because of yesterday's program, I could not start so early. I started a little later. And while coming, I was again thinking, one more training program. But then the school Sidhu Kanu, the teachers around this place, whom I know for a long period of time, Mr. Mukherjee, both the Mr. Mukherjee's principal sir and director sir, when I was imagining their faces, no, I got that energy. No, जल्दी चलते हैं और program करके आते हैं और हम थोड़ा emotional आते हैं. I don't belong to that professional world, you know. हम थोड़ा emotional हैं, हम डूब जाते हैं, तैरते नहीं, हम मिल जाते हैं लोगों के साथ. बहुत सारे लोग हमको क्वेश्चन करते हैं, you are a principal, you should keep some distance from others. हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हम किसी से distance maintain नहीं कर सकते, हम सबको अपने close बुलाएंगे और सबके साथ हम रहना चाहते हैं. This is my motto of life. You all are here, you listen to me so patiently, nicely, you all have done wonderful. बस जिंदगी में इससे बड़ा प्राइज और कुछ हो ही नहीं सकता है. जो आप लोग का प्यार, मोहब्बत, the honor that you all show me, and I love to come here again and again. I told sir we'll have a training program on NCF and all also soon. So see you. Till then, have nice time, and beforehand I'm telling you all, have a great new year, the coming session when we will start NEP 2020. Okay. थैंक यू सर. सारे स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कृपया यहाँ पर पधारे. प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इंचार्ज. आश्रम स्कूल जामताड़ा, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इंचार्ज. वेस्टर्न स्कूल, सारे स्कूल जितने भी स्कूल है, मिलेनियम आश्रम स्कूल जामताड़ा आए. प्रिंसिपल. It's a memory. आश्रम स्कूल जामताड़ा. मिलेनियम स्कूल है. Millennium school. EMRS, any teacher? Any senior teacher from EMRS school, Katajoria? Any senior teacher? Principal Western School. ओके, नेशनल एंथम के टीम. 1 minute sir, 1 minute. वाइस प्रिंसिपल सिद्धू खान हाई स्कूल दुमका, राजेश झा सर. We forget our host principal sir. Rukakur sir also. 1 minute. Vice Principal Rukakur sir. Hero of this event, Mr. Devapriya Mukherjee sir. ओके, नेशनल एंथम के टीम प्लीज स्टेज पे आ जाए. आप लोग जो कल भी थे, if somebody else wants to join the team, please come. Yeah, you can take your seat, please. Sir, Devapriya sir, हमारे और हीरो छोड़ गए सैमसंग सर. एक छोटा टोटल नेशनल एंथम टीम. एनी टीचर फ्रॉम एनी स्कूल, कोई भी आ सकते हैं गाने के लिए. अगर जल्दी हम लोग कोई भी आ सकते हैं, कोई स्टेज पे बंदिश नहीं, किसी भी आ सकते हैं. देखिए सर का फोटो, आप लोग सब कुछ जाने. सुरजीत सर के बारे में 2 बात बता देते हैं. ये एक अच्छा खिलाड़ी भी है, अच्छा फुटबॉलर है, और ये हमारे पहले बार आए थे, जरूर हार के गए थे, दूसरे बड़े चैंपियन होके गए थे.
और खुद फील्ड में उतर जाते थे बच्चों के साथ। सुबह ये कहानी वो बोले हैं। इसके बाद एसटीएन से रुकेंगे, बाकी सब एंजॉय के लिए जाएंगे आईटी के लिए। एसटीएन से एवरी ओके रेडी ओके 1 2 स्टार्ट। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। एकलव्य काठी जोड़िया सेक्रेट हार्ट स्कूल एसटीएनसी। मिलेनियम स्कूल, मिलेनियम स्कूल जो सर है जिनका प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा सा क्लास के बच्चे सीख रहे, दैट सर इज देयर। ये तो आगे से फिर कर तो दे दीजिए। शुक्ला सर पूनम देवी शुक्ला सर लास्ट शुक्ला सर पूनम देवी। Your last in-house training for this session will be conducted in Millennium School. कब है सर? 9th December. SKHS तुमका SKHS तुमका? Yes sir, coming sir. Yes sir. SKHS रघुनाथपुर। काम सर। चार खबर है तो बोल रहे हैं सबीर से ए सबीर इन लोग कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा बता तो दीजिए हमको सर। क्या बोले? इंटरव्यू का बॉक्स